Okay, we are live. Yeah, Welcome everyone on the live stream of the first. We will be having a preview about the game that is Arsenal versus Manchester United. This is MUSC Red Devils NCR. This is the host panel. I am Ojas. I'm with Abhijit Bhai and Sandeep Bhai. Welcome guys. Welcome to the panel and welcome everyone on the chat on the YouTube. So good evening, good we evening. all know why we are here. We are here for which can be one of the biggest games of the season, if not. And it is a clash of the Titans that are currently, I should consider them the Titans going on this Premier League season because both teams have really put pushed themselves into this position that they are right now. Manchester United started very slow. The season was not at the brightest of the start. They had two very bad defeats, one against Brighton and one was, I think it was Brentford, 4-0. But we have recovered and now we are sitting at third, and Manchester City, which right now is leading against Wolves, is above us, and Newcastle is catching up. And see, Tottenham is behind us, but the league is such that anything can happen in the future. So we will now talk about the important clash that is okay. Pulkit has also joined us. Hi, Pulkit bhai. And Hello, guys. now the most important thing that happened midweek was that we lost a player uh, as a ban against Crystal Palace, and it was Casemiro. Or so we know one of the player that won't start, and we have the starting lineup that Kushagra has sent us. That's De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Licha, Shaw, Ericsson, McTominay, Bruno, Rashford, Weghorst, Anthony. So it's like Wan-Bissaka on the right back, Varane, Licha, and Shaw like will be the central defense position. I think Licha will go a bit higher. Ericsson, McTominay, Bruno is, I think Mid that's midfield. the midfield, and Rashford, Weghorst, Anthony. Why? I think It's if just we a, I try think to it's see. a league lineup, and I don't think that this might be the accurate one because I don't see a scenario where Fred is not starting in the game. I don't Yes, see no, no. that. I think hashtag MUFC, whatever it is. See, we are No, it's very from close to United the Plug. official It's lineup. from United Plug. Yeah, we are very close to the official lineup also. So we can be a patient little bit. But right now, let's start with the preview. And I wanted to straight away get to the point was that Casemiro is banned for this game, and we are really short on the midfield. But this is the most important game for me. I think this is one of the most important games of the season. We It's a have to prove season-defining our game. worth today. Yes, so I will start with Abhijit Bhai, and I would like to ask a very simple question. If not Casemiro, then who handles our midfield today? I think McTominay should start. I think given the fact that we have that Partey and Xhaka both the start. So when you have McTominay, he has done some very good performance in last against Arsenal. So I don't think that he can, he can be any error or problematic for us. With Ericsson, he coming in the deep and helping him. McTominay can, is good in duels actually. He is the same guy who can do the dirty works. Make you can control, and he can carry the ball front up front, and he can be a bridge between defense and the attack. So definitely, he's a good guy, and I think McTominay can do something. Uh, we know that we Fred can also be a very good because he has improved so much, and he has done very commendable job as a in starting also and in the substitute also. Fred, he's a box to box. He can, he has the energy. He can be, good presser also, and he helps everyone. So definitely, I would say Fred. If Fred and McTominay starts, then I would really really be happy to say them because last time when we defeated City, we needed one man to man player where De Bruyne was totally locked.
So Fred can be a pivotal player who can totally lock Odegaard and make him frustrate, and if we stop that supply from Odegaard, definitely we can stop Arsenal. Uh, if you see now, Arsenal starts very fast. You know, against the Spurs or against the Newcastle, they always start fast. They score in only in 15 to 20 minutes. If we, if and after half a time, they become very slowly in the game as the game progresses. So if we stop them until half time with nil-nil, and if we frustrate them, then definitely we can we can stop Arsenal. And McTominay is a good player. I don't know why we are debating about McTominay, that he has done a good performance until Casemiro came into the lineup. So why people are doubting him? And we know that he has played hardly in the games, but looking at we can't doubt him because he is improved, and we should expect a good performance from McTominay. Yeah, uh, I am completely on board with the midfield options that you have stated to me, Abhijit Bhai, that I think McFred is a popular choice right now that is going around because of the lack of options that we have as Casemiro is banned from this game. But the problem I always had with McFred is that only one of them cannot do the job. You always need both of them together. And that somehow takes away the creativity from the midfield. Because although McFred are very good, stoppers of important players of the opposition, they somehow break the game and just create the game around them. There is always a lack of creativity that goes around with them also. And that is why I think that Casemiro was something the missing piece always when we had Bruno and Eriksen, because that just completes the midfield set that we have. But again, Casemiro is not there. McFred is something that we rely on. And a lot of discussions that have been going on Twitter was of Lisandro Martinez to start as CDM. I am I was like, when Lisandro Martinez transfer happened in June, around June and July, whatever month that was, there were a lot of speculation that ETH is buying him to play as a CDM role. But ETH in his interview was pretty clear that he was the left center back of my starting 11. So ETH knows that Lisandro Martinez's best position is at left center back. And now we have a pretty good competition with him, that is Luke Shaw. So I truly believe that there is always this is always a good headache when you have very good players for the same position. But now transferring to the main point, and I will ask this to Sandeep Bhai, is that would you have considered, even for the slightest moment, even if the manager believes that Lisandro Martinez is the left center back and he doesn't fits in my midfield right now, would you have thought about it? Would you have considered it that Lisandro Martinez starts at the CDM position? Or you are also of the firm believer that whatever the manager thinks is best for the team is right now the left center back position for Lisandro Martinez? Yes, Sandeep bhai. So I actually was like simulating on FIFA and the game, and I was actually starting Martinez in the CDM position because I believe Fred and McTominay, whoever plays, I think somehow they are not that adept at reading the game. That where would the next ball from the pass after the pass would be. So I think Licha or I think Martinez and Casemiro both have that characteristic or trait that they can read the game very well. They will know where they will pass the ball next, and I think that would have been needed in today's game because Arsenal's midfield is the best in the league right now. Partey, Xhaka, and Odegaard are tremendous this season. And if Arsenal win the Premier League, I think Odegaard gets the player of the tournament. So I think today we needed something like Fred pocketed Kevin De Bruyne in the Manchester derby. I think Fred was needed in the lineup today for pocketing Odegaard or maybe man marking him. Let's not give out the final thing. But I think Fred
I would have started Martinez in the CDM position with Fred and Eriksen in the midfield. Bruno shifting to the right, Rashford to the middle, and Garnacho on the left. But as the league lineups, you can see that Weghorst is starting. He could be good in applying pressure from the front, because. But again, against Arsenal, I think we would be deploying a counter-attack formula, and Weghorst is not that fast at all because I think there are faster players on the bench than him. But let's see what's the final lineup in 2 to 3 minutes. But if it is according to the league lineups, I think maybe we will be Ten Hag is counting on more possession because, and also Scott McTominay is not the greatest passer of the ball. He can be used in breaking up the attacks and everything, but he is not that great at finding the spaces where he that ball from Casemiro to Pellistri the other day against it was I think in the cup game. It was brilliant. So I don't think Scott McTominay has that pass in him to break up the play and instantly start the counter attack. So and Licha has that in him. Licha can find that killer pass crossing the midfield, like canceling out the midfield through and through. So I think that I'm quite surprised that McTominay starts over Fred, and I think one more thing we have to consider is if Shaw isn't at left back, Saka is playing there and Saka against our Malaysia would also be a very uh, I don't know what it would be a very I would be very skeptic on believe like firmly having my faith in Malaysia to stop Saka. He did a great job against Mahrez, who was in great form before that, and he has that dog in him. Malaysia, he's never shying away from a challenge. But I think Ten Hag has to pick lesser of the two evils, and I think Shaw at left back would be much more efficient in stopping Saka. I think we might have the lineups final right now in 1 minute or 30 seconds. I'll just Sandeep bhai, check on it. why should Yeah. why should Shaw start? I think because Malaysia's positional play is not good actually. Okay. Saka लाइनअप doesn't सेम ही carry आया the है. ball. लाइनअप इज आउट. लाइनअप सेम ही आया है. Okay, It's the same. the Kushagra will be giving the lineup in the chat or so YouTube. So we will just wait for that message to flash and then we will figure out how we are planning today. Yeah, Abhijit, I continue. Yes, so Let's wait. Malaysia's positional play is not good actually. He can be good in one-on-one, but he cannot, sense that pass where is coming. So Saka is very good in he's not good in ball carrying, but he's good in one-touch passes. So they know how to link up play, Odegaard, Saka, and Ketia. So in that situation, Shaw and Martinez are both good in that. They know how to cut the passes, do the tackles. Malaysia can't do that. Malaysia is good in one on one or even marking the player. So Licha starting at stadium doesn't make sense in this match, in my opinion. That's very true. Yep. That's very true. Uh, what you said about Malaysia about his position play, Yes, but but also you when said that McTominay is poor in passing that but he has to up his performance for that because So you can't. It's a I very I important match. I I think guys, when you're playing the professional football that you are never actually we have the lineup and it's there the goal and somehow I hate Shaw, this Titans Martinez, lineup. Varane, and wan-bissaka in the defense. We have Bruno at number 10, McTominay and Eriksen at the 6 and 8. We have Anthony on the right, we have Rashford on the left, and we have Vegas through the middle. We have Okay, so substitutes of so Lindelof and White. if Yeah, if I'm yes, if I am correct that McTominay has completely taken the position of Casemiro for this game, and I think that was a bit expected, but I always believed that it would be McFred. For me, for what I'm looking at this lineup is it's a very positive lineup.
Yeah. It's it's like Ten Hag has accepted that he doesn't have his first choice CDM, but he's not backing off his the original lineup that he always plays. That is having four people at the defense, like always, three people at the midfield with a CDM, and three attackers, that is right wing, left wing, and a striker. I think this is a very positive move by ETH, irrespective of the players that he has with upon him. And I think this somehow might play on the minds of the opposition, because right now we are lacking one of the best players that we have had. And this is the Arsenal lineup. Sorry, Ramsdale White plays at right back, I think so. Saliba, Gabriel left back, Zinchenko left back, Partey, Zaka It's as White. expected. It's as They are also, expected. As yeah. So I think guys, we are going with a very positive lineup, and I'm really now happy with this, because ETH is trusting his players. He's trusting a person sitting on the bench, that we don't have Casemiro today. You have to step up and take his position and play well. I think this is something very good by the manager. He's not getting scared. Although ETS never gets scared, but he's not backing out of the challenge. He's ready to go to war with McTominay. He's ready to go to the war with a player who is not a proper CDM or a CM. He's a mix of both. So really, I'm really happy with this lineup. And uh, And again, both of let's just the agree on one thing. points. McTominay has 4 games out of the season where he is very good. So let's hope this is one of them, and the two another two against Leeds. Yes. Yes, I also believe, but a really important match for McTominay. I think it's a make or break for him at the CDM position for McTominay. And the points that you both were mentioning about Malaysia is, although I agree on certain things, I think Malaysia is good on one-on-one, as Abhijit Bhai is saying, but we should always appreciate one another point is that Shaw also helps Rashford in the makeup play. Shaw hmm, is very good with the connection that he has with Rashford on the left side. And I think this will really open up the Arsenal defense today if it happens nicely. And again, now the lineup that is out, and I would like to ask Pulkit Bhai. Hello, Pulkit Bhai, your face I can see, and there अरे is there मैं ये सोच रहा था कि there मेरे को बुलाया नहीं अभी तक आपने. नहीं, हाँ सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, देर आए दुरुस्त है. बट पुलकित भाई, सिंपल हाँ, सवाल है ये, बहुत बहुत सिंपल सवाल है. एंटनी इज अ पूछिए. प्लेयर दैट इज बीन क्वेश्चन अपॉन ऑन ट्विटर. एंटनी पे हाँ, हाँ, सवाल उठाए जा रहे हैं, और स्पेशली हम्म, जब आपके काउंटर में एक ऐसा प्लेयर हो जो वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर है लीग का, currently on his form. Saka has been on hot form, और आप एंटनी हो जिसके ऊपर इतना बड़ा प्राइस टैग है, और ये गेम हम्म, जिसमें आपने स्कोर किया था रिवर्स फिक्सचर में. अब ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है लीग के कोर्स में भी. तो क्या लगता है एंटनी के मैनूवर्स आज होने चाहिए, और कैसे इसको ये स्ट्रक्चर करना चाहिए अपनी राइट साइड विद बिसाका, क्योंकि डेलो एक गेम प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जो साथ में लेके चलता है विंगर्स को, बट बिसाका इज समथिंग लाइक अ आर्मी मैन ऑन जॉब, और समवन लाइक अ सिक्योरिटी ऑफिसर, की भाई जो मेरी ड्यूटी है, मेरे को. वट एवर ड्यूटी आई हैव, मुझे वही करनी है. तो यहाँ पे मेरे हम्म, को लग रहा है कि एंटनी का फॉर्म थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है डायलॉग की इंजरी में. एंड आज कितना इंपॉर्टेंट है विद knowing that Zinchenko is not one of the fastest LBs going around, but it can be used in a good way, that Bissaka somehow supports Anthony. How does Anthony play this out? पहली बात तो हेलो सब भाइयों बहनों. हाय ओजस भाई, हाय संदीप भाई, हाय. बेसिकली आज मैंने ना 12 बजे आज केक मंगा लिया. मैंने कहा अगर हम आज जीतेंगे और 12 बजते बर्थडे है तो मैं केक काटूंगा टीवी के सामने जीतते हुए जीजेएमयू के साथ. और दूसरी बात, आई मीन मैं ना बहुत चिल हूँ पिछले 7 8 5 से. आई एम लाइक हार गए तो केक फेंक के मारोगे क्या? हार गया तो उसके लिए भी अरेंजमेंट है, बैकअप अरेंजमेंट है. बट मेनली क्या है कि आई डोंट हैव फीलिंग कॉन्फिडेंट इन हेडिंग टू दिस मैच. मतलब कहते ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट करना इज नॉट गुड, बट आई एम पर्सनली वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरे को ना आर्टेटा का एक चीज़ समझ आता है.
वंस एन आर्टेटा ऑलवेज एन आर्टेटा। प्लस ये भी है कि कि जैसे एंथनी को लोग बहुत जज करते हैं, ओके। मैं जब मेरे को याद है, हम लोग स्क्रीनिंग में आए थे जब एंटनी का पहला गेम था, आई गेस एवरीवन वाज देयर मोस्टली, एंटनी स्कोर्ड एंड वी ऑल वर जंपिंग दैट हु ही स्कोर्ड, एंड सम आर्सेनल फैंस वर काउंटिंग कि इसको कैसे पहले गेम खिला रहे हो। आई ओनली टेल देम वन थिंग, तुम्हारे पास निकोलस पेपे था, ही वाज 75 मिलियन, आई हैवंट सीन इन द प्रीमियर लीग एट ऑल, एक मैच खेला होगा। सो आई मीन लेट्स फॉरगेट दिस प्राइस टैग थिंग, बिकॉज प्राइस टैग का क्या होता है ना, एरिक टेन हाग इज अ गाय जो प्राइस टैग देखता ही नहीं है। सैंचो वाज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट ब्रिटिश प्लेयर वी बॉट, ओके। उसको एरिक टेन हाग को पता चला कि उसका फॉर्म अच्छा नहीं है, ही इज सिलेक्टेड टू वर्ल्ड कप, ही हैज सेंड हिम टू नीदरलैंड्स डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि स्क्वाड में डेप्थ नहीं है, प्लेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो ही इज बेंचिंग देम, ही इज ट्रस्टिंग की अपनी अकेडमी को कि ठीक है, अगर बोर्ड में को प्लेयर्स नहीं दे रहा जो मैं मांग रहा हूँ, लेट मी प्रमोट द प्लेयर्स। अ टिपिकल अकेडमी है ना, टोटल फुटबॉल गाय, जो वो आईएक्स से लेकर आया वो यहाँ लेकर आ रहा है। फिर मानो को उसने वो दिया थोड़ा, मालो एंड पेरिस्ट्री को थोड़ा उसने गेम टाइम देना स्टार्ट किया कि विंगर्स तो खराब नहीं है, बट लेट मी सी हाउ विल दे विल प्ले। फिर उसने गर्नाचो को प्रमोट किया, जब तक सैंचो नहीं है तो ही वाज लाइक ओके लेट्स रोटेट विद गर्नाचो। गर्नाचो स्टेप्ड आउट वेरी वेल अगेंस्ट दैट सिटी गेम। अगर गर्नाचो नहीं होता वी कुडंट हैव वन दैट गेम, टू बी ऑनेस्ट। सो one thing I like about him that he always had a backup plan. कभी ऐसा नहीं है कि he is going clueless in कि अब हम क्या करेंगे। Like when Casemiro was bench, when he was got yellow card, उसने सीधा उस गेम में बोल दिया था एवर्टन क्या किसके साथ उन्हें ड्रॉ करा था पैलेस में, कि हमने अपना जो रीसेंट गेम है वो हमने बिना कासेमिरो के जीता था। सो दिस फॉर दिस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। प्लस मैकटोमिनी का एक भी गेम खराब नहीं गया अंडर टेन हाग, एक भी गेम खराब नहीं गया है। आई मीन आई कांट से जब पहले मैकफ्रेड स्टार्ट करते थे आई यूज्ड टू फील लाइक कि यार इनसे अगर थ्रू हो गई तो कौन रोकेगा। अब मेरे अंदर ना थोड़ा दिल में ना सुकून है, क्योंकि मेरे को पता है लिचा और वरान पीछे है, नॉट लिंडलॉफ एंड मैग्वायर। सो मेरे को पता नहीं किसी दोस्त ने बोला था कि ब्रो फ्रेड एंड मैकटोमिनी प्लेयर्स खराब नहीं है, उनको जो पोजीशन पे खिला रहे थे हम लोग वो खराब है। To be honest, neither Fred was a CDM, neither McTominay was a CDM. McTominay box to box midfielder था, और Fred as a plan, Macfred was the CDM. Macfred. right? Two people were doing one job. मैं उस पे वही आऊंगा ना कि बेसिकली वी वर ट्राइंग टू मेक अ वेज एंड नॉन वेज बर्गर टुगेदर, इसको मिलाकर खाते कैसा लगेगा। तो प्रिसाइसली यूनाइटेड ने एक नई मैकडोनल्ड डिश बना दी, मैकफ्रेड। अब ये मैकफ्रेड ना टूट रहे ना जुड़, बेचारे जुड़े हुए बिना बात पे कि हम करें क्या। एंड दे उनकी कुछ केमिस्ट्री भी नहीं बन रही थी कि मैं किसको प्रेस करूं या तू आगे जाएगा मैं आगे जाऊं, बिकॉज दीज आर द प्लेयर्स इनको आगे जाना बहुत पसंद है। ओके वंस दे आर आगे दे कांट ट्रैक बैक, दैट वाज द रीजन वी गॉट कासेमिरो, ओके। अब अगर देखा जाए तो मैकफ्रेड एंड मैकटोमिनी आर नॉट बैड फॉर अ गुड स्क्वाड डेप्थ इन अ मिडफील्ड, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे क्यों नहीं न्यूकासल इन पे 30 मिलियन मांग रही है, मैकटोमिनी के लिए देने को तैयार है। और व्हाई वेस्ट हैम इज लुकिंग फॉर डेक्लन राइस रिप्लेसमेंट एज अ मैकटोमिनी, बिकॉज वी ऑल नो मैकटोमिनी कैन बी अ पावर हाउस, कैन बी अ मिडफील्ड पावर हाउस, अगर उसको तुम नंबर 6 जो एरिक्सन का रोल है ब्रूनो के रोल में खिलाओ थोड़ा, जैसे वी सॉ अगेंस्ट लीड्स कि हाउ वेल ही गोज आगे एंड ही ट्राइज शूट, दो तीन तो बैंगर मार ही देता है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट मैकटोमिनी का गोल है आर्सेनल के अगेंस्ट व्हिच वाज अ ड्रॉ, एंड वी ऑल नो दैट वाज अ बैंगर एब्सोल्यूट। सो I never doubted both of the abilities, because Fred को मैं जब देखता हूँ ब्राजील टीम में खेलता है with Casemiro and all, I feel this guy is not bad, he's very pacey। बस उसको जिस पोजीशन में Ole was playing earlier और giving him responsibility कि भाई तू ट्रैक बैक भी कर तू आ गया, that was a lot। That's where I like Eric Ten Hag कि उसको पता है कब क्या रोटेट करना है टीम को। मेरे को कासेमिरो खिलाना है तो मैं फ्रेड को खिलाऊंगा साथ में, जब मेरे को पता है सिटी जैसी टीम है जिसको हाईली अटैक करना बहुत पसंद है। जब मेरे को पता है मेरे सामने a team like an Arsenal, Chelsea who likes to थोड़ा sit back and on counter like us, he will play Casemiro, Eriksen and Bruno। So एटलीस्ट एरिक टेन हाग सुलझावा नहीं है। सेम विद आर्टेटा, आर्टेटा को आई मीन वी ऑल सेड ही इज शिट, बट उसको जो बैकिंग मिली है एंड द वे ही इज यूजिंग द बैकिंग इज रियली इनक्रेडिबल दिस सीजन। अभी भी उसको एक सेंटर बैक लाके दे रहे हैं, प्लस गेटिंग ट्रोसार्ड, ही नोज दैट ही नीड्स अ स्ट्राइकर एंड ट्रोसार्ड इज द बेस्ट फिट राइट नाउ जो मार्केट में था, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद सेम मतलब दोनों मैनेजर ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, सेम एज द टीम। जो जाका हमने पिछले एक साल पहले देखा था that he was on a verge to leave Arsenal for free is now one of the best midfielders in the Premier League। Same for Saka versus जैसा आपने बताया एंथनी।
साका भी टू बी ऑनेस्ट 2 सीजन से बहुत अच्छा खेला. एंटनी का फर्स्ट सीजन है. दैट्स आई एम नॉट जजिंग हिम एट ऑल कि उसको एटलीस्ट स्टार्ट में हैप्पी ठीक है. टनाक इज गिविंग मी कॉन्फिडेंस की ब्रो खेलो. यू हैव बीन प्लेइंग वेल. तुमने जब भी खेला यू स्कोर्ड. कीप स्कोरिंग. सो आई एम हैप्पी दैट ही इज ट्रस्टिंग की ये में बेकार जगह कोई नहीं. बट इवन एंटनी नो दैट देयर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस की एरिक टेनाग इज लाइक अ नो नॉनसेंस मैनेजर. एक गेम तुम्हारा So खराब गया यू आर बेंच्ड. one thing I would वन like to गेम ask here, one thing I would ask to like to ask here, ki, so now that we've seen the lineup, so Vegas and Anthony are starting, and we know in the counter attacks we haven't seen Anthony, with that blistering pace. So Ashish, coming to you, do you think that like Ten Hag will deploy a counter attacking formula today that like क्या बोलते हैं मतलब where Anthony and Weghorst would not be such a threat to the counter attack because of the slower pace. एक्चुअली जब ओले का पीरियड था वी यूज टू प्ले लाइक एवरी मैच वी यूज टू प्ले लाइक मोस्ट प्रॉब्ली अ काउंटर अटैकिंग मिडफील्ड में ब्रूनो एज अ 10 और लाइक अ विंगर खेलते था तब. लेकिन अभी वेगॉस इज वेरी स्लो पेस. उसका पेस बहुत ही कम है. वी सॉ दैट इन क्रिस्टल पैलेस वाला मैच. एंथनी इज वेरी गुड एट पेस एंड ही कैन कट बैक एंड ही कैन डू स्टफ. लेकिन जो उनका जो मिलना है ना जो द लिंक अप प्ले इज नॉट गुड एट ऑल. वी हैव सीन लाइक ब्रूनो वाज गोइंग इन बिटवीन देम टू एक्ट एज अ फ्लूइड कि लास्ट मैच में देखे तो पूता पूता that happened right because of that only because there was no gelling between Vegost and Anthony. So Bruno was a fluid there. शायद आज भी I think Bruno will play like a fluid role बीच में अगर. But I think Vegost should not have started today. Casim, what is that? वेरगोस टू बी लाइक दिस. आज वेरगोस ने कोई एक इतने गोल मार ले कि Uh, आई कैन मेक एन एडिट ऑन हिम कि भाई आई मीन Nay, nay. I think all points aside, whatever you guys have, just flowed with the points, and I'm really sorry I didn't welcome Ashish bhai and Abhishar bhai. Welcome guys, welcome to the stream, and see, One point, Ayush bhai, one point. Adding to the Ashish bhai's comment, what he said, Vegas. So what the tactics about ETH? ETH का tactic ये है कि we know we have two creative midfielders actually, Eriksen mm, and Bruno. Okay. Now Vegas का एक मतलब लास्ट मैच आपने देखा होगा कि he stretches the defense. मतलब वो एक दो बंदे तो एक साथ लेके ही जाता है. If you हाँ see वो last तो game, था. हाँ और we have हाँ seen that Bruno okay वाला goal right that is yes. made yes. possible So because of Vegost. sir, So I agree. लेकिन Anthony और Vegost का I think there is no like there's no हाँ proper linking. हाँ तो हाँ उसका उसका भी बोलता हूँ मैं अभी कि रैशफोर्ड का क्या है कि वी कैन प्रोवाइड हिम थ्रू बॉल या फिर डायरेक्टली हम एक मतलब लॉन्ग बॉल डालेंगे तो रैशफोर्ड भाग जाए. वो एक हाँ सीन है ब्रूनो का. हाँ when you right. when you stretch when you come into their opposition goal post बॉक्स के अगर जाते हो that हाँ time Vegas can do that link up play. He can stretch सालिबा और गैब्रियल को दोनों को मतलब अंदर मतलब ये कर सकता है ये मतलब हाँ धकेल सकता है. And Ericsson coming into the box and he can provide that space और उसको गोल भी कर सकता है. This is okay also a tactic for Ericsson है. मतलब ऐसा सोचा है मतलब वी नो दैट थोड़े देर के बाद garnacho भी आएगा या फिर फ्रेड भी आएगा तो Fred भी यू विल आएगा. हाँ हैव nay, इंटेंसिटी तो s- आएगा हाँ ही 100%. no, रैशफोर्ड अभिजीत विल बी भाई नंबर it's 9. अभिजीत no. भाई I मेरे को एक चीज I ऐड think करनी है. मेरे को एक चीज ऐड हम्म करनी है. सॉरी जस्ट भाई. हाँ वर्गेगोस का जिस तरह अगर गेम देखा ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर हु लाइक्स टू प्ले विद इन द टीम. मतलब वो मतलब पासिंग अगर देखा हो किसी ने वेरगोस वाज पासिंग बिटवीन ब्रूनो एंड रैशफोर्ड बहुत ज्यादा कि वो किसी तरह गेम को इन नंबर 9 लेकर आता. जस्ट द थिंग दैट डिसअपॉइंटेड मी वाज दैट ही वाज मिसिंग द हेडर्स. अगर वेरगोस हेडर्स मिस नहीं करता ही कुड हैव स्कोर्ड सम गोल्स टू बी ऑनेस्ट. मतलब बिकॉज हमने देखा कॉर्नर में स्पेशली टीम्स वर कवरिंग हिम. जो पैलेस था पैलेस वर ऑल ओवर द वेरगोस्ट. तो हम हिम इसको एक एज अ वो यूज कर सकते हैं डमी दैट maybe Eric Ten Hag wants to use Vergost as a dummy to make Rashford a striker and Anthony wings से ball दे और Eriksen वहां से crosses दे and Vergost can be that dummy type of a guy. We came here to win. हाँ, I mean David De Gea ने इतने saves करे तो of course he has yes. that confidence. No, 15 saves. guys, let's.
like just If come our to the keeper is very central. confident about the game, so we are already won the match in case the mentality say. Yes, Yeah. but like coming to everything that whatever you guys have discussed in a cluster, like it was whatever you have, said your points or expressed your opinion. Only point that I will close this, Vegas thing is that there are two types of wingers in a team. There are always two types of players in a team. You have a player like I know a player that plays in La Liga, that's Oyarzabal, the one of the wingers that provides the ball to the central striker. And then you have wingers that just love to come in and score the goals for the team. And that's where a proper striker has its work cut out. Now, what Marshall used to do good was, although he's injured, he used to connect with the wingers. And Vegas being centrally, dominating in the, lineup, he has a role and he understands that role that he's the finisher. He's a person who will receive the ball from the other players and he has to convert his chances. This will come slowly into his game that he has to gel with those wingers, those world class wingers that he's playing with that like to be, just at the center of the game all the time. They love to score. They are brilliant players cutting in and just, you know, taking the opportunity to score bangers here and there. And Vegas has to understand his responsibility for that, that he has a most significant role to play as a person who holds the attack and also helps his wingers that are going around him to, just finish the game off or, just connect somehow with the midfield and wingers together. And before I go further into this discussion, I just want to go and look at some of the comments that the guys have made on this stream, and one by one I want to go with the comments, and if we can start from, I think so it's Rohit Sachin. Rohit bhai, sorry, yeah, Sachin. Fred for Ericsson may be made sense because we need pace, but it's a manager decision and we can't doubt Eric right now. See, um, Sachin bhai, no one on this panel will doubt Eric with the results that the team is producing right now. But when you take out a player that is like a typical Ericsson type of player, you just take out the creativity out of the midfield. You just, you just make us more, uh, what should I say, monotonous of having just counter attacks as a team. Static When हो you have जाती है टीम if you Ericsson, take Eriksen out. yes, when you have a player like Ericsson, there is a confidence in the attackers, in other players on the midfield, that anywhere a good pass or pass that just breaks the defense or just breaks the midfield is coming, and players are always on the toes, and there's a confidence that we have a player right now who is connecting us in a, in like in a central way, in a player who just joins the midfield and attack in a way that the other players in the team cannot do. Ericsson is a quality that was missing in the team for a long time, and he is here, and I think he's being utilized properly. And Fred starting over Ericsson right now would have just, just ended the creativity in the, in the midfield for us today. And see, along with this point and whatever discussion is going around the midfield, Abhishek bhai, just coming straight at you. See, I personally don't have a problem with, with the midfield, but there are always doubt on the performances of McTominay. I know I am repeating myself from the first minute, but McTominay is a player. How does he counter Odegaard? Because Odegaard is a player again at the top of his form, at his peak, and he's playing so well. How does McTominay stop Odegaard from, creating the attacks for, you know, I should say Nketiah or Martinelli or Saka? Because once they just start running, they're just so hard to stop. How does McTominay handle this Odegaard situation for you? So first of all, thank you everyone. I was listening as a viewer. It was like this conversation is getting intense and intense every time, whatever the point would be. I love that everyone has opinion, and it's been really appreciated by all.
So yeah, for the McTominay's performance, you say we have, we have one annual Park Ji Sung performance from McTominay. Every year he will have one performance that will be like, why this guy is not starting day in day out. So I think that performance is still in his back, and that is the best time and best opportunity for him to pull that out of his back. And more of it, I believe that with like McTominay, I would rather say that Eric Ten Hag would not be using McTominay as a role in which he'd be having the Casemiro's role. Okay, so more or less he'd be being on the back of Odegaard, like Andre Herrera used to do if he has to man mark someone. So more or less, I feel like McTominay would be doing that part. And then when the Saka would be controlled from the wing side, then I think that we would be able to hold up the creativity which usually they have, because it's not that most of the part is being held up there. So if you control Odegaard and Saka, you just stop the supply for the Arsenal's creativity chance of having big chances, or having typical those one touch two touch passes. So you need people around them. So I would rather say that McTominay playing as a proper CDM, as what Cass used to do, I think that he'll be man marking more or less Odegaard. Yes, Abhishek bhai, I agree that uh, main duty of McTominay is right now to stop Odegaard from creating further attacks into our final third. And I will now go back to the comments to, read because I missed some of them last time. And Kushagra Bhai has just sent the team because we requested him. So this is the team again, guys. That's De Gea starting at the keeping, and Wan-Bissaka right back. Luke Shaw is welcomed back at the left back. Varane, Licha centre backs. McTominay, Eriksen, and Bruno in the midfield. Rashford left wing. Anthony right wing, and Vegos at the central of the pitch. So uh, again, very positive lineup. And Sachin Bhai says the same point as Abhishar Bhai said, that I feel we need a Jason Park kind of a player in midfield to sign next season because he slots everywhere. Sir Alex put him on any player he felt gave United a hard time. See, I also believe that we need a player like him, I and I think we were going after him. That was, I think, for me, I think it was De Jong for ETH. I think it was De Jong for ETH, that kind of player, because he just does everything in the midfield for me. so just for that. And Yeah, sorry to cut in between. I believe that maybe Ten Hag would give a chance to McTominay to turn into that player, who just runs and just disrupt the play. So that was I think his plan into it, because I see more or less every time McTominay comes in, he plays with those disruption passes, and blocking the passing lane and doing unnecessary fouls, maybe you can say, but yeah, doing those stuff, dirty stuff. I, I trust McTominay, but I think it will be a hard game for today, Abhishar Bhai. And one last look at the comments. Kushagra Bhai has commented something on De Gea, what he has said before the game. We come here to win the 3 points. As always, I love the positivity, but I think it is going to be a long 90 minutes for Manchester United. And Wali Bhai says pressure is on Arsenal. They have to win this game looking at the lineups, form, home advantage. If they don't, then it's laughable. I think with the form we are in, if they lose, it's not laughable. I think it should be expected by Arsenal because we are playing really good, and Arsenal is not playing a team below, on the second half of the table. It is Manchester United, and these games are always serious. Sandeep Bhai says, ETH, we have found the solution to beating them. And the solution is, who should I trust with this? I will go to Sandeep Bhai. You don't And jinx, or just you just don't say anything, if you are having anything, just yes, keep it. I know you jinx terrible. You just yes, don't say. Actually, I am see, quite surprised by Eric Ten Hag saying this in a pre-match conference. Like,
we have found the solution to beating them. Like He maybe should he's playing. stop hanging out with Pep Guardiola for first time, and he I should know, stop right? hanging I out know. with Pep I'm Guardiola. I'm You quite don't play surprised. your It's cards it's before the totally season. opposite to Eric Ten Hag's, nature and the type of person he is, and I think it's just some mind games by the manager to wreck Arsenal's confidence Correct. and maybe Mind do games. some damage to their game plan or something like that. And McTominay is quite a surprise. Like, it's not a surprise, let's say, but I would have thought that ETS would have gone some another creative way to have introduced Martinez as CDM or something like that. But he has gone with a quite normal kind of a conservative ऋषभ kind of a भाई, that lineup. does not give confidence to your midfield as well ना। अभी आप सोचो कि आपके पास नहीं है, आपका मेन प्लेयर नहीं है, और आप बेंच से मिडफील्ड को नहीं खिला करके आप डिफेंडर को मिडफील्ड खिला रहे हो। I know what is happening, when United is playing Luke Shaw as center back in place of Maguire. How much it would have been. I know that he is not in plan, लेकिन you are impacting that player's morale as well ना। I know that whenever the Varane would be out, Maguire will straight walk in. But for LCB, he did not play him. So that gives overall picture. So अब अगर मान लो आपके पास striker नहीं है, let's say if Martial is not fit, okay, you go with Vegas. Though he is not as is Martial, वो दोनों का game altogether different है. But True. preference अगर दिया जाएगा तो we will go for Martial. But we are not going for it's not like you don't play Vegas. Okay, let's play Anthony at up front because he could do link up or he could run fast or anything like that. It's you cannot do that na. That damages players confidence a lot. That was my True. point I wanted True, to bring. true. I agree. I somewhat agree, but I feel McTominay he's a very important part in our he's a very good squad player, and in games like these when a person is injured or suspended, he can come in and do the job. But what my thinking was that he is a bit suspect in some areas, like especially if not just not to do anything with the passing or the complete game. I think he has a bit. He hides when the suppose when Licha or Martinez is playing out from the back. Mac- Casemiro occupies the space between the two players who are giving the pressure on Licha and Varane. I think McTominay doesn't create that space for himself and the centre backs to give the ball to him, and he is a bit suspect in creating spaces and reading the game, like when the next pass would be. I think more or only in this aspect that yeah, more McTominay or would be. less more or less I anticipate McTominay playing as that inverted center back role or inverted fullback role, in which you come back and have that in such a way that you'll have back three. So I see McTominay getting in that part of the back. Avijit, bhai, what do you Correct think of point. McTominay? Yeah, I was just No, coming to नहीं, you. yes. no, Abhijit bhai, yes, नहीं, I एक also पॉइंट, ए वन, wanted to take ओनली your वन पॉइंट, ओनली opinion. वन पॉइंट। अभी संदीप भाई बोल रहे थे कि इज नॉट अबाउट पासिंग। मुझे एक बात बताओ कि ब्रेंटफोर्ड के बाद की गेम में से मैकटोमिने ने मतलब जिस तरह से वो पहले मतलब इतना फंबल होता था, अब तो हो नहीं रहा है। वी हैव सीन अ बेस्ट ऑफ हिम। मैंने लास्ट टाइम भी जब स्ट्रीम पे या फिर बोला था कि भाई जितना अच्छा है निचोड़ लो, उतना अच्छा हो। एंड ही आउट परफॉर्म, मतलब उसने अच्छा ही किया। संदीप भाई, आप अगर मतलब आपके पासिंग की बात करें तो व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड अगेंस्ट लिवरपूल, you you remember that first assist, I think, to Elanga, where he nearly scored against and it was hit to the post. That was from McTominay. So we can expect something from him. He can do something that No, हम of ऐसे course, डाउट नहीं Abhijit कर bhai. सकते कि मैकटोमिने नहीं कर रहे। भाई वो N- कैसोमिरो ने उस पोजीशन पे सीमेंट ही किया। ही इज द वर्ल्ड क्लास को आप अगर मतलब बेंच पे बैठा के आप क्या करोगे? सेम। Like, that's सो what I was saying. He's मैकटोमिने an amazing bench. He's an amazing squad player to come from the bench and do a job for the day. But I think Arsenal would be too big and too consequential and a very big game for him to come in and do that job. no, That's what I was saying. I I always would want our players to give go out and give their 100% and do an amazing job.
नहीं नहीं, आर्सेनल एक संदीप ऐसी भाई, टीम है, अभिजीत, मतलब अब ओजस भाई अभिजीत एक मिनट, भाई, अभी, एक हाँ हाँ, वन पॉइंट आई विल फिनिश। आर्सेनल एक ऐसी टीम है कि अगर आप उसको बुली करोगे या फिर ऐसा डर्टी वर्क करोगे, देर देर कंसंट्रेशन एंड देर देर एवरीथिंग डिसरप्ट्स। मैंने देखा है, मतलब 10-15 साल से देख रहा हूँ। इफ यू डिसरप्ट देम, दे डेफिनेटली गो, वो Manipulate. डेफिनेटली गो। Correct, correct. मैकटोमिनी इज वन प्लेयर दैट ही कैन डू समथिंग। कैसिमिरो होता तो मतलब वो अलग ही बात थी, हम ये डिबेट ही नहीं करते। बट मैकटोमिनी Actually, इज गुड, ही कैन। मार्टिनेली या फिर ओडेगार्ड या फिर साका को अगर हम ऐसे बुली करेंगे, डेफिनेटली देयर देयर प्ले see, विल the बी डिसरप्टेड, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। game will be won and We lost will in be the midfield. ये मैकटोनमे Yes. करेगा ही करेगा, लिख के ले लो। क्योंकि देखो, आर्सेनल किड्स देयर किड्स बेसिकली, ओके, कंपेयर टू मैकटोनमे दे आर किड्स, राइट? एक बार ऊपर नीचे कर दिया मैकटोनमे, दे विल मेस, he'll mess with their brains, खत्म है। We are winning the midfield, but the one reason only McTominay suffer is that ball को जो when he's passing, no, he passes just like that, doesn't concentrate, like Yes. देखेगा नहीं, जस्ट पास करेगा। दैट्स द ओनली वे देयर इज एन इंप्रूवमेंट फॉर मैकटोनमे। अगर तो इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन वो जो मेंटालिटी रहता है ना, वो भी कभी कभी इट्स ओके ओके। लाइक इफ वी, अगर अभी अगर गोल खा लिए समझो, ही टर्न्स लाइक अरे नहीं, कैसेमिरो इज अ प्लेयर दैट he wants to do more and we have to win that match. Like in this guy is somewhat like he gets laid back. अरे we are step back, we are step back. वो जो mentality है ना, that should be growing himself, and we need him today. Hope he does very well today and mess with these kids in Arsenal. And eh, Arsenal have got very weak advantage in striking positions today. No, there's no proper striker at Nikita. क्या करेगा? Most probably क्या करे? Only the नहीं, wingers he will be can scoring. score goals. He can Yeah, score He goals. he We can, but cannot, is we wrong. cannot, he, we We cannot cannot just, defend him like that. His yes, Arsenal we are he winning cannot games. be, But we more no, part can, of guys, I his know, game. but like in recent Ashish form says, like if we take like last year कुछ भी नहीं करा, it's like okay चल रहा है उसका, but the main goal scorers are Saka, Martinelli, mostly a winger or maybe a midfielder. अगर McTominay plays well, we are winning this match, and most probably we are winning that I game. like the confidence from no, Ashish. Ojas bhai, yes, you were saying something. no, I've been trying to say the main thing that is going around with McTominay is, see, for Ashish bhai, before I say, Ashish bhai, the team that is sitting at the number one right now is, now you can never count any player out of their Absolutely, team, absolutely. because Correct. I remember the City team that played so well with Iheanacho as the backup striker. So you can Yeah, really not count out any correct, player from a team that correct. is currently, leading at the at in Premier League at least. So Yeah, okay. see, whatever information that you guys have, disclosed or just said out, McTominay just fits into why I thought that Anthony will be out and McFred will play. So like it's somehow with Rashford, Bruno shifting to right, because I thought this is how ETH plans his game. But I guess with Zaka and Partey, if I think they both are starting, they uh, they are both the central midfield players who just hold, they just sit back and just dominate game in a way that they like to break the opposition Very passing nice and guy. then continue from it. So Zaka and Partey being there, if there would have been another attacking midfielder with Odegaard, then I think McFred has started. But because it's a battle between Odegaard and McTominay today, in such a way that Odegaard knows what he's doing, but I don't think so. McTominay is accustomed with the position of a sole central defensive midfielder. That is why personally I'm really worried about this role. And but I trust in ETH like everyone. Again, I say the same thing on the panel. We all trust in ETH. Some messages would have been passed, some things would Yeah, have been discussed, how to just control the You midfield, know, control the game of Ojas Arsenal. bhai, I wouldn't be surprised today if Bruno is more on the defensive duties than Eriksen. I think Eriksen will play a much advanced role and Bruno might drop back to do the maybe. defending. What do you think about this, Abhishek bhai? Guys, You're like on mute. Everyone can mute. I tell one thing? Like, which was the match when Eth played 2-4, like 4-4-2, beach mein after the half time?
I think it was one of the last games where Fred, McTominay, and Bruno was on the right side, Bruno and and Eriksen were Eriksen. also there. No, like I think Yes, in match and Eriksen did not. Rashford and Garnacho. See, No, that Rashford is and that Ronaldo is was Ronaldo tha that. shayad. Yes, I think it was. I also don't remember the game either. Yeah, But it was one of the games of the league, and ETH has played 4-4-2. And yeah, but again, the main question right now is that uh, Saka and Martinelli both really, just have plethora of pace, and yeah, Bissaka is also in a very good form, and Luke Shaw is also like he's playing a left back after a long time. So correct. Abhishar, by bringing you back into the discussion for this, bringing you back into discussion for this, if somehow there is a way out of this, the counter attacks that we will be facing today against Saka and Martinelli, do you think there is a chance where our center backs are just rooted at the position and the pace of the wingers of the Arsenal just don't allow them to come forward and join the attack of our team? More of it would be like that, because the pace which Saka, and it's not just pace. Ashish has mentioned about Eddie and Kitia's part. So I would like to come back onto that as well, because Eddie, he does not give you this thing, goals or assist, maybe as numbers you say, but the space that guy creates now, that he'd be dropping back, he'd be getting up front. You get him more as a Firmino kind of striker. Bobby Firmino doesn't give you numbers, but he will give you ample space that Salah and Sane can attack. So that's what this guy is. He's different than Jesus. They both are separate players. But yeah, that's what comes into picture when you'd be having, such players which will create space, and then having your wingers in the full stretch run. So that's where it comes in. So we might see, Luke Shaw doing more of a Luke Shaw and Aaron wan-bissaka. They both AWB would be having a very huge key than center backs, I believe. Cutting them off the from the widths is important. But Yes, accord but according to Ed's plans, no, like every match we are seeing till now, there are only three defenders at the back. If Luke Shaw goes forward, AWB is backward. But today, I would say like proper a main a proper back line, because counters ka game hai. I would say this, we should like proper line रहना चाहिए, back line should be. And again, Ericsson is very important today. मेरे को लगता है क्योंकि that guy काउंटर्स में हेल्प करेगा अपने को. एंड देन कमिंग टू लिसांड्रो मार्टिनेज, वही भाई, तू बॉल्स फेंक, राशफोर्ड को फेंक, हिल भागेगा, विल गेट अ गोल पक्का. I think we will get a lot of goals. That Kushagra has said in one of the comments that we have met Arsenal when they were, leaders of the table. It's 1-1 at 2004, 2-2 at 2007, 3-3 today. I hope it's 4-3 for Manchester United today. I hope it's a narrow win, whatever win that we What a game get, that would be, because 4-3. because Sandeep Bhai, we have one of the hottest top four challenge right now going in the Premier League. We have four excellent teams, four teams that are after each other like anything. And I think 3 points are really crucial for Manchester United today. Yes, Sandeep bhai? So today we are seeing, like, I don't know what the final score is, but I saw Haaland get a hat trick today, and Newcastle is right on our asses with same points if I'm not wrong. And if we win this, City are clear of us by 2 points. So that is very important to see that. And we had the chance to go on second for just one night maybe against Palace, but we did not take it. And City have won their two games with Spurs and Wolves. And Arsenal would be taking a commanding lead. I'm not thinking of top four because I think maybe with another midfield on loan signing, we have top four, sealed, because Chelsea and Liverpool are fighting out a mid derby with them. I guess they are just mid table right now, sixth and seventh. I don't see them coming back up. I don't see Fulham, I think they're Brighton below pulling. that. I think they're below that.
Yeah, Sixth is let. Brighton, I I think. don't think they will finish at eighth or ninth or tenth, but I think fifth and sixth, they are the ones to occupy Li- those spaces. Liverpool I will play Conference League. let's hope so. And like I see Newcastle United, Manchester United, Manchester City, and Arsenal to be the top four. But यार सब यूनाइटेड फैंस के मन में यही है यार, ये टाइटल चैलेंज वाला सीजन हो सकता है. And today's 3 points would be absolutely crucial. And अगर 3 point मिल गए, it opens the title challenge far apart because Arsenal and City have still yet to face each other twice in the league. अगर दोनों गेम में दो ड्रॉ हुआ और वहीं पे हम लोग ने 6 पॉइंट आ जाए हम लोग का, we will be above City, maybe below Arsenal in a very, मतलब 3-4 पॉइंट के बीच में हम लोग रहेंगे. Among us, there will be 3.4 points gap. And Arsenal, let me say, although they are doing good signings in this winter transfer window, they don't have a good squad. It's the same as us. We and them, we have a brilliant starting 11, but there is no squad depth. There is depth, but there is no quality. So Arsenal can have a run of games which might see them, stuttering, maybe get a few draws, maybe a 1 or 2 losses. Manchester City will be stepping up their pursuit of the title, repeat of Manchester United. So I think it is a very getting 3 points today opens the title charge. Top four छोड़ो, top four तो है. Top four होगा. I am quite confident that top four we will be getting top four because I don't see ETH and our Carabao Cup trophy. Maybe we are the favorites now. We should be winning it. And it's a magical season for United under Eric Ten Hag because the way he has transformed, it's just brilliant. And uh, let's hope for the best. Today's game is crucial. Today's game, if we get 3 points, it's Uh, Ro- y- we can hope. Sandeep bhai, you said one of the points that Arsenal don't have the depth, and one of the teams I remember not having depth and winning the title. I think it was Leicester. Leicester City. Leicester Yeah. City And 2015. But Leicester it City, was an amazingly lucky season for them that none of the starting Y- 11 got injured. and That yes, was the most important we thing. If hope. Vardy had got injured for even 2 games, I could see Manchester City eating up the Let, gap between them. let alone Vardy, even Mahrez, even Exactly. Kante, Kante, even Kante, N'Golo Kante. I Kante, think Kante. it was beyond words, beyond that words can describe. It was a I still season that remember that Absolutely. night. that made me believe that magic exists. But Exists, yes. Absolutely. coming back to this season, and there was one of the comment that Kushagra has made on, where Ten Hag explains that we have had good performances with McTominay in the team this season. So I'm convinced it's the right solution. He can do the job. I think this is really important. This comment really, helps in the confidence, helps in everything that McTominay might be facing. That he's replacing one of the best DMs in the world. Abhijit bhai, see one again the same point that we keep repeating on the stream is McTominay is not a CDM. He is not a He's not a CDM. stadium. What role does he have right now? What should be like the first thing that he does on the pitch? Like he ties his shoelaces, whatever he does, what is the first thing? What is the first football thing he does today that really helps the team? Because we are up for a big challenge today, big challenge, and McTominay I think is the key in the midfield for us. मैकटोमिनी का रोल यही रहेगा कि टू स्टॉप देम, डिसरप्ट देम, हरास देम. और फर्स्ट रोल होगा ओडेगार्ड का. ओडेगार्ड को मतलब रोक देना है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट नाउ कि अगर आर्सेनल का स्क्वाड देखे, दे आर वेरी यंगिश. मतलब जैसे आशीष भाई ने बोला कि किड्स है. यस, डेफिनेटली दे आर वेरी यंग. उनका एक गेम प्लान ऐसा ही रहता है कि दे स्टार्ट वेरी फास्ट, दे स्कोर वेरी फास्ट. मतलब आपने अगर न्यू कासल के अगर देखा है, स्पर्स मैंने जो अभी पिछले थोड़ी देर पहले बोला, दे रियली स्टार्ट फास्ट. और वो स्कोर भी जल्दी कर देते हैं. सो टू स्टॉप देम, टू हिंडर दैट अटैकिंग, वी नीड स्कॉट मैकटोमिनी टाइप ऑफ प्लेयर. जो मतलब बंदा स्कॉट मैकटोमिनी कैन आउटप्ले योर मसल. मतलब आउटप्ले मतलब एक आउट मसल कर सकता है, बट ही कैन नॉट आउटप्ले अ प्लेयर.
मतलब वो ड्यूएल्स Correct. जीत Very सकता good है, point. यस ड्यूएल्स जीत सकता है, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक कैसेमिरो की भाई पास फेंक दे या फिर मतलब ये एरियल ड्यूएल्स ले, नो ही कैन नॉट, बट ही कैन डिसरप्ट द प्ले। वो मतलब वो कैसेमिरो की तरह मतलब ये मतलब पासिस जो ये होते हैं मतलब स्क्वायर पासिस या फिर वो नहीं कर सकता है, वो ही कैन ओनली टैकल, दैट इज ओनली हिज रोल। नाउ आर्सेनल क्या करते हैं कि व्हेनेवर प्ले दे प्ले विद पार्टे विल स्टे एज अ डीप रोल, जाका एंड ओडेगार्ड कम अप फ्रंट, वो आगे जाते हैं एंड देयर लेफ्ट बैक बिकम्स देयर सेंटर मिडफील्डर एंड गैब्रियल एंड सालिबा स्टेज बैक टू डिफेंड। तो that makes three line and two back at the defense, or Zaka and Odegaard provides that link to the link, और वो गोल मतलब ऐसे स्कोर करते हैं। So to stop them, at least to stop Odegaard, we need Scott McTominay। बाकी मतलब जाका को भाई कोई भी रोक लेगा, कोई भी मतलब एरिक्सन है या फिर ब्रूनो है टैकल कर देगा, तो ओडेगार्ड को रोकना हमारा मतलब फर्स्ट मोटिव होना चाहिए। दैट मैन कैन प्रोवाइड एनीथिंग, मतलब ब्रूनो ब्रूनो का मतलब सेकंड ये मतलब यही है कि भाई ओडेगार्ड ही, if we stop him till his midfield and make that silly fouls on him and harass him, we will definitely are in the game। और if we मतलब मुझे तो नहीं लगता कि भाई हाफ टाइम तक 0-0 ही रहेगा। इफ वी मेक देम अप टिल 0-0 अप टू हाफ टाइम, वी हैव डेफिनेटली चांस टू विन द गेम। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने हमने 1-0 गोल किया था फर्स्ट हाफ टाइम में, जब सेकंड हाफ चालू हुआ था आर्सेनल वे डेस्परेट टू स्कोर द फर्स्ट गोल, और जब हम 1-1 हुआ तो सेकंड टाइम भी वो मतलब ये मतलब डेस्परेट थे कि भाई हम 2-0 कर दें, 2-1 कर दें, बट दे डिडंट एंड दे मेड सम मोर एरर्स, और हमने उसका मतलब फायदा उठाया और वी स्कोर्ड द गोल्स। सो अगर आर्सेनल को हम इतना डेस्परेट करेंगे, देन वी हैव अ चांस टू विन द गेम। ओनली इज दैट वी नीड टू मेक द मिडफील्ड मतलब टोटली लॉक्ड, उनके हाफ में ही रखे, पोजीशन खेले, मतलब थोड़ा सा अपने पास ही बॉल रखे, फ्रस्ट्रेट करो भाई, जैसे हमने सिटी के अगेंस्ट मतलब जितना पेशेंस कॉन्सेंट्रेट के साथ खेला है वो करो। वी वी हैव द गेम। एंड मुझे और एक बात आपने जो बोली कि टाइटल रेस के बारे में, ओजिस भाई, वी मुझे तो नहीं लगता कि वी आर स्टिल इन द टाइटल रेस। संदीप भाई, आई एम सॉरी टू डिसएग्री यू, वी आर नॉट इन द टाइटल रेस। सिटी नोज हाउ टू विन द टाइटल। तो आप बोल रहे हो कि भाई हम पीछे है, वो पीछे वी कैन दे हैव टू फेस ईच अदर, नो दे नो हाउ टू विन दैट। लिवरपूल भी फर्स्ट मतलब यही थी कि फर्स्ट प्लेस पे ही थी, ऐसा ही था, लेकिन दे ओवरकम इट एंड दे डू। अप्रैल तक हम वी कांट प्रेडिक्ट वी कैन विन द टाइटल। जब तक अप्रैल नहीं आता तब तक हम वी हैव गुड गेम्स नाउ, आई थिंक 10-12 गेम्स हमारे बहुत अच्छे हैं, वी विकर टीम जो रेलिगेशन के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, बट वी वी हैव चांस, बट गिवन द स्क्वाड मतलब थिन स्क्वाड है, वी कांट डू दैट। आर्सेनल के पास भी एक थिन स्क्वाड है, वही तो मतलब एडू और अर्टेटा यही कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बैकअप लाओ, मतलब वी कैन सस्टेन इन द टाइटल रेस। सो वी नीड मतलब आई थिंक वी दिस टैक्टिक्स इज गुड। ठीक है भाई, मैकटोमिनी लिया है, वी हैव चांसेस। नहीं नहीं, अभिजीत भाई, आई अग्री कि आप उस पॉइंट में क्यों कह रहे हैं कि हम टाइटल रेस में नहीं है, बिकॉज देयर इज लॉन्ग वे टू गो टू बिकम फ्रॉम अ गुड टीम टू अ टाइटल विनिंग टीम, दैट आई अंडरस्टैंड, दैट आई अग्री। एंड बट मुझे 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 कहीं ना कहीं लगता है कि आज का रिजल्ट अगर पॉजिटिव होता है, अभिशार भाई विल आल्सो एक्सप्लेन इट समहाउ, अगर आज का रिजल्ट समहाउ पॉजिटिव होता है, मेरे को लगता है कि डायनामिक्स लीग के ना बदल जाएंगे। एग्जैक्टली। जैसे ही आर्सेनल को हारते हुए देखेंगे ना लोग, जैसे ही बाकी टीम्स देखेगी कि अच्छा लीड कर रही है, जैसे सिटी को हारते हुए नहीं देखा था, सिटी भी हारी, लिवरपूल भी हारी अपने पीक में, जैसे एक डायनामिक चेंज हो जाता है लीग में। और आज मुझे लगता है यूनाइटेड को वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, और मुझे अंदर से फीलिंग है कि यूनाइटेड वो अपॉर्चुनिटी लेगी। अब मैं
इस डिस्कशन को आगे लेने से पहले आप सभी से, मैं आशीष भाई से स्टार्ट करूंगा। प्रिडिक्शन चाहिए मुझे इस गेम का, और मुझे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, whoever is watching us live, I just want you guys to have give me a prediction for this game, so we can get as many as positive predictions we need right now. आशीष, आपको क्या लगता है कि आज का रिजल्ट क्या रहेगा? I would say definitely 3-2. 3-2 United. I think we are nil-nil in the first half. It should be like टक्कर का रहेगा. Like it should be like definitely like equals. Giants equals जब लड़ते हैं ना, it would be equal. Then the mentality starts there. I would say Fred मारेगा, पक्का मारेगा आज, but 3-2. Rashi scores, Bruno scores and Fred scores. I don't remember the last time I saw 5 goals in a half. But 3-2 Yeah. आशीष भाई कह रहे हैं सेकंड हाफ में। अगर 3-2 We का गेम never है, know. मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में कुछ गोल्स पड़ सकते हैं। अभिषेक भाई, हाँ. शिफ्टिंग टू यू, a good prediction may be close to Ashish bhai, whatever Ashish bhai is saying. Yeah, even I feel that it would be goal fest if it starts as goal fest. I'd not go with Ashish that part, like first half being dodgy. Because if you will hold Arsenal now, that's what even Abhijit has mentioned in his previous part. If you will hold Arsenal, then they are beatable. Usually, Arsenal, what they do, they play like how City has been playing for quite some time. They will score a goal and then they keep on pushing. They will not give you time Hmm. to get into attack, because they'll make you in a frame where you'd be going in a such a way that okay, we are down and then we have to defend. Then you cannot break the shackles. So that's what they have been doing. So I believe that it will be like 1-1 or 1-0 in the first half and then going for bigger things in the second half. And I really, really hope United to win. I still take a draw from there, but I would love United to win. Because having said that, if we are winning this time, we'd be closing gap onto Arsenal, and that might come later on, जब मार्च अप्रैल के टाइम पे जाएंगे ना, when we would be looking for opportunities to team to slip up so that we can catch, so it will be like this. नहीं, मैं भी ये सोचता हूँ कि स्नीक विन होगी, जो भी होगी। मेरा प्रिडिक्शन अभी बहुत लाउड है, बट अभिजीत भाई, आई थिंक आपका प्रिडिक्शन थोड़ा सा कम लाउड है मेरे जितना, क्योंकि मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, और काफी लोग डिसएग्री कर रहे हैं हमारे विन के लिए। बट आई थिंक as Ashish bhai and Abhishek bhai saying, I think you are also going for a United win. यस डेफिनेटली, मैं तो करूंगा कि 2-1 विद उनका राइट साइड थोड़ा, मतलब बेन वाइट का, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ही कैन बी राशफोर्ड को रोकेगा, बट आई डोंट सी दैट। बट अगर हम मतलब फर्स्ट रैशफोर्ड को हाफ सिर्फ डोमिनेट कर रैशफोर्ड ही देंगे। रोक सकता है, अभी जिस फॉर्म में Point. रैशफोर्ड है ना, Abhijit bhai, रैशफोर्ड को सिर्फ point. रैशफोर्ड ही रोक सकता है। Rashford का तो pace. I agree Abhijit हाँ bhai. नहीं, वही Comment करो. नहीं, आई थिंक अभिजीत भाई कुछ डिटेल में कुछ, आई थिंक ही इज कमिंग टू अ पॉइंट। हाँ जी अभिजीत भाई। Yeah. हाँ कि बेन वाइट का फॉर्म मतलब उतना अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, इज गुड, बट इफ वी आई थिंक इफ वी डू फर्स्ट हाफ तक हम उनको होल्ड अप करेंगे, इवन इफ वी स्कोर इन दैट, एक चांस जो रैशफोर्ड को मिल गया और उसने स्कोर किया, तो डेफिनेटली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ विन। और अगर ओजस भाई का मतलब जिंक्स सही रहा कि भाई टाइटल रेस में है, तो भाई कोई कोई नहीं चाहता भाई, 10 साल से वही नहीं, वेट ही कर रहे हैं नहीं, भाई। मैं आई हैव अ वाइल्ड प्रिडिक्शन ऑफ अ 3-all। मेरे को ये वाइल्ड प्रिडिक्शन है, मैं गलत होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यूनाइटेड आज जीते, पर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे Bro, दिमाग में घूम रहा Ojas है bhai, 3-all। you that day you told that Zaha का आएगा yellow card. वही आया. Please be aware of your वो words, okay? अभिशार भाई वाज ऑन द स्ट्रीम एंड आई वाज सेइंग इट लाउड कि कैसे मेरा बुक होगा, Casemiro तो को वो होगा जाहा, Zaha जाहा से was बुक होगा। वही आया. वो It's the same thing. It's the आज same thing. आज So, उसी के वजह से मेरे को लगता है ये ड्रॉ हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रॉ हो सकता है। लेकिन पर ये okay. उल्टा भी हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है ये 1-all में भी रुक जाए, क्योंकि दोनों टीम्स कंजर्वेटिव ना हो जाए कहीं। बट 3-all इज समथिंग लुकिंग, इट्स हीटिंग अप। एक बार मैं जरा कमेंट्स में भी जरा अपने प्रेडिक्शंस देखना चाहता हूँ। मुनावर भाई से 3-2 यूनाइटेड। ओ, आई वुड लव दैट रिजल्ट, आई वुड जस्ट लव दैट रिजल्ट, 3-2 यूनाइटेड। एंड वेबर भाई सेज 1-1 ड्रॉ।
मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब हो सकता है बट नहीं, मेरे को लग रहा है 1-1 से ऊपर गोल पड़ेंगे। सचिन भाई सेज 2-1 यूनाइटेड, होपफुली स्नीकी विन, मे बी, मे बी। और सब जीतना चाह रहे, कितना अच्छा लग रहा है ये देख के ना, कमेंट्स में सब जीतना चाह रहे हैं। जॉर्ज ओ सेज 4-1 आर्सेनल, देयर इज नो वे दैट मिडफील्ड डजंट गेट डोमिनेटेड बाय आर्सेनल। यार, और आर्सेनल को हमने इतने साल डोमिनेट किया, वी हैव डोमिनेटेड आर्सेनल फॉर सो मेनी इयर्स। You can win George, the oh, midfield, we will please take watch the game. 8-2. You can win the midfield, we can take the game. आप Yeah. midfield रखो अपना, हम अपना रिजल्ट रखेंगे, आप जीतो और नहीं तो midfield। क्या। And we United is a team that is not always dependent on midfield. You always remember that, George, because Rashford can single-handedly. I know he had a tough game against Crystal Palace. Rashford, Anthony, or I don't know how Vegas will play, but these are the players that just can, just damage you anytime, anywhere. So I don't think so that we are getting defeated 4-1 against Arsenal, but it's football, anything can happen. And game is about to start, as Kushagra bhai has mentioned to me, and I think Ashish bhai is leaving, and there's a watch along, guys. Please be with us. We will always Ashish bhai will join later. We will always have some weird reactions to whatever happens in the game, and I think players must have assembled in Guys, the tunnel and they hope must be we win. walking out right now. Hope we win. Yes, go Hope we win. glory. I'm saying glory, glory, Manchester United. GGMU guys, Emirates को दिखाएंगे यूनाइटेड का जलवा again. Bye. I'll be back, okay? Uh, Yes. uh, Abhishar bhai, Abhijit bhai, game is about to start, Yes, and I'm let me just, get in front of a screen. yes, I think we should take 2 minutes to just set it up for Yes, yes, us. sure thing. Debut at some stage later on. इस गेम का एटमॉस्फेयर ही इतना ऐसा लग रहा है कि oh, United is in white. Someone said me that United is going to play in yellow. मतलब वो yellow जो हमारा third jersey था. Someone told me A in the group. greenish sort of yellow. वो curse मुझे jersey मुझे है ये यार. लगता है कि आर्सेनल नहीं, एक बात ये लगती है कि आर्सेनल के ऊपर बहुत प्रेशर, दे आर मतलब टाइटल का रेस, वी आर नॉट इन द टाइटल रेस, तो हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं है कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ विन। कुशाग्र भाई. सो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये ऐसा नहीं, आर्सेनल आर डेफिनेटली इन प्रेशर, बहुत प्रेशर है। अभिजीत अभिजीत भाई, आप इतने साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हो एंड सडनली और एट द टॉप ऑफ द टेबल, Exceeding. प्रेशर They are तो exceeding. होगा. They वो ना उनके जितनी I see as their squad, I say I would not say these words, but what talent they have in squad, they are exceeding, and that even Arsenal fan know. राइवल फैंस को तो पता ही है कि दे आर एक्सीडिंग, लेकिन इवन आर्सेनल फैंस नो दैट दे आर एक्सीडिंग, and now they see themselves in such a position that okay, if we'll give a push, or maybe if we sustain this, hopefully not getting our squads injured, we might win league. They were not, they are still susceptible about it, but they can see that okay, we might win. There is a slight possibility of it happening. नहीं मैम, कुशाग्र भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. इट्स सो गुड थैंक टू यू भाई. हैव यू हियर. थैंक यू भाई. मुझे आपने इतना पीछे बैक रूम में काम किया, थोड़ा आप भी प्रेडिक्शन बता देते. यार एक तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि इतने टाइम बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल लाइक डोमिनेटिंग लाइक द प्रीमियर लीग era. जब मैंने स्टार्ट करा देखना, इट वाज इन 2004-2005 के राउंड, तो उस समय आर्सेनल एंड मैन यूनाइटेड वर लाइक द टू टॉप टीम्स. तो जो मैन सिटी वगैरह तो उस समय थी ही नहीं, वो तो अभी 7-8 साल पहले आई है. आई थिंक यार इट्स गोना बी अ क्लोज कॉल. 2-2 हो सकता है. आई सी बोथ द टीम्स हैविंग a decent amount of like the chances. Hopefully हम जीते यार. मार्कस रैशफोर्ड मेरा फेवरेट प्लेयर आज भी कुछ दिखा दे कमाल. और आई थिंक आज शायद से डब्ल्यूडब्ल्यू का डेब्यू गोल भी आ सकता है शायद से. मेरे को लगता है कि वेगॉस से हम थोड़ा ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं अभी. और गाइस, लिसांड्रो मार्टिनेज ने हेडबैंड पहन रखा है.
वो तो उसे और लाइक लास्ट गेम में लग गई थी ना, वो लास्ट गेम में लाइक इधर बीच में ही उसने लगा दिया। इधर हाँ, इधर लगा। मुझे लगता है बहुत ब्रेव डिसीजन है आज अपनी बेस्ट टीम खिलाने का ईडीएच। खिलाना आई ही थिंक था दिस इज द भाई। बेस्ट 11, दिस इज द बेस्ट 11 मेरे हिसाब से। ये बेस्ट 11 है सिवाय कैसेमीरो कैसेमेरो नहीं है, के। मतलब हाँ मैं बेस्ट अवेलेबल 11 ईयर। हाँ यस बेस्ट, मतलब आई थिंक इससे ज्यादा, क्योंकि फ्रेड आता तो हम थोड़ा शायद से कंजर्वेटिव सोचते। यार, बट फ्रेड की अपनी अलग, मतलब ही हैज हिज ओन हाँ वो एडवांटेजेस। गेम ही अलग हो जाता, वो गेम ही अलग हो जाता, आई थिंक सो। भाई वी हैव इनके सेट क्लियर्ड पीस द ना बहुत फर्स्ट। मतलब बहुत ही लीथल है। ओडेगार्ड, पार्टे, अरे मतलब बहुत सही फॉर्म में यार जाका, आर्सेनल, गैब्रियल बहुत सही सालिबा, फॉर्म। क्या नहीं कुशागर भाई, इन पांचों ने सेट पीसेस पे स्कोर किया है। मतलब दे हम्म। डेफिनेटली स्कोर ऑन सेट पीसेस, तो मतलब ये एक हमारा एक पॉइंट टॉकिंग पॉइंट है मेरे को पता है, मेरे को ओडेगार्ड हमेशा से अच्छा लगता था। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, ये रियल मैड्रिड का ही वाज कंसीडर्ड एज यस, लाइक द आई हैव प्रोडिजी। फॉलोड हिम फॉर अ लॉन्ग 16-17 बैक साल एंड की, आई मुझे भी लगता था सोलह विशाल सत्रह के भाई साल आप की जो उम्र कहने में ही वाले। वाज ट्रेनिंग विद लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इससे बोला गया यस था कि ये रियल यस मैड्रिड की टीम में 16-17 साल की यस। उम्र में ही विल लाइक ब्रेक इन। बट वो हुआ मैं नहीं। आई भी थिंक ही वाइड वेंट ऑन टू लोन टू नॉट लाइक नोइंग रियल कि सोसिएडाड वगैरह। हाँ, वो मेरे को ये कोई लगता था कि टैलेंट को ऐसा परफॉर्मेंसेस में ऐसे आराम से कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, कर बट रहा था मुझे देखो कन्वर्ट। ये मुझे आर्सेनल फुल मुझे अटैक में जा रही है, दे वांट टू हैव दिस एट द फर्स्ट गोल, और उसके बाद से फिर वो लोग वो ना वैसे वाले जोन में जाएंगे। नहीं, ये अच्छा गेम लिंकअप हो रहा है आर्सेनल का। आर्सेनल आर ऑन द फ्रंट फुट, बट मुझे लगता है एक एक गोल तो पक्का 15-20 मिनट में एक टीम का, दोनों में से एक टीम का आने वाला है। ओजस एग्जैक्टली। भाई यही बात है भाई, मैं वही बोल रहा हूँ कि दे आर वेरी फास्ट ऑन फर्स्ट 25 to 30 मिनट, बहुत फास्ट खेलते हो। उसके बाद मतलब वो इतना स्लो कि मतलब एकदम मतलब एनर्जी खत्म होते जाते हैं ना, मतलब बच्चा भी खेल खेल के थक ही जाता है ना, वो वैसा ही सिचुएशन। एक बार थक गए नहीं ना, बे, दे आर वेरी डेस्परेट, मतलब उनके पास उतना, नहीं हमारे पास अगर जैसे देखो अगर जैसे हाँ, अगर आर्सेनल फास्ट खेलती है ना तो मैच्योरिटी जो मिडफील्ड में हमारे पास है हाँ, एरिक्सन और ब्रूनो की, वो समाव हेल्प कर सकती है आज हमें इनके अगेंस्ट। हमारे डिफेंस लाइन बहुत मतलब आज क्रूशल है। उन अगर उन्होंने ये सर्वाइव कर दिया ना फर्स्ट 45 मिनट्स, तो देन वी हैव चांस। गर्नाचो और फ्रेड आ गए ना तो भाई तैयार ही है, बस चल देखते चल ही चल जाओ। चल चल। Rashford has the Rashford, come on, come on. ball. चलो 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 चलो। अरे Oh, I यार, thought it was a foul, but ठीक है, नहीं नहीं, बॉल लिए, बॉल लिए। बॉल ली। wan-bissaka, आई थिंक ही कैन लाइक कंट्रोल लाइक मार्टिनेली। मेरे को नहीं लगता मार्टिनेली ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए उसको। छे, जीत गया बॉल, देखो। हम्म, मेरे को क्या कभी कभार आप लोगों को लगा कि मार्टिनेली कुछ ज्यादा ही हाइप हो रहा है? मतलब वो आज अच्छा खेल सकता है, ही कैन प्रूव अस रॉन्ग, पर कभी लगा है कि मार्टिनेली, मुझे हमेशा लगा कि मार्टिनेली बहुत हाइप किया जा रहा नहीं यार, नहीं वो जस्ट, हाँ बोलो बोलो कुछ और बोलो बोलो। आप बोलो, आप बोलो। नहीं बोलो बोलो भाई बोलो। अरे बोलो है। भाई। कोई तो नहीं बोलो। अरे मैं बोल देता हूँ। नहीं ओजस भाई, मार्टिनेली इज गुड एट बॉल कैरिंग के लिए अच्छा है, और पेसी भी है, तो उसको मतलब एक अपर हैंड है उसके पास बॉल कैरिंग में, अनलाइक रैशफोर्ड बॉल फेंक दो मारे, ऐसा नहीं। मार्टिनेली कैरीज द बॉल, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब ये हैज अपर एडवांटेज, तो इसीलिए वो मतलब हाइप अप ज्यादा हो, वो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है उसके पास। किड दैट्स ओनली व्हाई ही गॉट गुड सीलिंग, वो आगे जा करके भी और इम्प्रूव होगा। माइट नॉट बी गुड नाउ, बट या he'll get better. एंड आई थिंक आर्सेनल कुशाग्र के भाई, सिस्टम में भी ही लाइक, हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रहा था कि आप बोलो, आप बोलो। मैं यही कह रहा था कि आर्सेनल के सिस्टम में काफी अच्छे से हो रहा है फिट वो। एंड लास्ट सीजन मेरे को याद है वो एफपीएल का भी अच्छा एसेट हो गया था, क्योंकि वो काफी लाइक प्राइस उसकी लाइक बहुत कम थी, एंड वो अच्छे लाइक दे रहा था लास्ट सीजन भी लाइक रिटर्न्स। तो इस सीजन ही इज जस्ट लाइक स्टेप्ड अप ऑन इट, तो इम्प्रूव हो रहा है। हाइप है कि नहीं यार, ये तो थोड़ा बहुत तो हर कोई प्लेयर हो ही जाता है। हमारे नहीं है क्या प्लेयर हाइप? हाइप तो सबसे ज्यादा हमारे प्लेयर्स ही हैं ऐसे। Alanga. हाँ, How इलांगा भाई। he starts or even plays for United मेरे को पता नहीं है। I'm not questioning that guy, but no. नहीं, पेलेस्ट्री को नहीं खिला रहे अभिषार भाई। वो बंदा यूरुग्वे के लिए स्टार्ट कर रहा है।
और हमारे टीम में उसने अब जाके डेब्यू करा है, वो भी कितना 10 मिनट खेला था शायद। अभी it will take some time, but we have squad, you know. If ETH, I लोन like के तो ऑफर्स आ रहे हैं उसे। yeah, हाँ नहीं, देयर इज टॉक्स अराउंड द यूरोप कि पेलेस्ट्री के लिए क्लब वाटर ढूंढा बॉल जा वाटर रहा है। बॉल वाटर बॉल वाटर बॉल, ओए ओए फाउल, ब्रूनो यार इज अ वेरी गुड एक्टर वैसे, पर देखते हैं। अब इशार भाई आपके में अभी क्या टाइम आ रहा है, आप काम से आगे तो नहीं है? मेरे में 6 मिनट है। I guess I'm back from you guys. हम मेरे में 6:12 हुआ है अभी। मेरे में 6:15। आई गेस मेरे आई हैव अ 6 फास्टर यार वाईफाई। मेरे मतलब 6:04 है भाई। मैं हाँ हॉटस्टार पे ही देख रहा हूँ भाई। मैं भी हॉटस्टार पे देख रहा हूँ। मैं भी हॉटस्टार पे देख रहा हूँ। आज चौके सक्षम को मार के बनाओ, मैं सक्षम हॉटस्टार कहाँ पे गया है? इन यूएस ना, यहाँ पे ये लोग पागल हैं। आपको 3 ऐप लेनी पड़ेगी अगर आपको वो करना है तो यार बट ये एटलीस्ट आपके पास वो है ना, एनबीसी है ना, तो पीटर डिलीवरी की कमेंट्री होगी। हाँ वो एक वो एडवांटेज है, लेकिन वो भी नहीं इतना चाहिए पावर। एक एडवांटेज नहीं, सबसे बड़ा एडवांटेज है वो तो। दैट गाय मेरे को गाइस, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये कह रहा हूँ, आर्सेनल आर्सेनल ऐसी इनविंसिबल वाली तो है नहीं। मेरे को तो इनविंसिबल जस्ट क्या, हमने तो हरा ही दिया। हमने हाँ, तो हरा ही नहीं नहीं, दिया। मतलब जो वो जैसे बिहेव if कर you रही are है रिसेंटली। comparing with Arteta's Arsenal ना, this Arsenal is अच्छा nowhere. मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि ये टीम बहुत बैंग कर रही है अपने अच्छे फॉर्म में, पर हाँ, अभिषार भाई वो सिंह मेरे को बहुत यंग लग रही है टू बी, यस दे एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस, दे एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस। वो यार जो बट पता है, ना मैं कि नहीं चाहूंगा कि मैन सिटी फिर से जीत जाए टाइटल, उससे बेटर आर्सेनल ही भाई जीते। आर्सेनल रिपीट सिटी क्या डेस्परेट लग बात रहे हैं कर मुझे। रहा है भाई। सिटी इज इररिलेवेंट, सिटी जीतते रहे ना, कोई बात नहीं है। सिटी का एग्जिस्टेंस नहीं पता है। आर्सेनल जीत जाए ऐसे कुछ नहीं। नहीं, अभी एक अरे कोई तो नया 7-8 विनर हो मैच में सबसे। I like that, मैन you सिटी know, मैन in सिटी। such a way that यूनाइटेड आर्सेनल का जो मैच है वो लीग डिसाइडिंग है या मे बी फर्स्ट 2 पोजीशंस डिसाइडर है। आई लाइक दैट वी आर गेटिंग इनटू दैट जोन फाइनली। आई थिंक थोड़े टाइम पहले संदीप भाई ने बोला था दैट वी आर इन द टाइटल रेस, बट तो ओजस भाई ने बोल दिया कि नहीं हम नहीं है। मैं भी संदीप भाई से एग्री करता हूँ, वी शुडंट काउंट आवरसेल्व्स आउट जस्ट येट। अभी काफी गेम्स बचे एंड वी आर नॉट दैट ऑफ द टेबल एंड यू टॉप, नो तो दैट हैज यू हैपेंड आई नेवर विद थिंक नो। आर्सेनल लास्ट सीजन भी हुआ था। अभिजीत भाई ने डिसएग्री किया था। मेरा बस ये ओजस मानना था एग्री कि कर अगर रहा है। आर्सेनल आर्सेनल अगर आज हारती है ना, तो मैंने ये पॉइंट बोला था कि डायनामिक्स बदल जाएगी लीग की। इट विल जस्ट गेट मोर इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। यार अभी तो आर्सेनल डोमिनेट कर रही है गेम। नहीं मुझे नहीं, मुझे लास्ट टाइम अगर कुशागर 55 भाई या 45 फिर लग रहा अभिषार भाई को भी पता होगा कि 2008 में मुझे 7-8 के सीजन में आर्सेनल वेयर मतलब ये ऐसे ही आगे थे। यूनाइटेड वेयर सेकंड या थर्ड पे थे शायद। एंड देयर सेंटर फॉरवर्ड एडवर्डो ऐसा कुछ सेंटर फॉरवर्ड था, ब्राजीलियन एडवार्डो आई थिंक। हाँ। एडवर्डो, हाँ, ब्राजीलियन सेंटर फॉरवर्ड था। एंड ही वाज वेरी क्वाइट वेल, मतलब काफी फॉर्म में था। एंड आफ्टर जनवरी वो उसका इंजरी हो गया एंड दे स्टार्टेड टू लूज द गेम। एंड अरे एंड डोंट गो दैट डिस्टेंस ना, फॉर्चुनेटली उस पिछले सीजन भी उस तो यही वक्त हुआ। हाँ, उस वक्त यूनाइटेड पास देम एंड वन द टाइटल। चेल्सी थी तब इंस्टेड ऑफ सिटी नाउ। तो ऐसा सिचुएशन है, मतलब बॉटल कर सकती है बट कांट प्रेडिक्ट, मतलब क्या हो सकता है। एंड यू नहीं, नो ये तो उनकी जो लिवरपूल के टाइम पे भी लास्ट बोला था, लिवरपूल के टाइम पे भी बोला था जब वो थे कि दे आर बॉटलर्स, दे विल समहाउ बॉटल इट। पर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, जिसने देखो अभी तो वर्ल्ड कप आ गया, जिसने दिसंबर जनवरी ये महीना फाउल जीत लिया कैसे नहीं ना। था भाई? ब्रूनो कोवेंट्री तो कितनी अगर इजीली गोल बॉल पड़ा पुट था, कर रहा है यार। ओडेगार्ड खेल रहा है हमारे इतने साथ। भाई, चलो चलो चलो, ब्रूनो इतने इंपॉर्टेंट एरियाज में इतने इजीली बॉल लूज कर रहा है। वो भाई लड़ाई साहब, ये लड़ाई तो लड़ाई मतलब लड़ाई 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 लड़ाई, वाह वेगोस भाई, वेगोस जाका ने पहले ही झप्पी पाली वेगोस को। भाई वेगॉस हर बहुत सही बार बता है भाई, वो लड़ाई वड़ाई नहीं हाँ करता। हम्बल आदमी है भाई। मैं ऑपोजिशन में हूँ तो मैं तो वेगोस से मार, मसला करूंगा हाँ भाई। वो भाई वो कोनी तो वोनी भाई मार देगा, सीधा आंख फूट जाएगी। भाई, वो मतलब
काफी कोल्ड ब्लडेड, मतलब ये मार देता है वो, यहाँ पे गेब्रियल का सेंस नहीं लगा, उसने वेगॉस्ट कन्फ्रंट क्यों किया ब्रूनो को? वेरी। भाई ऐसा ही है, मतलब पैट्रिक वेरा भी ऐसा ही करते था, या फिर कैम्बेल भी ऐसा करता था भाई, ये भी ऐसे ही है भाई, भाई उनका कोई वो ये नहीं है। रॉय की नहीं चाहिए था भाई इनको तो फिर दिखा देते। मेरे को देयर इज सो मच नेगेटिविटी मतलब अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन ट्विटर। मैं जस्ट वांट टू सी अ पॉजिटिव परफॉर्मेंस टुडे कि भाई भाई असिस्ट होना कर ही रहा है चाहिए भाई, वरान उसे। 13 बस टाइटल और जीते भाई 15 वो जस्ट। 15 मिनट और ये कंटिन्यूड प्रेशर सस्टेन करेगी ना यूनाइटेड। अभिषार भाई, ये काउंटर पे आर्सेनल की गेम एकदम खत्म है, वो सारे बंदे आगे हाँ, मैं भेज वही रहे हैं। बोल रहा हूँ कि वो जब भाग भी भाग इसको भाग छोड़ भाग। सस्टेन कर लेगी ना यूनाइटेड। बस गोल ना मैकटोमिने खाए अभी। नटमैग हाँ, हुआ। हाँ, बट ठीक है, मैकटोमिने ठीक कर रहा है। हाँ वही कुशाग्र भाई यही है कि इफ वी सस्टेन अप टू 35 मिनट्स देन डेफिनेटली वी हैव द एज। भाई वो हाँ, उनके अभी तो पास वो प्लेयर हमारे ही नहीं हाथ है। में खेल रहे हैं। अभी वो हमारे हाथ में खेल रहे हैं। आई हाँ थिंक वी आर वही तो। वेटिंग फॉर द राइट अरे मोमेंट। ठीक एनर्जी है है ना, ना लेट भाई, देम हैव द ओजस भाई, बॉल। उनके पास एनर्जी है। अरे बट उनके एनर्जी पास का हाँ वो क्या करे कॉन्फिडेंस है। एनर्जी है उनके पास, तभी तो वो ये यार, उनका होम है और वो टेबल टॉपर्स है, तो ऑब्वियसली ज्यादा पोजीशन होनी चाहिए उनके पास। वी आर जस्ट वन पास अवे फ्रॉम अ वेरी गुड मूव, वन पास अवे फ्रॉम अ वेरी यस गुड यस, चल एंटनी, हमारे चल हमारे चल 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 फॉरवर्ड्स चल चल चल। क्लिनिकल है, ये हमारे फॉरवर्ड्स क्लिनिकल है। इफ यू वुड बी गेटिंग दोस पास। ओ नाइस। मूव। अच्छा था एंटनी का, बट बहुत इजीली गिर गिर गया गया। अपने 30 आप, seconds back यार, you guys, I think I need to अपने आप ही drop. गिर जाता है। अभिचार भाई, आपका लेट रिएक्शन भी रिएक्शन ही। नहीं ना, तुम लोग चौंका ना देते ना हो ना। मुझे। भाई बेस्ट तो था अभिषार भाई है स्ट्रीम पे, ऐसे आप करके मैं देख के जो हंसा। I was for so long I was on backstage and I was like कि ठीक है, there are multiple people, अरे and all of a sudden यार, I was मेरे को मैं आई वाज समहाउ ट्राइंग टू जस्ट एंड द पॉइंट्स। वो कुछ वो इट वाज डिस्कशन इतना फैल गया था। yeah. अपने फील्ड में नॉलेज हो ना हो, एवरीवन नोज एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल। मैंने यही देखा। हमारा आज एक्सपीरियंस ही काम आएगा हमारे जीतने के लिए, एक्सपीरियंस मैटर्स फॉर अस। Guys, मैं एक 5 मिनट में I'll join you guys, okay, give me just 5 ओके minutes. ओके ओके भाई। यस। ये बहुत अच्छी बॉल ट्राई की थी। पोजीशन रखे, मैं तो बोलता हूँ कि भाई पोजीशन रखो और खेलो, भाई इनको मैं फ्रस्ट्रेट कर दो बोलूंगा भाई हारना बस। नहीं है, बस हारना नहीं है बस। नहीं, आप आर्सेनल का इनको मतलब कॉन्फिडेंस उनके वन टूज में ही देख लेते हो। आप उनके वन टूज देखो, दे आर सो कॉन्फिडेंट। मतलब उन्हें पता है कि उनका प्लेयर पास करने के बाद कहाँ अवेलेबल होगा। अरे ये क्या किया भाई? उसे शायद पता नहीं होगा पीछे कौन है। अबे कोई था ही नहीं पीछे, जाने देता। कीपर का कॉल होता है ना यार ये। देखना, बॉल गोल किक के लिए जा रही थी। कीपर का चल कॉल सेफ होता खेला है उसने। ये। ये अरे डहया से कहाँ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? भाई सबसे ज्यादा मतलब बेस्ट, सबसे उसके खिलाफ मैं ही हूँ, और वो विशाल भाई बी ग्रुप में है वो। हाँ, बहुत मतलब मैं भाई बहुत खिलाफ बैशिंग नहीं की। हूँ डेया के। मैं डेया के मतलब भाई खिलाफ नहीं हूँ, बट जो उसकी वीकनेस है वो तो बोलूंगा ना। हाँ हमारे ग्रुप में कौन है डेया का मतलब फैन? मैं आदेश हूँ मैं है, हूँ मैं हूँ मोजो सर है। आदेश और मोजो सर सबसे बड़े हैं। हाँ, आदिश भाई, मैं आदिश भाई। मैं भी हार्ड को डिहाय फैन हूँ, क्योंकि मैंने उसको ऐसे ऐसे सेव्स करते हुए देख लिया ना अपने लाइफ भाई में। वो मैंने भी देखे हैं, बट विद टाइम यू हैव टू मूव ऑन एंड अडाप्ट विद हाँ, द कहीं गेम। ना कहीं अपग्रेड तो करना पड़ता है यार, कहीं ना कहीं करना हाँ, पड़ता है। अब भाई रूनी को हम आज तक रखेंगे क्योंकि वो 10 साल पहले अच्छा था, तो भाई सेंस थोड़ी बनता है।
And plus the wage which he is on 375 के पर for a goalkeeper. हाँ वेज स्ट्रक्चर उसका कम होना चाहिए, पर ठीक है, देखते हैं व्हाट ईटीएच थिंक्स ऑफ डिहाया। नहीं पे कट तो लेगा वो, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं तो उसमें कुछ 215 के राउंड दे रहे हैं, तो वो भाई 100-150 ईसाका क्या के करना तो चाह उसका रहा हो रहा है कम। है? ऑफसाइड हो गया ब्रूनो क्या? यार मेरे पास हम्म। अभी मेरे पास साका के पास बॉल है, तुम लोग ब्रूनो को ऑफसाइड कर रहे हो। 10 में 10 अभिषेक सेकंड का भाई डिलेट व्हाई कांट रिएक्शन देंगे अभिषार भाई के लिए। अभिषेक भाई आप वो क्यों नहीं, हॉटस्टार नहीं होता यूएस में? नहीं, यूएस में कहाँ हॉटस्टार होगा? सारे जगह पे नहीं। अलग अलग लोगों के पास राइट्स है ना, ऐसा है। और पीटर ड्यूरी की कमेंट्री सुन रहे हैं भाई वो, Yes. उससे लेकिन वो भी नहीं सुन ज्यादा पा बेटर रहा, क्या? दैट इज ऑन द दिस थिंग म्यूट, मैं उसको कमेंट्री हाँ वाला बट इन जनरल कह रहा हूँ। हाँ, आप तो इन उसकी जनरल commentary इट्स सुन इट्स रहे हैं। वेरी गुड। वो अभी हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं, हाँ, You जो know? मैच से अब पहले चल रही है, मैं देख कुछ और हाँ, बोल रहा हूँ ना, साका के पास बॉल है और ब्रूनो ऑफसाइड हो जा रहा है। मेरे पास है 15:55। आपका 1 मिनट पीछे है अभिषेक भाई, एग्जैक्ट। अराउंड आप 40-50 सेकंड पीछे। हाँ 30 सेकंड है, ओए 30 ओए ओए सेकंड, 30 सेकंड। गोल! रैशफोर्ड! अभिषेक भाई देखना। रुको भाई, रुको रुको गोल! रुको रुको। ओ भाई, बैंगर भाई बैंगर। अभिषेक भाई का अभी तक नहीं आया। अरे यार, ओ भाई, क्रेजी गोल भाई रैशफोर्ड यार। क्या प्लेयर है भाई। अरे इट्स आया विशाल भाई? opportunity for me। नहीं अब तो आ गया होगा। अब आया, ये गया है रैशफोर्ड बॉल लेकर के। भाई अनस्टॉपेबल दिस भाई गोल, व्हाट अ गोल भाई, व्हाट अ हाँ? गोल, व्हाट अ भाई गोल ये भाई। ये उसने ये जो मूव जो उसने नटमैग करा है ना, भाई जो उसने थॉमस आई थिंक पार्टे इट को इज जो नटमैग। उसने एकदम उड़ा दिया भाई। क्या बोल रहे थे पार्ट आर्सेनल वाले? पार्टे भाई खत्म है भाई, पार्टे खत्म है इस मूव के दे आर बाद। ब्रिंगिंग भाई दिस व्हाट अ गाय गोल इनटू भाई, conversation with व्हाट कैसेमी। अ गोल, व्हाट अ गोल। मुझे क्रेजी मुझे भाई ना मार्कस एक रैशफोर्ड। एक मैं YouTube के भाई ये क्लिप्स देखता हूँ ना कभी कभार, कर लो है। YouTube के क्लिप्स देखता हूँ, रूनी इंजर होके बाहर जा रहा था, उसने एक स्ट्राइक मारी थी इंजर होने से, वो वाला गोल वैसा मेरे को थोड़ा सा। हाँ वही कर्ल हुआ है बहुत। और अगर मैं बोलूँ ना, मतलब उनकी मेंटालिटी को तो हिला दिया है भाई उसने, तो भाई भाई देखा क्या लड़ाई भाई, होने वाली है इस गेम में। गैब्रियल अभिषार भाई, अभिजीत भाई, पार्टी सब कुशाग्र ऐसे से भाई, बोल रहे हैं। हाँ अभिषार भाई, अभिजीत भाई, कुशाग्र भाई, दिस इज गोइंग टू बी बैटलफील्ड। ये लड़ाई होने वाली है, आज लड़ाई होने वाली है। बहुत गंदा टैकल था, ये बहुत ही गंदा र, टैकल था। र, र, किसी को तो रेड कार्ड मिलेगा भाई, शायद लग रहा है मुझे तो, भाई लग बट रहा अगर है, आज जीत गए गैब्रियल ना, नहीं लग रहा है अगर मुझे। आज जीत गए तो भाई मजे आ जाएंगे, अगर आज जीत गए तो। भाई बट रैशफोर्ड क्या फॉर्म में है यार, आई क्या थिंक ही फॉर्म में पैलेस है के नहीं भाई। ऑफ डे के बाद नहीं, ये Even in Palace, गलत you know, टैकल है he भाई। might not have been in this goal scoring, but उसको assist मिल जाता। अपॉर्चुनिटीज बहुत बना रहे था वो। हाँ Opportunities थी उसको ना, मेरे को लग रहा था कि उसको मिल जाता। यार, आप लोग आई थिंक अग्री करोगे, टेन हाग के अंडर हर प्लेयर इम्प्रूव कर रहा है, हर प्लेयर। यार हाँ प्रॉपर मतलब कोच रहेगा ना, हर तो कोई अपना इवॉल्व फॉर्म में निखर के आया है, हर कोई अपना इवॉल्व फॉर्म में निखर के आया है। मैंने यही देखा है एंड कि यू नो भाई यू फील दैट ऑरा एज वेल। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई पुश कर रहा है, तो दैट हेल्प्स यू एज वेल टू एक्सीड। आप देख रहे हो ना, मार्टिनेज जैसे प्लेयर हैं, आप देख रहे हो, आप ब्रूनो तो हमेशा से ही रहा है, आप ऐसे देख रहे हो कि एरिक्सन देख रहे हो आप कि यार वो, जब आप जैसे स्क्वाड में वैसे प्लेयर, पहले क्या हुआ भाई, हार रहे हैं और वहां पोग्बा और जेसी लिंगार्ड डांस कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। हाँ मेंटालिटी शिफ्ट है। पर मैं कंसिडर करता हूँ कि हर प्लेयर अपनी पोजीशन, अपना रोल ठीक से निभाए तो दिस टीम कैन डू वंडर्स। अपना गेम खेलो, जो वाह मैनेजर तुमसे कह रहा है अपना बेस्ट करो। पर अभिषार भाई, आपने फाउल देखा अभी जो रैशफोर्ड पे हुआ, हाँ आपने हाँ देखा हाँ, वो वाला?
I think it was a very bad वो बहुत challenge. ये ओवरलुक हो मतलब गया, वो मतलब बहुत सटल वे में ओवरलुक हो गया कि हाँ, नहीं, येलो मिल गया है बेन वाइट को, येलो मिल गया है अभिषार भाई बेन वाइट that was the conversation ना, Abhijit was mentioning that with Ben White and Rashford this battle. अभी कैसा होगा, Rashford उस विंग पे रहेगा और Ben White कार्डेड है, तो he will be like a bit on the back foot. अभिषार भाई अभी एक एडवांटेज हो गया हमारे लिए। नाउ बेन वाइट कांट टैकल, मतलब हार्श टैकल या Yes, फिर yes. कोई भी मतलब That's what ये नहीं कर सकता। I एंड वी हैव द अपर एज। सक्षम भाई What a goal, man! What a goal! Rashford is in by hot form. Gajab. What a goal, भाई, actually what a goal. This was और actually Crazy ये फॉर्म गोल, ये फॉर्म का गोल था मालूम, नहीं तो नॉर्मली ये नहीं जाता अंदर, लेकिन हाँ रैशफोर्ड हाँ हाँ, में है कि दैट वेंट जुप करके। तो कॉन्फिडेंस की बात है ना विशाल भाई, ही हैड द कॉन्फिडेंस कि वो नहीं, he couldn't have थॉमस placed पार्टी को it टेक any आउट better. करे। He couldn't have placed it any better. ये नहीं रुक सकता था, ये रुक ही नहीं सकता। नहीं बट बहुत सही गोल यार। अब भाई, एक और ये मार दो और मतलब गेम कर दो ये बेन खत्म। वाइट का येलो कार्ड है, ये डूब लेगा उनको। हाँ, वही कुशागर भाई, ये बेन बेन वाइट वाइट का रिप्लेस येलो होगा, कार्ड बेन डूब वाइट लेगा रिप्लेस उनको। होगा, बेन वाइट रिप्लेस होगा। टोमियासु नहीं खेलेगा, कौन है? मुझे नहीं तो नहीं लगता। फ्रेशनेडा तो अभी टोमियासु ही आएगा ना फिर। टोमियासु को तो कच्चा खा जाएगा रैशफोर्ड राइट बैक पे। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई टोमियासु। ही इज बट आर्सेनल्स दिस थिंग कैंसेलो, वो तो बेन वाइट चल गया राइट बैक में, इसलिए उसको खिलाते जा रहे हैं। बेन वाइट इज बेन नॉट राइट बैक, वो इसी सीजन राइट बैक खेल रहा है। नहीं भाई, वो दूसरा हैरी मैगवायर ही है। नहीं, दैट गाय इज गुड बट ही इज ऑन टू दिस थिंग। सेंटर बैक में अच्छा खेलेगा, लेकिन सेंटर बैक में सालिबा का जो फॉर्म आया ना, दैट ही वाज Saliba and Gabriel are just too good for या Ben White to start there. Saliba and Gabriel यस। are just too good. नहीं, बिसाका भाई को ये ऐसे ये पंगे नहीं जो लेने चाहिए। भाई हमारे दो बैटर्स है, जो दो के दो असिस्टेंट मैनेजर के आगे, मतलब ये मैच एंड वो सेकंड इज 10 हैग। अभिजीत भाई आपका नेटवर्क हिल गया, अभिजीत भाई नेटवर्क हिल गया आपका। एम आई ऑडिबल? हाँ, अब देखो अभिजीत भाई अबे कैसे? यार एंड की चूत ने किटिया मार गया यार। थैंक्स गोल। भाई। अबे I'm leaving. This is spoiling the match। और मैं 1 मिनट पीछे चल रहा हूँ इंडिया की स्ट्रीम से। अरे यार पता नहीं था, सॉरी पर नहीं यार ने किटिया। but that's how it should have been। भाई वो भी टेबल टॉपर है, bring it on। बैड गोल, अच्छा बैड गेम गोल। होगा, अच्छा गेम होगा, मार अच्छा गेम होगा। मार अभिषार कौन कर भाई, रहा है अगर आपको फिर? लगता है कि आपका गेम ऐसे इफेक्ट हो रहा है, कोई नहीं, आप जा सकते, ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं वो तो मैं नहीं रहने दो चुप चुप बैठ कुछ नहीं जाऊंगा। होता। नहीं that is okay यार, at least you guys should enjoy। दो तो अभी मेरे यहाँ अभी नहीं कॉर्नर लिया रहने, जा नहीं अब अपने टोस्ट पे यार रहना सक्षम ही भाई चेक चाहिए, हो गया, मतलब सक्षम भाई चेक हो गया क्या ये गोल? चेक क्या चेक होगा? सब कुछ तो सही है, क्या ही चेक होगा? सब तो सही है भाई। क्या मतलब, क्या गलत क्या दिखा आपको इसमें? यार बस गलत ये नहीं वैन नहीं बिसाका लेफ्ट बैक पे क्यों चला गया? वैन बिसाका ना उछला ना मार्क करा, नेकेटिया ऐसे चला गया सामने से। वैन बिसाका के क्या कर गया भाई? नशे करके खड़ा है क्या यार? हाँ, नहीं, मार्क तो कर। that यही है is गलती। clear goal, that is clear goal, that should not have any conversation with। just now someone was saying ना Nketiah is not, क्या ही कर लेगा वो। so that's what कर गया गोल मार दिया। बस अब प्रेशर में नहीं आना कि ये बट दूसरा भी फटाफट खा ले। अब ये नहीं कि आर्सेनल के भाई प्रेशर को बिसाका फटाफट सच में उन्हें। यार भाई, कि क्यों वहां पे क्या कर रहा है भाई ये? नहीं, ये पता नहीं गलती है, यार। मतलब ये बोलेगा भी। यार हाफ टाइम पे लीड पे चले जाता ना, फिर तो हम जीत ही जाते यार, खत्म था मैच। नहीं, मारेंगे अभी भी हारे नहीं है। मारेंगे सक्षम भाई, अभी भी हारे नहीं है। दिस इज हाँ, और आगे से ले ले। यार बैडली अरे कोई बात नहीं, होंगे। बैडली मिसिंग कैसेमीरो इन दिस मिडफील्ड भाई। एरिक्सन को बॉडी कर रहा है पॉल्टे वगैरह। अरे भाई, हमने इस आर्सेनल को विदाउट कैसेमिरो भी हराया है सक्षम भाई। वी हैव द गट्स। हाँ देखो,
Hard. एंटनी अच्छा खेल रहा है मेरे हिसाब से, वो थोड़ा बॉल कंट्रोल करके इधर उधर जो फ्लिकर कर रहा है, आई थिंक दैट्स बेनिफिशियल फॉर अस. Yeah, that will थोड़ा सा एंटनी सेटल हो जाएगा ना, that will be good, you know, to have Anthony and Sancho available for that position. नहीं अभिषेक भाई उसके लिए उनको उसको कंपटीशन ही नहीं है उस पोजीशन के लिए, जैसे मतलब अभी डियोगो डैलट के लिए या फिर मार्टिनेज के लिए जैसे हमने कंपटीशन दिया है वैसा नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा उसका मतलब ये कर रहा है। कंपटीशन डियालो आ रहा है। हाँ आएगा, नहीं डियालो है, सैंचो है भाई, सैंचो क्या है आपको भूल गए सैंचो को? डियालो पता नहीं, अमाद के लिए बात कर रहा ना, आई एम नॉट श्योर, हाँ आई एम नॉट वेरी मच इन. भाई ये वेगॉस मतलब क्या है भाई, किसी को मतलब ये किसी दिन चढ़ा देगा भाई, जैसे नहीं बोलते नहीं है दिल्ली में भाई, चढ़ा ही दूंगा डायरेक्ट उसको ऊपर, जैसा वैसा ये। नहीं 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 नहीं, यही रहने दो उसको। भाई लीचा तो क्या साइनिंग करी है यार, अभी देखना. ये भाई ओडेगार्ड तो बॉल पे बैठ गया था। मैकटोमिनी मैक्सॉस. अरे अभिजीत भाई, वो क्या ब्रूनो जब गिरा था लगा था पेनल्टी होगी वो? नहीं नहीं वो नहीं था, नहीं था ना. बॉल बाद में आया फिर उसने मतलब ये हो गया था, टैकल हो गया था, पर अगर बॉल प्लेइंग में अटैकिंग में अगर कोई ये करता है तो ही है। भाई भेज दो, भाई भेज दो। घसी तो सेट से रामस्टेल थोड़ा ऊपर मारना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर। वैसे क्या लग, अगर ये ड्रॉ होता है गेम, सो इज इट अ गुड रिजल्ट फॉर अस? I'll take that. I'll take that. आई विल टेक, हाँ मैं भी ड्रॉ आर्सेनल के लिए बहुत मतलब ये ड्रॉ मतलब ये हारना ही जैसा है भाई उसको उनके लिए तो। Muna, that those two games now in start of season that will come back and haunt us. एमरी वाला भी ठीक था, कोई बात नहीं, चलो न्यू मैनेजर बाउंस था, लेकिन जो पहले जो दो गेम हुए ना, ब्रैंडफोर्ड और ब्राइटन वाला, दैट विल कम एंड हॉन्ट अस. नहीं अभी सर भाई एस्टन विला का गेम मतलब टोटली वो डिसीजन मतलब वो रेफरी का डिसीजन बहुत मतलब गलत गए हमारे, 2 गोल तो हमने ऐसे ही खाए थे। वो फ्री किक और मतलब एक कार्ड वाला भी मतलब वो नहीं, मतलब वो फ्री किक तो हमें वो गलत ही मिला, और एक जो पेनल्टी आई थिंक शायद था वो भी डिजर्विंग थी। बहुत बहुत फ्री, मतलब ना फ्री फ्लो फुटबॉल है आर्सेनल का. अर्टेटा ने काफी अच्छा काम करा है यार इनके साथ. वन टच पासिंग एंड ऑल दैट मूवमेंट ऑफ द बॉल, ब्रिलियंट. That has always been in Arsenal philosophy. तुम आज की बात नहीं है, तुम 10 साल से आर्सेनल का गेम देखो ना, अटैक उनका वैसा सा ही रहता था.
इट्स थिंग दैट ये प्लेयर्स मोस्ट ऑफ इट जो अटैक के लिए हैं वो लोग एकेडमी से हैं या काफी टाइम से, वैसा एक जो थॉमस पार्टी की साइनिंग कर ली ना इनने, दैट हैज हेल्प। नहीं, उनके पास प्लेयर है अभिषेक भाई, मतलब उन्होंने साइन किया है ऐसा थोड़े प्लेयर्स, तभी तो ये रिजल्ट्स दिख रहे हैं उनके। हाँ हमारे वो तो पास सिर्फ एक सब, ही विंडो में मतलब हमने क्या किया है। वो 3 विंडो में उनने अराउंड 350 ऑड मिलियन दे हैव स्पेंट इन अराउंड 3 विंडो, राइट? So that is like quite good. But yeah, ओडेगार्ड वही की तो। साइनिंग काफी अच्छी रही है। Casemiro has brought stability into squad. It's like that. वही तो, हमारे पास अगर अच्छे प्लेयर आएंगे ना 2-3, देन वी आर गुड टू गो फॉर सम सिल्वरवेयर। थोड़े तो मतलब आएंगे तो अगले साल एफए कप या फिर बोलो अगर टाइटल काराबाओ तो टाइटल रेस। इस सीजन भी आ सकता है। हाँ, इस सीजन आएगा डेफिनेटली। भाई साउथ एम्पटन ना आ जाए बस, वही एक्सपेक्टेशन है। भाई बहुत स्लो खेलते हैं, मतलब इतना मतलब कि निचोड़ देते हैं भाई वो गेम को। और वो निचोड़ देते हैं, और वो बिल्कुल लास्ट में जाके वो वार्ड प्राइस एक हाँ फ्री किक मार दे, उसका पता नहीं हाँ, आपको। फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं। 45th मिनट को एक गोल आएगा ना, तो हमारा वो तो एज पे है हम, फिर आ जाए बस। हाईलैंड खेल रही। ओ भाई, ल्यूक शॉ को येलो कार्ड। आर्टेटा आर्टेटा ल्यूक शॉ येलो कार्ड, शिट। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये कमेंट्री ऑन है तो कॉपीराइट तो नहीं आ जाता? मेरे टीवी पे कमेंट्री ऑन है। फिर भाई मुझे तो सुनाई भी मैं नहीं दे तब रहा। तब भी म्यूट कर देता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा कम रखना बस। हाँ यहाँ तक बिल्कुल, मुझे तो सुनाई दे रहा है आपका। मतलब कमेंट्री सुनाई दे रही है? नहीं नहीं, अच्छा फिर ठीक है। ये देखो देखो, लिसांड्रो जरूरत नहीं थी। फोर टाइम्स क्या भाई, 4 टाइम्स में तो उनके पास साका है। साका लास्ट टाइम मलेशिया था ना, हाँ को रोकने के यार, लिए। अपने को तो लग रहा है 70th मिनट पे गार्नाचो आके कुछ करेगा, मजा भाई आएगा। गर्नाचो और फ्रेड काफी इम्पोर्टेंट है अभी हाँ काफी इंपॉर्टेंट बेंच प्लेयर थे हमारे लिए। हमारे बेंच प्लेयर्स। टेंस हो रहा है गेम, टेंस हो रहा है। Yes. हाँ, आर्सेनल साइड थोड़ा टेंस हो रहा है, डेस्परेट हो रहे हो स्कोर करने के लिए। पता है उसके एनर्जी ज्यादा से Yeah, ज्यादा 60 they मिनट्स तक don't have है। enough in the tank to sustain for 75 plus minutes with this. हाँ United के लिए तो अच्छा ही है, भाई, ये they डीगे का मुझे तो, यस, ये डीगे का मुझे मतलब थोड़ा सा ये भी रहता था, मतलब भाई कोई ऐसा सिचुएशन ना कर दे बस। नहीं, कुशाग्र सही कह रहा है, इट्स अ गुड गेम। आई थिंक इट इज गोइंग डाउन टू द वायर। भाई ये एक बहुत अच्छा गेम है। कल मैंने बैठ के 90 मिनट करेंगे। अपने वेस्ट करे, 90 मिनट हम्म, चेल्सी लिवरपूल देख के, उसके मुकाबले दिस इज वेरी गुड गेम। भाई साहब, आई नीड दोज 90 मिनट्स बैक। भाई क्या था कल वो चेल्सी लिवरपूल, देखा किसी ने? सुबह 7 हाँ बजे उठ देखा देखा सुबह 7 बजे उठ के देखा मैंने। मेरे को ना नींद आ अभिषेक गई भाई, थी और लिटरली मैं सो गया था उस गेम अभिषेक में। भाई, इट्स लाइक गोइंग टू स्कूल।
हाँ वही मैं उस दिन ग्रुप में बोल रहा था ना कि मैं 5 बजे सुबह और 6 बजे सुबह, मतलब 5 o'clock और 6 o'clock को बस यूनाइटेड को नहीं देखा हूँ, बाकी मैं दिन के पूरे 24 घंटे, पूरे टाइम पूरे 22 घंटे यूनाइटेड को खेलते हुए देख चुका हूँ। वही। जो 145 इंडिया में स्टार्ट होते थे ना मैच, ओ माय गॉड, दोस वर अमेजिंग। मजा आता था। आपके लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है ना भाई, 141 145 के गेम्स रात के हमारे। हाँ, अब नाउ इट इज गुड, इट्स लाइक 3 दोपहर को 3 बजे, तो दैट इज गुड, बट हम्म प्रीवियसली इट वाज लाइक अ dodgy. हम्म। आई थिंक आर्सेनल के अगेंस्ट ना, पता है मुझे मतलब एवर्टन के बहुत ही कुछ फैंस कहते हैं कि आर्टेटा वाज मतलब अच्छा डिसेंट प्लेयर था, मतलब पर अब तो इसका डिसिप्लिन मतलब एटीट्यूड कुछ वियर्ड सा ही है। कितना बेशरम आदमी है भाई, एक जबरदस्ती ल्यूक शॉ को येलो कार्ड दिलवाना चाह रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, दिलवा दिया भैया। हो गया ल्यूक शॉ को येलो कार्ड? मुझे नहीं लगता, आई थिंक हाँ, वो आर्टेटा को मिला है येलो कार्ड। वो रेफरी ने निकाला था, मेरे को इतना देखा था, तो ल्यूक शॉ हाँ का है वो कि आर्टेटा अल्टेटा को का है? मिला है, आर्टेटा को मिला है, वो हमको मिला है, ओ, लूक शॉ को मिला है। नहीं नहीं आर्टेटा को मिला है। शॉ को नहीं मिला है, यस मैंने भी अभी हाँ देखा। से अच्छी बात है। सक्षम भाई मुझे डरा गया, लूक मुझे शॉ को लगा कि बोला। कार्ड निकल गया, ल्यूक शॉ को मिला होगा। एंटनी बॉल 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 बॉल, अबे यार। यार अच्छा, मेरा एक बहुत ही अलग सा भाई ओपिनियन है। आवाज आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सक्षम भाई। नहीं नहीं, मेरे तो नहीं आ रहा होगा। ओजस है, और किसका ये आ रहा है? सॉरी मुस्कुरा सॉरी सॉरी, मैं फ्लो में कमेंट्री बंद सॉरी। ये मुस्कुरा क्यों रहा है ओजस, तू क्या हुआ? कुछ नहीं नहीं, बस मेरे पे एक्यूजेशन आया। नहीं, एक मेरा बहुत वो है, नहीं भाई, कंट्रोवर्शियल कुशाग्र ही ओपिनियन बोलते हैं कि मतलब ये क्या। बोलो बोलो, कोई तो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, एट हाफ टाइम आई विल कंट्रोवर्शियल सब्स्टिट्यूट ओपिनियन। वेगोस्ट। आई डोंट थिंक ही इज ऑफरिंग इनफ इन दिस गेम। Yeah, I think we can play Rashford as a striker and Garnacho over the right wing. That is मुझे also तो अभिषार भाई स्टार्टिंग से वेगोस की पर्सनालिटी ऐसे लगती है दैट ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर कमिंग ऑफ द बेंच। yes. मतलब यप, मतलब मतलब जब जैसे जैसे वो डेस्परेटली। जेल होता रहेगा टीम में तब बात अलग है, बट ही इज यार रॉ टू क्या बी बॉल दी स्टार्टिंग। थी एरिक्सन ने, वो थोड़ा सा कर्ल नहीं होता ना, रैशफोर्ड के फीट पे था। ओ माय गॉड, व्हाई यू गाइस आर, आई थिंक आई नीड टू टर्न। मुझे लग रहा है एक गोल आएगा ब्रूनो का आज। भाई अलग खेल रहा है लड़का। लिजांड्रो पट्टी बांध क्यों खेल रहा है? अच्छे से लगी थी ना पिछली बार। लास्ट मैच में यार, वैसे वैसे इसके स्टैट्स कुछ ज्यादा इंक्रेडिबल है ब्रूनो के, 100 गोल और असिस्ट 153 गेम्स में भाई। कुछ ज्यादा ही। और पोर्चुगीज मैग्निफिको। with or without Casemiro. I'm not sure whether they have shown that stat over there. यहाँ पे विद और विदाउट कैसेमीरो, वो पीटर ड्यूरी ने कुछ बोला होगा तो इसलिए पूरा वैसा चल रहा है। स्टैट्स दिखा रहे हैं कि दैट विद और विदाउट कैसेमीरो हाउ यूनाइटेड हैव प्लेड फार सो फार। भाई कैसेमेरो तो रोल्स रॉयस है ना, वो हम जो खिला रहे हैं वो मारुति सुजुकी है। ओ भाई नहीं, हम जो खिला रहे हैं वो आर्टिका है भाई, आर्टिका। वो मारुति सुजुकी की है। वही मैंने स्पेसिफिकली कार ही बता दी।
नहीं, you know, when they say ना Rolls Royce of a player, तो मेरे को ना ज्यादा उतना कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि पता मोस्ट है ऑफ द टाइम ऐसा पता है लगता था अभिषार भाई, मुझे यही डर लगता है हम कैसे मेरे को रिप्लेस कैसे करेंगे। that thing is going to be very difficult. चूहा इसीलिए में तो नहीं ले बोल आएंगे रहे यार। कि We should डेक्लन rate Juventus as well. मेरे को लगता है 2-3 प्लेयर Juventus से ला सकते हैं हम अभी मतलब एज इन समर में, अगर हमारे पास चैंपियंस लीग होगा एंड दे वुड नॉट बी हैविंग एनी यूरोपियन फुटबॉल। वो तो मेरे को तो बहुत बुरे हाल में यूवेंटस है, और यूवेंटस के जो कोर इटालियन प्लेयर्स होंगे ना, मतलब मुझे नहीं पता कि चिएजा चिएजा इज इटालियन ना, हाँ तो वो तो नहीं छोड़ेगा अभिषार भाई क्लब, वो तो जान दे देगा भाई। भाई ये मुझे वेगास का रोल मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, इतना डीप क्यों आ रहा है ये? दादी ऊपर ही रन। यार वेगॉस ना वैसा प्लेयर है, जो तुम्हारा स्कोर 0-0 चल रहा हो, तुम्हारे 70 मिनट हो गए हो, उसे डालो क्रॉस एंड इंशाल्लाह प्ले, कि ताकि वो इधर उधर से कुछ कर दे। एरिक टेन हैग भी फ्रस्ट्रेटेड है इसी बात से, मुझे लगता है वेगहॉस से फ्रस्ट्रेटेड है वो। भाई वो डीप खेल रहा है भाई, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है गेम प्ले का उसका। Touches in opposition box guys 19 and 2 really poor. कोई स्टैट देख के बताएगा पोजीशन कितना है हमारे पास? आई थिंक पोजीशन भी आर्सेनल का ही ज्यादा 60-40 होगा कुछ। यार ये चांस बट इट्स गुड गेम, इट्स रियली लाइवली गेम है। इट्स लुकिंग लाइक, यू नो, कि टॉप ऑफ द लीग टीम्स खेल रही हैं। भाई आपको लगता है कि ट्रोसार्ड को लाएंगे? लाएंगे ही लाएंगे। ऑब्वियसली, अटैकिंग प्लेयर तो यार आपको गोल चाहिए, अगर मैच उस पॉइंट तक जाएगा तो दे विल श्योरली ब्रिंग हिम इन। भाई ट्रोसार्ड मतलब भाई he can create आर्टेटा गेट्स something अ येलो havoc. कार्ड। %49 पोजीशन है हमारा आई थिंक। एक टक्कर का गेम है, अब तो सेकंड हाफ का ही वेट कर सकते हैं हम। सेकंड हाफ भी लेटर स्टेजेस में, थोड़ा सा इनिशियल फिर वही 10 मिनट रुकना पड़ेगा जब सेकंड हाफ स्टार्ट होगा, एंड देन लेटर स्टेजेस पे दैट विल गो टू फाइट एंड ऑल दोस क्लच सीन्स। बस मेरे को डर इसका, जो 10 मिनट्स होंगे ना सेकंड हाफ में, उसमें हमें कंसीड ना कर ले, फिर पूरा गेम डेड हो जाएगा। नहीं भाई कंसीड तो नहीं करना चाहिए मतलब, लेकिन अभी तो गोल करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि भाई यूनाइटेड एक गोल मार दे। वो एक हाफ मेंटली उन पे प्रेशर रहता है ना सेक्शन, कि वो रहता है हाफ टाइम के बाद कि भाई वो आगे है, वो और एक खा सकते हैं फिर बाद में जब आएंगे। और मार्शल कहाँ चला गया यार? वो बंदा 2 गेम खेलते चले जाता है, कहाँ है, कहाँ वो इंजर्ड हो गया क्या? हाँ भाई इतना उसका अच्छा मतलब प्लेयर इंजरी है। वो मार्शियल, एंड ही इज नॉट, यू नो, फिट, बिल्कुल फिट नहीं है वो। फिट ही नहीं है वो, क्या मतलब क्या बोले भाई उनको, मतलब एक 6 महीना दिया है सेक्शन भाई की, परफॉर्म करो एंड डू द। नहीं, टेनहाग को तो पसंद है मार्शियल, बट वो फिट ही नहीं रहता, अब क्या करें। मार्शल वुड वही बी तो। जितने जितने लोग रहेंगे ना, अगर इफ एनी ऑफ दिस थिंग मैनेजर को ना जैसा कंप्लीट पैकेज जैसा अगर प्लेयर चाहिए ना, तो मार्शल इज दैट फॉरवर्ड। आपका लेफ्ट विंग खेल लेगा, आपका 9 खेल लेगा, होल्डिंग 9 खेल लेगा, जो नॉर्मली जो ऐसे रहते हैं, जो दो Yes. होल्ड्स देम, तो वो सारा सब कुछ आपका खेल सकता है। लेकिन दैट अगेन हिज फिटनेस इज द इशू। वो भाई सबसे महंगा टीनेजर था वो। द बेरेंडियोर क्लॉज। नहीं, मार्शल का टाइम तो मुझे अब खत्म ही लगता है यूनाइटेड में। यू कैन नहीं नॉट मतलब वही रिलाई ना, वही सिर्फ एक ही इशू है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट प्लेयर, एंड व्हेन यू विल गेट इनटू अ फेज वेयर यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ प्लेयर, then you cannot build a championship squad.
आपको ऐसे चाहिए कि भाई प्लेयर मेरे हैं उनके ऊपर मैं फुल्ली रिलाई कर सकता हूँ, वरान भी जिससे तो देखो, वरान भी तो देखो अपने फिटनेस में वर्क कर रहा है ना। हाँ उसे पता है कि वो 30-40 गेम नहीं खेलेगा तो टीम नहीं नहीं चल पाए। पेनल्टी पेनल्टी, इट्स नहीं मिली, पेनल्टी भाई, भाई वीआर पे भी नहीं तो गया। वीआर चेक उसको कंप्लीट हो गया शायद। हमको wan-bissaka या को गिरा है उनको यार, पर थोड़ा ढीला चले है, वीआर पे भी नहीं मिलेगा, हमें हमें मिलनी चाहिए यार। भाई वो क्लॉप का मतलब शाप ही लग गया है हमको, पेनल्टी ही नहीं मिलती। भाई मिलना ही बंद हो गई वो तो। भाई उसका 7 सीजन का 7th कर्स, मतलब वो कर्स है भाई सच में। नहीं नहीं, that should be fine. खत्म, अभिशार भाई का वेट करेंगे बस। भाई मेरे को भी वेट करना पड़ेगा तो। हाँ नहीं नहीं, अभिशार भाई कुशाग्र सही कह रहा है, आप चैट में पढ़ लेना एक बार। No, that should be fine. That should be fine. Now I've got this. अभी मेरे यहाँ अभी just around 25 seconds I'm delayed. You guys have finished? You guys हाँ have हमारा finished हो the गया, second first हाँ half? हाँ, फर्स्ट हमारा हाफ इज हो कंप्लीट। गया हमारा हो गया। नहीं भाई मैं मोबाइल पे स्विच किया है भाई, हाँ मैं भी अगर मोबाइल if I'll watch in mobile maybe it will be better. क्योंकि मेरा पीसी मतलब है थोड़ा सा लैग हो रहा है That एंड प्ले। Vegas guy he has run, ball बाहर जा रही थी, it was going out of this D and he came and he headed it inside our D. और फिर okay, that is half time. Yes, Ojas, I think now we are good. भाई तो साहब ये अभी 50-50 है भाई, मैं तो बोलूंगा। व्हाट डू यू से अभिषेक भाई? I like I would not say 50-50. I said I'll say rather that we played well. आप हमने उनको chances उतने दिए नहीं. You know, being Casemiro not available, I think that we might be steamrolled. लेकिन वैसा हुआ नहीं, चांसेस उतने नहीं दिए और थोड़ा सा यही प्लेयरों को ना कॉन्फिडेंस आएगा अभी फर्स्ट हाफ के बाद. And then we have player from the bench who can change, you know, who can increase the pace of game and get it better. So that will be good for us. डू यू थिंक दैट वी लैक द क्रिएटिविटी इन इन आवर Obviously, you know, साइड? when you are taking Bruno and Ericsson to do the dirty job, because McTominay is not present in your midfield. नहीं वो McTominay, तो है, मेरे को भी लगता है अभिशार भाई, आई थिंक वेगोस की जगह गर्नाचो आ जाए तो भाई ये अटैक कंप्लीट है। नहीं, दैट इज द इशू। मुझे तो मतलब चांस क्रिएशन, मतलब वो तो डिसरप्ट करने के लिए खेल रहे हैं, मतलब उनका मिडफील्ड तो डिसरप्ट ही कर रहा है हमारे पास से। नहीं, if मतलब Odegaard is still getting so much time and space, then McTominay का फिर वो वर्कआउट नहीं होगा क्योंकि he cannot play your CDM, he cannot play your, you know, disruptive player that who can do fouls and create all those stuff. So yeah, you need something out of it. वी हैव अ स्टैट आई थिंक दैट वी मास। कैन, ओके रीड, अभिजीत भाई रीड करो एक ओके बार। Okay, Marcus Rashford has scored 5 goals and assisted 4 times against Arsenal. His most goal involvements against a side in the Premier League. भाई वो definitely भाई कुशागर भाई, he is on the run. He's संदीप भाई अगर yes 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 विशाल भाई बोलो बोलो। No, I was saying for the Rashford, I've seen him that he has been doing good for the against the bigger sides as well. Like usually he's not someone who goes in the अगर big match है तो फिर उसके बाद नहीं है, वो ऐसा नहीं है. आई नहीं थिंक एक और मतलब चीज भी वो हो सकती है, इफ वी वांट टू लाइक ओडेगार्ड को हमें बिल्कुल ही कैंसिल आउट करना है, वी कैन पुट फ्रेड इन एंड रिप्लेस वेगोस्ट एंड ब्रूनो को विंग पे डाल के रैशफोर्ड को सेंटर, तो मिडफील्ड भी एक थोड़ी हमारी स्ट्रांग रहेगी और ओडेगार्ड भी जब ऑक्यूपाई कर सकते हैं उसको उस सेंस में, लाइक द वे वी डिड विद मैनचेस्टर सिटी 4-3-1-2 दैट मेरे फॉर्मेशन। को तो लगता है अगर गेम इक्वल रहा 75 मिनट्स के बाद गर्नाचो आके
is going to, replace Weghorst. Yes. I think we all agree with Jay bhai. He says that being decent so far, we are not playing extremely good, but not too bad also. Yes, definitely. But just need to be a bit better in marking. Yes, definitely. जो हमने सिटी के So अप्रोच sorry जो guys, I किया है can. हमने जो Yeah. वो वही अप्रोच हमने हमें यहाँ पे रखना नहीं, है। पर जय भाई कहीं ना ये भी है कहीं कि सॉरी हाँ सॉरी यस सॉरी यस मैंने ओजस भाई आप यस आप कंटिन्यू कंप्लीट कर लो, फिर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। यस जय भाई ये भी है कि जो हमने जो सिटी के अगेंस्ट टैक्टिक्स किया है वही सेम हम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बट उनके साथ यहाँ पे वो जो इंटेंसिटी से खेल रहे हैं जो आर्सेनल वो हम सिटी वाज नॉट दैट सिटी वर वेर काम एंड कंपोज एंड दे वर वेटिंग फॉर अ चांस टू यू नो टेक दैट अपॉर्चुनिटी और वो खेल रहे हैं आर्सेनल ऐसा नहीं है आर्सेनल आर डेस्परेट वो मतलब इंटेंसिटी भी है उनके पास और दे हैव मतलब वो लिंकअप भी है तो ये मतलब गो ऑन दैट्स इट नहीं, मेरे को लगता है मैन मार्किंग से ज्यादा ना ये गेम थोड़ा सा, पता नहीं, मैं गलत टर्म यूज कर रहा हूँ, शायद जोनल मार्किंग पे भी डिपेंड करता है। आप बंदे के बंदे पीछे तो लग जाओ, पर आर्टेटा ने ऐसा ड्रिल कर रखा है आर्सेनल प्लेयर्स को, दे नो हाउ टू क्विकली चेंज देयर पोजीशन। मतलब पास से पहले ही बंदा रेडी होता है, मतलब पास डालते ही नोज हिज नेक्स्ट पोजीशन सो वेल। ये एक बहुत वेल ड्रिल टीम का साइन है मेरे हिसाब से। एंड यू जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट आर्सेनल इन सच अ वे कि मेरे को मैन मार्किंग कॉन्सेप्ट तो ठीक लगता है, पर दे आर सो फ्लूइड, दे आर सो गुड एट एवरीथिंग राइट नाउ कि हमारा बेस्ट चांस ये है कि हमने अपने डिफेंस को कवर्ड रखना है और हमने अपने अटैक को फ्लूइड रखना है, यही मेरे और को हमको लगता ना प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. इट शुड बी लाइक दैट हम्म, वी विल बी गेटिंग सस्टेन्ड अटैक एंड देन वी नीड टू आर डिफेंडर्स यहाँ पे मार्टिनेज, शॉ और वरान का जो इम्पोर्टेंस है वो और क्रिटिकल हो जाता है कि दैट पीपल मे बी दे विल गेट इनटू आवर बॉक्सेस बट देयर शुड नॉट बी एनी क्लियर कट चांस. सो दैट्स हाउ इट शुड बी. एक बार मैं कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ, फिर मैं सक्षम कमेंट्स में संदीप भाई ने ये बोला है कि कहाँ वेगॉस हैज बीन डूइंग द जॉब गिवन टू हिम, वो तो ठीक है, पर मेरे को लगता है और बेटर कर सकता है। मैकटोमिने हैज टू कम इनटू द गेम मोर, वो तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। सही कह रहे हो। नो, डोंट टेक आउट वेगॉस, ही इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रेसिंग का गेम तो मेरे ख्याल से उससे आगे आ गए। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ गेम। प्रेसिंग से ज्यादा मेरे को तो लग रहा है क्रिएशन पे थोड़ा वर्क करे तो वी कैन विन दिस। Vegas coming off would change the game like City game when Marshall came off at halftime. No, हाँ, हो not सकता at है। halftime substitute. Sandeep bhai, what you are saying is absolutely right. We are not asking for 45 minutes of Garnacho. But yeah, another 20 minutes of Vegas, 25 minutes, and then later half of 25 minutes should be Garnacho. So that should be Exactly. ideal scenario. We are not saying, and with that, having said that, we will have a good opportunity if some proper crosses would come, and having Vegas in the box and converting those chances would be crucial for this game. मेरे को भी लगता है क्रॉसिंग कहीं ना कहीं होने लग गई, वेगॉस will automatically come into the game. Having And said that, Shaw is playing as proper left back, so that will help in a broader vision. मेरे को भी I think there will be some talks at the half time. JY says and playing away, so we have surely stepped up. I think we have played very decent. Abhishar bhai was also pressing on that. हमने बहुत अच्छा खेला being it an away game at Emirates. And Vishal bhai says decent game so far. I think so. Yes, but we could have done well against that attack. मुझे लगता है तो वो decent से थोड़ा सा नीचे गिर गया मेरे से। That कुशाग्र goal was na the जो Eddie Nketiah का goal था, that was not like you missed your man. Wan-Bissaka has missed his man. I'm not questioning आई him. थिंक पोजिशनल वो एरर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। ये मैं चाहता हूँ बारी बारी सब आंसर करे। सक्षम से स्टार्ट करूंगा मैं। सक्षम, थॉट्स ऑन लीच एंड वरान एट द बैक। ठीक कर रहे हैं अभी तक, मतलब बॉल चलाने में तो दैट दे आर गुड. थोड़ा पोजीशन में अगर अवेयरनेस दिखा है, लाइक द गोल वी कंसीडर्ड, आई नो कि वैन-बिसाकी वो है, बट यू शुड मार्क दैट एज वेल. गोइंग फॉरवर्ड, लाइक वरान इज लाइक कैरिंग द बॉल राइट विंग पे, वो कहां तक पहुंच गया था. सो इट्स डिसेंट, बट आई रियली वांट फ्रॉम दिस गेम इज कि लाइक वो स्टैट जो देखा कि ओपोजिशन के बॉक्स में जो टचेस हमारे कम है, हमारे सिर्फ 2 टच हैं एंड आरसो के 19 है. तो अटैकिंग वाइज आई थिंक वी नीड टू इंक्रीज दैट. हम बॉक्स में अगर घुसेंगे एंड वी विल, लाइक हमने जो भी अटेम्प्ट्स लिए, मैक्टोमिनी का अटेम्प्ट एंड रैशफोर्ड का अटेम्प्ट, दैट आर फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स. इनसाइड द बॉक्स अगर थोड़ी बॉल चलेगी, आई थिंक वी कैन
surely score a goal. At back, it's solid. Luke Shaw काफी आगे पहुंच जाता है तो Licha is there to cover for him. So I don't see a problem with Licha and Varane. और मैं ऐसा नहीं करूंगा कि Luke Shaw को मैं center back डाल दूं और Malacia को फिर left back डाल दूं. I don't think it makes sense. The defense is doing its job. It's just one time Bissaka got sleeping and we conceded. Otherwise, it's solid defense, no issue. Abhishar bhai? Yes, that's the same thing, even having, around 20 odd touches in our penalty area, they were not very having any clear chance. So that shows that our defense is aware that it was just, one minute sleep maybe for Bisaka that has cost us a goal, but more or less it should be fine. It should be fine in such a way that if we'll keep our हमारा defense अगर soak करेगा ना वो सारा pressure, then we will flourish. अभिजीत भाई? नहीं, आई थिंक हमारा डिफेंस लाइन तो अच्छा है, थोड़ा सा लीचा मतलब थोड़ा सा मतलब वो गेम टाइम का मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है मुझे कि कमी लग रही है। he has not played, हाँ लग रहा है थोड़ा, बट he will cover up. आज हम हाँ वी डेफिनेटली मिस कैसिमेरो मैं बोलूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जो ब्रिज है ना, मतलब हम बोलते हैं ना कि वो मिडफील्ड और मतलब इसका ये जो अटैकिंग के लिए जो ब्रिज है वो थोड़ा सा मतलब हम मिस कर रहे हैं. मैकटोमिनी इज नॉट कमिंग इनटू द गेम जस्ट जैसे कैसिमिरो आता है, तो वो थोड़ा सा खलेगा हमको, बट वी हैव टू कम इनटू द गेम एंड वी हैव टू टेक द चांसेस. थोड़ा सा मतलब एंटनी जब रन करता है मतलब वो रुक जाता है बीच में, तो थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा ये लगा कि भाई भागो तो थोड़ा तो स्ट्रेच तो करो भाई, जैसे सैंचो करता है कि भाई एक बार स्ट्रेच करता है, तो इफ यू स्ट्रेच द डिफेंस गैब्रियल मतलब वही कर मतलब आता है उस इस सिचुएशन, तो he need to stretch the game, stretch the defender so that we have space for Weghorst and Bruno or Eriksen. We create करेगा, तो that is little lagging for us, but we have done some decent substitute. मैं without more talking about it more, मुझे एक बार prediction बता दीजिए सब. अभिजीत भाई आपसे ही स्टार्ट कर लूंगा. prediction second half की. यार मुझे तो लग रहा है 3-2 लग रहा है. अभी मैं तो प्रेडिक्शन चेंज करूंगा, मुझे 3-2 यूनाइटेड लग रहा है मुझे. अभिषार भाई? I'm still in that favor. I think that the substitutes would decide this game, when it will be in the later half. Maybe, Fergie time winner or stoppage time winner waiting for us. Let's do this, boys. Come on. Glory, glory. glory. Saksham भाई? पहले तो मैं कमेंटेटर्स करना चाहूंगा, ये जो आया था अभी रॉय कीन ऑन wan-bissaka, दैट्स योर जॉब, यू शुड बी अवेयर, ही हैज टू बी अवेयर ऑफ दैट गोल, दैट्स योर जॉब, दिस इज बिग बस स्टफ. भाई वो पोजीशनल एरर था भाई, पोजीशनल एरर था. पोजीशनल एरर था वो. नेकेटिया से कब गैब्रियल पे चला गया उसे पता ही नहीं चला. हाँ, अगर वहीं पे अगर क्रॉस पे रोक देता तो मतलब वो गोल ही नहीं होता फिर. अब पास को ड्वेल नहीं. I think we should look for a positive now. Future में जाना चाहिए. और I think prediction अगर मैं दूं तो I think थोड़ा वाइल्ड prediction है. I think we are going to win it 3-1. एक गोल आएगा एंड एक 90 मिनट पे ऐसा अजीब सा काउंटर, ब्रूनो टैप इन. I think 3-1 we are winning this. मैं अपने प्रेडिक्शन में रहना चाहूंगा 2-all या 3-all. मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रॉ होगा, पर बहुत जरूरी है कि हम बिल्कुल भाई आप जिंक्स मत करना बस. लाइटली ना ले आर्सेनल को, हम बिल्कुल भी लाइटली ना ले आर्सेनल. No, that has been seen. वो समझ में फर्स्ट हाफ में अभी तो एरिक टेन हाग अच्छी क्लास लेगा. It is good thing, that when United play first half like bad or average, they get better in second half. Thing is that when they play good first half, तो फिर वो second half का जो initial 20 minutes का phase रहता है वहाँ पे हम खराब करते हैं. So it was good that Arsenal has dominated. Now it will कहीं ना आपको समझना पड़ेगा कि वो टॉप ऑफ द टेबल क्यों है और आप थर्ड क्यों हो, आप फोर्थ क्यों हो, थर्ड क्यों हो, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली दे आर एबल टू परफॉर्म और वो पॉइंट्स गैदर कर पा रहे हैं. आज आर्सेनल को एकदम बिल्कुल दबा के रखेंगे एंड आई थिंक वी कैन गो फॉर इट.
नहीं, वही वही बात है मुझे इसमें, दे डोंट हैव द राइट सब्स्टिट्यूट। जैसे हमारे पास जो है फ्रेड है या garnacho है, या फिर हमारे पास मगवायर भी है या लिंडलॉफ भी हो, मतलब एक राइट सेट ऑफ प्लेयर नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ अभी एक अटैकिंग में आया, तो फिर भी आएगा तो यार कौन आएगा भाई, ट्रोसार्ड ही आएगा फिर भाई उनके पास। और मतलब कौन प्लेयर है बताओ आप मुझे, मतलब ऐसा मुझे मुझे तो नहीं लगता कि भाई उनके ट्रोसार्ड पास। ट्रोसार्ड इज एलिजिबल टू प्ले ना? ट्रोसार्ड Yes. इज यस यस, बैठा है बेंच पे बैठा है। बेंच मेरे पे को बैठा है। मेरे को ट्रोसार्ड से आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर ट्रोसार्ड टू बी अ प्रॉपर मतलब जेल करने के लिए आर्सेनल टीम के साथ। हाँ बट मेरे को सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा ना, मैं तो जानता हूँ कि हमारे पास गर्नाचो है, और देखो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, हमारे पे फ्रेड है, गर्नाचो है, प्लेयर्स है बेंच पे। पर ये गेम बेंच का नहीं, मुझे लगता है आज ये गेम ना, इन ये जो टीम्स अभी हैं लाइंड अप, ये इन्हीं में खत्म हो सकता है। इन्हीं में आई थिंक इट कैन बी रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर्ड कुछ, क्योंकि अब जो ये टीम्स है ना, अब दे आर प्रिटी रेडी कि मेरे को शो करना है अगले 20 मिनट्स में सेकंड हाफ की, लाइक द फर्स्ट फेज ऑफ द सेकंड हाफ इज रियली इंपॉर्टेंट। टीम्स आर कमिंग आउट। टीम्स आर हम्म। कमिंग। गाइस सॉरी, मैं पूछना ही भूल गया, दो जो जो देख रहा है स्ट्रीम एक बार प्रेडिक्ट कर दो। हाँ भाई प्रेडिक्ट। कुछ कुशाग्र भाई ऐसे पुट करना चुन बेनवेट, ये तो मैं कह ही रहा हूँ। आई थिंक यार वेगोस्ट का नहीं, मेरे को नहीं लगता ये उसका गेम बन रहा है, ये गेम नहीं बन रहा है। गर्नाचो कैन बी अ वेरी गुड एडिशन इन दिस फ्रंट लाइन। रैशवर्ड, गर्नाचो एंड एंटनी इज समथिंग वेरी लीथल फॉर दिस डिफेंस ऑफ, मतलब आर्सेनल की डिफेंस के लिए। ये 18 नंबर तोमियासू आ गया। 18 नंबर आ भाई गया तोमियासू। यही, हाँ यही सक्षम भाई, यही है, यही है। ये डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए। नहीं, that guy is good. Tomiyasu is good. नहीं नहीं अभिषेक भाई, उसने क्यों किया, उसको पता है कि भाई बाद में गर्नाचो आने वाला है, दे विल लॉन्च एन अटैक। तो उनके वो मतलब वो पता चलता है कि भाई आप यू आर ऑन माइंडसेट में थोड़ा सा बैकफुट पे हो आप। मैंने मुझे बस एक थोड़ा चीज सा चाहिए, हिंडर एक किया है एक उसको। मेरे को भाई ट्रॉल चाहिए कि क्या भाई, एंटनी गोल मार के आर्सेनल स्टैंड में चिल्ला दे। मुदरिक कम आउट, वी जस्ट वांट टू टॉक। नहीं, वो तो है ही नहीं बेचारा। That's what a 100 million signing can do. There is one or couple of moment of magic left in this. For your guys stream, the players are on the field. The match started. For me, Arsenal squad is Yeah, getting onto the pitch. तो बस 15 सेकंड का ही फर्क है अभिषार भाई। Yeah, it will be like that only. Yeah. टोमियासो को दिखा रहे ना अभी। हाँ, टोमियासु को दिखा रहे हैं मेरे में भी। यस यस, मेरे में भी वही दिखा रहे। अभी stands दिखा रहे हैं, so it will be like that. हाँ यस I know यस यस। across country, stream differs, so it will be like that. But yeah, that should be fine, I think. But it's good now. This will help us understand that is this United team actually is there to challenge for the titles when big games come. So how are they doing good? There would be pressure and all that will not be in your favor, but how you sustain that, वो बहुत important होता है big teams के लिए. मतलब you teams cannot be like City and yeah, maybe City or Liverpool जो लोग they were so perfect as a squad. So teams are very unlikely to be in that way. Yes. जाका भी काफी ट्रांसफॉर्म किया है इस आर्सेनल टीम में। यार बैकहॉस्ट गंदा फाउल, गंदा फाउल। Ay, shit. Anthony on a yellow now.
That was for me. It was Zaka's foul, but by the नो नो time, नो, वो आगे एक चैलेंज आएगा जिनचेंको पे, तो एंटनी उसके लिए येलो पे है. but that should be fine. Anthony should not have that much. He's okay. Anthony should not have Anthony's yellow should not bother us unless our defense is fine. We have Yeah. window for our attack. Hey, hi Weber. We have What's up? window for What's our up? Hello Vaibhav. What's up, GGMU guys? GMU. How's your health, man? I don't ask, man. Like, actually, it's nothing serious. I had to donate my platelets for a friend's sister since yesterday Oh, I've been all dizzy and oh. all gone, guys. Better, Ooh, better. nice Take and back. care. Only United win could have your platelets back. They're gonna pump it out. United with a lot of fluids. Yeah. That Anthony usually like runs out of steam with his pace and with his dribbling. You can either have pace or have that dribbling skill. When he mixes up both, that goes out of steam. That slows down the game too much. Yeah. But I think Arsenal have been stunned a bit, like they didn't expect United to play so well. We are still not playing well. You know how we used to win midfield battles. We are not winning it. It's our defense and our forward that is doing our job till now. Once our midfield would come into picture, we are truly going to get result out of this game. Midfield battle, I always thought कि अगर if he'll go with McTominay, we'll have a we won't have that much of a chance. अगर Casemiro होता तो I'm sure we would have done That's well in the that's game. now that's now water is wet. It's like everybody's knowledge that we are daylight difference in Casemiro and But anybody else playing in midfield. I don't know if this idea came in, but like Martinez को भी CDM खिला सकते थे. Hello, No, just I was भाई. not that I was not in favor of it, but नहीं, yeah, मैं सिर्फ इसलिए फेवर था क्योंकि उसके ना गेम सेंस मैकटोमिने से बहुत हाई है. हाँ, see, exactly, right? I mean, more than McTominay, I think Fred deserved a better chance. क्योंकि City के खिलाफ उसका गेम भी अच्छा था. वो just भाई नहीं, would वो agree. वैभव भाई वो इसलिए नहीं था क्योंकि जाको और पार्टी की हाइट की वजह से ना they needed a tall. हाँ. Yeah, I They mean, needed someone. They needed a presence in the midfield, and I think McTominay is not a physical presence in our presence, midfield. yeah. Who can easily foul. I'm still yet to see McTominay's that game. McTominay अभी defense में जा रहा है. He's not creating foul. वो hearing from referee ending up in yellow card that he needs to do. actually, a question for all of you. Okay, so here's the question. Starting with Ojas Bhai, then you can answer accordingly. Do you think at this stage, Mikel Arteta, considering the long title race, he would be satisfied with just a draw against United and maybe capitalize against Liverpool and all that, or do you think he would go for a win considering it's a home game? If how United is playing right now, I think Arteta will be happy with the draw. But I don't think so. Although I predicted a draw, I don't think so. This is going to be a draw. And either of the manager is looking for the win. Both the managers are thinking about 3 points right now. So Sure. Vaibhav, on that point, Arteta wants to stamp his authority. That we are like people are like it's been having been said that for so long that Arsenal is the elephant on the tree. Nobody knows how did they reach there and when they're gonna fall. So Arteta wants to do that on the big games. जो जैसे एकदम प्रेशर सिचुएशन है जैसा अभी है. इनको पता है कि अभी अगर ये हारेंगे तो सब बोलेंगे everybody would be jumping on to them. United अगर हारती भी है और कुछ भी रिजल्ट होता है they'll say that okay that is because Casemiro was not there, that is because this that is everything will say. लेकिन अगर आर्सेनल हारेगी ना तो all the teams will get a sniff. Even City के साथ 2 मैच है. That will not be easy for Arsenal to get 6 points out of it, being it Etihad or Emirates. Either way it's not going to be easy. Oh, God, that was close. Sorry. Darshan bhai?
Yeah, I think that like a draw for both of the managers is a satisfactory result. They would be like satisfied. Okay, it's a good result, but they both want a win. Like for us, like these 3 points are not for the title. We are not hoping for it, but in a sense of top four, if we get 3 points today, it would be fuck off, man. Okay, interesting. Um, Man, they have come all guns blazing. I mean, that's the home advantage for I'm you. leaving. Bye bye, guys. Bye. Actually, my stream is around 1 minute delayed, so it's like it's going in that sense for you. I'm like very behind. I just saw the goal right now. I'm on Hotstar, so fuck. Saka had to be. यार यही डर था कि 10 मिनट जो होंगे ना सेकंड हाफ के वो प्रेशर बनाएंगे और वो गोल मार देंगे वो मार दिया Oh, that was amazing. That you need to stand and up, stand and oh, he did Rashford celebration as well. But that should be fine. That was moment of magic I told you about. The moment yes of magic that holds in this match. That should be fine, guys. That should be fine. You cannot say anything for that. But I still think At times you have to sit back and appreciate. नहीं ये तो appreciate इसे ही कह रहे हैं विशाल भाई. You just cannot do anything about it. Yes. I यार think Bahaya have done better in that. मतलब उसको अच्छा करना चाहिए था थोड़ा. नहीं he has to. I have been adding his उसका जो main skill है ना short stopping, he that having in his this thing armory, every time it is expected that वो top notch हो, क्योंकि आपके पास बाकी चीजें नहीं है ना उतने, जैसे claiming crosses, doing passes and all those stuff. So आपको ऐसा लगता है कि your short यार stopping on that ये level where it should go. भाई सॉरी, मैं बस साका को यहाँ पे गालियां देने आया हूँ. वो साला रैशफोर्ड की सेलिब्रेशन कर रहा है. अरे अभी करेंगे अभी That भाई हीरो बन रहा है साला ज्यादा. रैशफोर्ड की सेलिब्रेशन कर रहा है. for like it's like everybody is appreciating what भाई I'm Rashford. gonna get more sick आज. भाई ये तो भाई मॉक कर रहा है ना अभिशार भाई. ये अप्रिशिएट थोड़ी कर रहा है उसने सेलिब्रेट करके. ये तो भाई मॉक कर रहा है. This has more to do with भाई हमें 3-2 हमें 3-2 आने दो. लिसांड्रो मार्टिनेज उसको बनुच्ची की तरफ फिर खींचेगा नीचे. that thing Ojas sorry Kush, that thing is more than mocking Zaka, mocking Rashford. I think that celebration is more for English black player. I think that has something to do with English black players. I'm not very sure, but yeah, that is on that aspect. We will see नहीं नहीं many अभिशार in that. बेसिकली थियरी ऑनरी ने थर्ड टाइम पहले रैशफोर्ड को बोला था दैट ही नीड्स टू यूज हिज ब्रेन मोर. तो उसके लिए है ये सेलिब्रेशन. तो रेसिज्म वगैरह का कोई सीन नहीं है. थियरी Oh, ऑनरी के लिए निकाला था. हाँ, ही नीड्स टू यूज हिज हेड मोर. अरे यार ये जो भी सेलिब्रेशन है जो भी है मुझे एक चीज पता भाई है आई डोंट Ramsdale थिंक save कि देखा. क्या रैमजेल का Ramsdale सेव हाँ अच्छा था यार मेरे को एक चीज पता है वेगहॉस्ट निकालो जितनी जल्दी निकाल सकते हो अभी मतलब आई एम नॉट हेटिंग द प्लेयर बट अभी गेम प्ले में वो बिल्कुल फिट नहीं कर रहा है यार अटैकिंग वाइज वी आर डल वी आर अ मैन शॉट ऑन अटैक व्हेन no. Even बिकॉज़ for the वेगहॉस्ट इज shot of even if you'll see that shot of Rashford जो Ramsdale ने save किया, if you'll see just 10 not even 3 seconds back, Weghorst was occupied by 3 defense of Arsenal. So that is always going to दैट इज show. यार ड्रैगिंग डिफेंडर्स बट लाइक वो फ्लूइडिटी है ना मतलब अगर इफ यू ड्रैगिंग डिफेंडर्स एंड इफ यू कम एट द राइट पोजीशन एट दैट टाइम वो इतना फास्ट नहीं है मेरे हिसाब से एंड आई डोंट अरे थिंक इट्स ओके शूटिंग यार, साका का गोल वैसा चला गया. It's okay. That should be fine. We are playing good only. It's not like that. Let's just I still, show more pressure. Let's not give another goal. Let's just be at front. Okay. Let's have possession of the ball and create spaces. I गुड still सेव think we गुड सेव रैमस्डेल mid and attack. We have one player thin. Like if Casemiro is injured, we don't have a CDM who can do a job. Attacking wise, we don't have a proper number 9 if Martial is injured. You यार अब अच्छा गेम हुआ है यूनाइटेड भी अटैक बनाने शुरू कर दिया है
फिर से I think that goal earlier on has been like a very good thing because up United thoda, they would open up more. Oh, Southgate done. यूनाइटेड वुड ओपन मोर प्लस आई थिंक किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा. वी नीड अ मोमेंट ऑफ मैजिक क्योंकि ये आर्सेनल का डेन है एंड दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट द लीड. Exactly. I think ना अगर हम लोग 70 minutes से before score करें ना we can and score करने के बाद after second goal if we manage to keep that tempo up ना we can stun Arsenal a bit. इट्स अ कॉर्नर. पता है मैं रेफरेंस नहीं दूंगा बट थोड़ा सा मेरे को वेगोस मर्टेसैकर ऑफ अटैक लग रहा है. इतना स्लो है बंदा. बहुत यार. I mean Turkish league में था so what do you expect मतलब वो देखा किसी ने गोल्ड ब्रिज का क्लिप में घोस्ट. व्हाट काइंड ऑफ नेम इज दैट? यू बिलोंग ऑन हैरी पॉटर फिल्म. हाँ देखा है यार. मैं बहुत पीछे हूँ भाई. This fucking Hotstar is too pissing off. Golazzo, Licha. This is the funniest goal I've seen this season. This is the funniest goal I have seen this season. Lisandro's first goal है ना ये? भाई and like what a moment भाई. मतलब against Arsenal, a top team. Like if you guys look at this carefully, this is one of the funniest goals that you will see in the league. Yes. Exactly. Yes. Just see. Oh, Saliba Licha's almost cleared fucking it. magic. Licha's He fucking just magic. dolphined the ball. He dolphined the ball into the net. Bhai, what a goal, bhai. What a goal. Bhai. What a goal, bhai. Butcher. And the best part is that Arsenal player died trying. Saliba था ना शायद? नहीं, Gabriel था. अरे भाई रैमसेल की मिस्टेक थी. भाई लिसांड्रो सेलिब्रेशन देखना, जाके कूद गया. यार इंजर्ड. रैमसेल की असिस्ट है भाई. भाई रैम्बो लग रहा है भाई लिसांड्रो मार्टिनेज. उसकी आंख में भी सूजन आ रखी है भाई. हाँ. कम ऑन यार, अब तो ये गेम जीतनी पड़ेगी भाई. अब तो ये गेम जीतनी है. लिसांड्रोस भी लाइक मेरी आवाज आ रही है? कुशाग्र भाई, हाँ भाई ओवरऑल पे तो नहीं सोच रहे? क्या भाई? Sorry, I was late. अगर अभी As ओले always. होता like तू क्या कह रहा था ओजस? मैं कह रहा कि 4-all तो नहीं सोच रहे लोग. 3-all तो होना है भाई. उसके बाद देखो. अभिजीत भाई आपकी आवाज नहीं आ रही यार बहुत देर से. आप पता नहीं हो नहीं हो. अभिजीत भाई खो थोड़ा चुके हैं. बैकहम भी आ रखा है. बैकहम के साथ कौन है? This is Martinez's first goal for United, no? यार भाई Yes. अभिजीत, did you look फर्स्ट how है कि he सेकंड है? आई थिंक एक मारा है इसने यार पहले. नहीं पहला है. पहला ही गोल है इतने. हाँ सॉरी. यूरोपा में नहीं मारा था आई थिंक. नो. देखना पड़ेगा. स्टार्ट चेक करना पड़ेगा. स्टार्ट चेक. Oh ho. Now Lisa- United looks charged, अभी आएगा मजा. We'll play लिसांड्रोस भी लाइक व्हाट कलर इज योर वर्ल्ड कप मेडल? fire. Harry Maguire will be like that should have been me. The presence of lodging it above the players, that presence you have, instead of bulleting the header, you are just trying to keep it above the players in the defense. That is experience. These things you can't buy. These things you just cannot buy. Honestly speaking, if I was a United fan, I wouldn't be roaming around in London tonight. I may get chucked in River Thames by angry Arsenal fans. अगर हम लोग ये गेम जीतते हैं तो it's got that sort of This game is going to be loud. I need to hear Peter Drury's commentary, guys. I'm so sorry. अरे अब कर लो वॉल्यूम थोड़े से. आवाज में कॉपीराइट नहीं आएगा. He's frowning again, Arteta. भाई he's become भाई मतलब पेप ग्वार्डियोला का लिटरली सब कुछ ही ले रहा है भाई. बस गंजा हो बस he just needs to be bald भाई.
Yeah, this game is calling for a Garnacho winner. I'm sure Garnacho winner आएगा. It is destillated for Garnacho's winner. This game is calling for a हाँ. Harry Maguire header, The bhai, I'm telling you. audacity of Tomiyasu to do that against Rashford. The audacity. यार मैं वेट कर रहा हूँ. सैंचो भी आएगा भाई अभी तो इस टीम Oh में. fuck, भाई ये वेगोर्स्ट कितना बेकार प्लेयर है यार. अबे ये मतलब, क्या किया? oh, you also watching on thing Hotstar? सबके पास हॉटस्टार है एक्सेप्ट सक्षम और अभिशार भाई तो यूएस में. नहीं, मैं टीवी पे आ गया क्योंकि मेरे से सहन नहीं हो रहा था सक्षम की सेलिब्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट्स. हाँ सेम भाई, मतलब सेम भाई, मतलब I'm like भाई मैं literally सक्षम तो चला गया लेकिन तो अब कोई स्पॉइल नहीं कर रहा. मैं ही कर सकता हूँ स्पॉइलर. Abhijit bhai is talking to his girlfriend along with watching the match. He's gone. अच्छा है अभिजीत भाई. Kushagra, this match was worthy for a screening, you know. हाँ यार बट कोई नहीं आगे वाले सारे करेंगे. ये थोड़ा लेट Circumstances था call यार. for it. यार circumstances Oi, call. oi, whatever you say, you have to do a screening, man. अगर screening भी नहीं कर रहा तो साथ में हम लोग देखते हैं मैच. Finals, Carabao Cup. फाइनल से पहुंचे तो दे भाई. अभी हम सेमीज में हैं. पहले ही फाइनल पहुंचा दे. मैं वही सोच रहा. Have I missed something? हम फाइनल में अबे ये वैभव अभी लास्ट स्क्रीनिंग पे भी मिला था तो कह रहा था कि फाइनल्स ही करना. अभी मैंने बोला फाइनल से पहुंचने तो दे भाई पहले. Bro, you need to have that confidence भाई. Nottingham Forest के साथ है यार, मतलब 2 legs हैं भाई. 2 legs हैं. टीम को एस्टिमेट करना ही नहीं भाई. मेरे को अभी भी याद है जब हमने लास्ट टाइम कैराबाओ जीता था. साउथहैम्पटन वर ऑन द पीक. बच गए हम फाइनल में. एक गोल डिसला हो गया था तब वीएआर नहीं था. वो क्या नाम था उसकी स्ट्राइकर का साउथहैम्पटन का उस टाइम. वो इटालियन स्ट्राइकर जो इटली से आया था. नहीं याद है. ज़्लाटन ने जिताया था हमें फाइनल. Lingard भी ना. Did Lingard score in that game? I don't तुम remember. लोगों ने वो देखा लिंगार्ड का अभी जो 1.5 घंटे का वो आया है भाई पॉडकास्ट. काफी अच्छा है देखना. I just want to hear the summary of it. I will see it someday. Just the summary of it. मतलब देखा मैंने भी नहीं है बट मैंने सुना है काफी अच्छा है. भाई see, I think ना Jesse Lingard has been thinking कि you know Jesse Lingard is basically thinking, you know, he's been this United great, or he's been this greatest talent prodigy, and United didn't give him a fair run. Like, to be very blunt and honest, he was bang average according to me. He had his moments, but he was nowhere. He had his moments because he was in United. हाँ वही. आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ कि he had his moment because he was in United. If he would have grinded out, अब Pereira भी तो कर रहा है ना grind out. He is making a name for himself. Yeah. Herrera, I never doubted ethics of Herrera. No, Pereira also अभिषेक भाई. Oh, Andreas Pereira की बात कर रहा हूँ. हाँ, yes. वो तो Fulham में ना अभी. He is making a name of him. Of himself. Fulham is doing good. Top 10 में शायद Fulham. हाँ 7th 8th में. 6th है. He has captained them. When you know Ream is not available, he has captained them as well. Bhai, that was close. I mean, Arsenal is getting frustrated, I think. धीरे धीरे. That frustration is creeping in on Arsenal. वही है वैभव भाई. You were talking that only. उनका एनर्जी अगर एक बार खत्म हो गया ना तो they are desperate and they do errors and we the fact that Martin Odegaard इतने close आके blast कर रहा है ना, I can feel that frustration. Blast नहीं कर रहा. Odegaard का deflection हो गया. Odegaard is too good for. मुझे इतना गुस्सा आता है ना that Arsenal have Odegaard. He's just too good. He's बहुत अच्छा है. शुक्र है भी इन्होंने Mudryk नहीं लिया. I thought why would Real Madrid sell him, because like Toni Kroos and all, they are in the decline. No, Madrid are after Super League also. They were in financial crisis because they were developing the stadium, and they have huge wage bill structure also. So ठीक है. अब धीरे धीरे they had to sell the players. Why they are not buying players? Why they are investing? Just they had money for Mbappe. They were loaning that money from the fundraisers. They bid 180 on Mbappe, and the bid got rejected.
I mean, just imagine if it was in Madrid midfield would have been, Odegaard, Chouamini, Camavinga. No, it would have been Odegaard, Valverde, and I think Casemiro would not have Valverde left. and Casemiro would not have left because he had to lead this young midfield. We have to remember, guys, Casemiro only left because Cruz and Modric are still there. If Cruz and Modric were out of Madrid, Casemiro would never have been allowed to leave. Great. Oh, fuck. That was horrendous. This game is, I won't say reminding me of the Roy Keane days, but, it's got that flair. Like, I can see both the teams wanting it. Yeah, it surely has something in it that has to spark. That will spark. I'm seeing a red card and a controversial goal. But If with Weghorst around, they are actually being marking him, his presence, and trying to negate, and that requires to yes, Fred is on. Fred wouldn't- will come on for Eriksen, I guess. Fred is coming on for Eriksen. नहीं ये भी हो सकता है ना मतलब he can be also for I think कौन वेगोस नहीं वेगोस भी हो सकता है. So our title charge depends, after so much talk, depends upon McFred. भाई क्या मतलब दुनिया का यही है मतलब क्या वसूल है मतलब उसूल है देखो कि मकफ्रेड इज द अभी जो बोल रहा है अभिषार भाई डेफिनेटली जिसके लिए मैं मतलब क्या लास्ट ईयर इतने मतलब गालियां सुनी है उनके मतलब उनके लिए कि भाई मकफ्रेड है ऐसा है. See, I think this year I don't mind McFred because I know they're not the first choice. They'll never be first choice under Casemiro and Eriksen. You know. मेरे को तो आज इतना बड़ा void दिखा आर्सेनल में. If Casemiro would have been, I don't think Arsenal was scoring 2. Exactly. तभी तो वो पियर्स मॉर्गन भी चुप है एकदम. वो भी जानता है यूनाइटेड फाड़ देगा उन्हें. Not for Piers Morgan. Yeah, Piers Morgan is relevant. That is not something. But yeah, with Casemiro, what is his absence is we are not making our defense to midfield positioning and midfield into attacks. वो थोड़ा सा issue हो रहा है that we are making, but it's not onto that level. Casemiro can make your midfield play into attack, proper attack, and your defense. Oh, just don't give me expressions. sorry. I just नहीं. Everyone is more than not everyone is looking at Oja's expression. नहीं ऐसा नहीं है गोल मारे तो मारो नहीं तो वो नहीं. Anthony is getting replaced for Fred. I think it's a complete midfield reset. Diamond. We are going for diamond then in that case. Bruno shifting to right, I guess. Oh. अभिषार भाई अब आपका भी आ गया एक्सप्रेशन. That was close. भाई आई थिंक एंटनी की जगह इनको भाई एरिक्सन को निकालना चाहिए क्योंकि आप देखोगे साका के दोनों शॉट्स में एरिक्सन था उसके साथ. पहला तो गोल हो गया, ये वाला तो गोल पोस्ट लगा. जाना चाहिए था. बिल्कुल मैं एग्री करता हूं. एरिक्सन वो बिल्कुल नहीं रोक पा रहा है साका को. भाई आई थिंक टेनाग इज स्टिल वेटिंग कि भाई एरिक्सन वो मोमेंट ऑफ मैजिक पास दे देगा. नहीं यार उसके लिए ब्रूनो है ना. अब आप दो प्लेयर ऐसे थोड़ी रख सकते हो. फ्रेड को लाया साका के लिए गया शायद. हाय बिसाका. मेरे को तो लगता है फ्रेड आया ही इसलिए साका के लिए आया. Yes. Wow. And that will leave Eriksen as well. Eriksen को भी वो थोड़ा सा डिफेंसिव ड्यूटी से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा. कैसे somebody scores that McTominay वाला गोल जो उसने मारा था इसके अगेंस्ट एडिसन के अगेंस्ट डर्बी में, ऐसा कोई मार देना. I loved that goal. City was trying to get the draw and they ended up giving another goal. I don't think so कोई वैसा गोल आएगा, बट मुझे गोल का स्निफ हो रहा है अगले 5 मिनट में. वैसा गोल तो आ गया ना जो इसने मारा.
रैशफोर्ड ने मारा वो वैसा ही तो गोल था. That was a moment of magic. सही में that was a moment of magic. मुझे यार तो लीग का गोल का एग्जीक्यूशन इतना इतना ना बढ़िया ना लगा. ना Okay, here's an interesting tweet by Mark Goldbridge. मतलब he writes 2 games and 2 worldies against United. साका के ना साका के नहीं, and पिछले क्रिस्टल पैलेस वाला भी तो वर्ल्डी ही था. ऑलिस क्या नाम है उस प्लेयर का? ऑलसी नहीं, वो ईस्ट नहीं है. वो he's East Mamba. He's African player. Some ओली से है ना. नहीं, Olise is he's not. He didn't hit that free kick. East Mamba. What? फ्री किक तो ये अभिषेक भाई ओली से नहीं तो मारा था. Olise ने मारा था क्या? हाँ वो कंफ्यूज हो गए विशाल भाई. हाँ क्या? शुलुप नहीं भाई, शुलुप आप बोल रहे शुलुप ना. नहीं, स्लप नहीं बोल रहा हूँ मैं. प्लेयर बोल रहे हैं वो. हाँ यार गर्नाचो ले आओ भाई. गर्नाचो क्यों नहीं ला रहे हैं? एंटनी कुछ नहीं कर रहा है. एंटनी तो गया सॉरी, बट एरिक्सन की जगह ला सकते हो. नहीं, वेगोस की जगह लाओ भाई. वेगोस की जगह लाओ. वेगोस, हाँ एग्जैक्टली. वेगोस की जगह लाओ. वेगोस को हटाओ. यार वेगोस क्या करता है ना, वो दूसरों के लिए स्पेस भी तो बनाता है. जैसे Chris Richards क्रिस्टल was the पैलेस player. में उसने किया था ना. Chris Richards was the player, bro. No, Chris But Richards actually- नहीं है. Oh, This is a game now Anthony should be playing now. You know, it would be a brilliant experience for him. For एंटनी future. मार्शियल. No, sorry, not Anthony. What I'm saying, Garnacho. Confusion. हाँ Hey, Garnacho will just finish Tommy. oh, as well. Elise has hit it. Sorry. Yeah, you guys are right. Garnacho will completely finish Arsenal's right side of defense if he comes on for Weghorst. नहीं, ये वेगोस मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है भाई. ये देख. अरे उसने हर काउंटर करा है, हमारा हर काउंटर स्लो करा है उसने. हाँ यही बात है. He is not meant for counter attacks. Weghorst is not meant for counter attacks. टारगेट मैंने वो टारगेट लो ब्लॉक के जो लो ब्लॉक होते हैं ना तब He was very good. pick up in Carabao Cup games, right? At least we are not having any striker, so in that case he is good now. He's against a team that is completely defending against us. He's a very good aerial presence. ट्रोसार्ड को कर रहे हैं वार्म अप, और हमारे में कौन कर रहा है? मेरे को पेलेस्ट्री दिखा है क्या? Facundo Pellistri, nice option. भाई इतना एम्बिग्यूटी नहीं क्रिएट करना है भाई मिडफील्ड में. इतना क्यों चाहिए हमको? नहीं, Maino will come for Eriksen ना. Eriksen needs to be substituted. He is becoming a liability right now in this game. नहीं ओजस भाई उसकी जगह नहीं, मैं एरिक्सन की जगह मुझे लगता है कि वेगोस्ट को ही करना चाहिए. Guys, better another piece of information. Apparently, Ronaldo is looking for a cook. His monthly salary would be 4.5 lakhs. Anyone interested? Yeah, if he needs upset stomach the next morning, I am interested. पर डे है क्या पर मंथ का है? Per day 4.5 lakhs, people will be killing for that job. Per day 4.5 lakhs. भाई गॉर्डन रेमजी खुद चला जाएगा अपने यहाँ कतार. अगर रोनाल्डो को मैगी खानी है तब मैं जा सकता हूँ. मैगी सैंडविचेस बना के दे सकता हूँ. सॉसेज. I think so far so good. This match has lived its expectation. I think very crucial last stage of the game. बहुत अच्छा चल रहा है गेम. भाई I just feel ना अगर एक बार just once, okay, I want Arsenal to lose this game. भाई जो उनके बाद उनकी जो जलेगी ना इसके बाद. बैकफुट पे आएगी. Offside. But then अभी AFTV में भी all those good guys are not there, no? Like वो जो टाई था, अब एक और वो क्या नाम था उसका? DT था. All these guys are not accused of many harassment and assault. DT का तो there was this police team. One guy has It's Maino, Malaysia and Pellistri on the warm up, and I'm not sure why is Malaysia warming up. Maybe for Saka. I think Shaw has done a pretty good job. Eriksen should be the one that has to go,
And Pellistri, yes, he can come for a player. But I thought Garnacho would be warming up. Maybe he's keeping Garnacho for like the FA Cup games, or maybe the This next is three the games. important game of the नहीं यार season. नहीं. Yeah, that will not be like he'd be keeping it. Maybe he. Oi! Sorry. What happened? Oh, I seriously thought we scored. Like the way when Arsenal started moving forward, now I was like, shit, done. एलांगा क्यों भाई क्यों दिख रहा है मुझे? Fuck. एलांगा नहीं है, मेनू है. मेनू क्या नाम नहीं है भाई उसका? एलांगा है भाई एलांगा है. Rashford is just frustrated. Actually, you know what? Both the teams have smelled blood. I can see that. Both the teams are like, just go for it, do and die. Sorry, do or die, or do and die. करो एंड मरो. Actually, do and die ही है game. मतलब करो और मरो भाई. ये अच्छा ब्लॉक था मार्टिनेज का. वो 83 में क्या था डायलॉग? अभी टेना को बोलना चाहिए था. Taste the success once, tongue want more. It's एक मेरे बोर्डिंग स्कूल में मेरे टीचर बोलते थे, winners never quit, quitters never win. You gotta do everything possible. भाई. United has done always the impossible. वो that I have to give it to them. That Martinez didn't want to stop, but he he has blocked one amazing. Just I'm 10-15 seconds back of you. fuck, man, these 10 minutes, God. I think it's a good sign that I feel time is passing very fast, because that means we are very much in the groove. Hey, I for somehow want time to just halt a bit, because I think United is also feeling the pressure of the clock. Wow, what a tackle that was. I mean, that season when we were absolutely, when we were a shit show, when Ronaldo scored 18 goals or something, I used to feel like, bhai, matlab, ye jo 90 minutes sometimes used to turn into 900 minutes. मतलब literally ये हो गया था मेरे साथ. We have had some horrible past, and we deserve a beautiful future. Nice. Scoop tackle. Wow. Ooh, yes. You know what wan-bissaka does in this thing penalty now, it scares shit out of me. But every time it's like very less margin, like bro, this would go 1 inch here and there and we would be gone. But he's good at that. I mean, he's a professional footballer, so matlab, he's there because of that 1 inch here He's and there. a professional slide tackler for me. Proper side tackler. He made to international football. Yeah, honestly speaking, Gareth Southgate को ना full orgasm आ रहा होगा wan-bissaka को ऐसे देखकर. What? What? Sorry. No, don't say. No. It was not. नहीं है भाई Just नहीं है ये ओजस भाई मुझे थोड़ा गूज़बम्प दे रहे हैं. You guys, it's not working for me. नहीं. Just see what De Gea does. ओए, what the hell? भाई इसको अच्छे से सुना देते अगर ये कुछ nice. Arsenal, did they win against City or did they draw in the league? They have to still They play are both yet games. to play 2 games. मैच ही नहीं हुआ है. Oi. They are putting relentless pressure, yaar, Arsenal. Avishar bhai, did you see what De Gea did? Yeah, that was so terrible. He was just for sake of doing he did that, I think. कि भाई सब बोलते हैं मैं नहीं कर पा. I'm dropping, यार. Bruno क्या हो गया? Join back in another 10 minutes, okay? Yes, Avishar bhai.
No one can handle Arsenal versus Manchester United. It's not for the faint-hearted. Mm. Breaking news: Todd Bowley, Chelsea are planning to buy the 15 points deducted from Juventus under Todd Bowley. I saw Nice. this in the morning also. Luke Shaw is booked, guys. For I don't think he deserved. Oh yeah, he deserved. He deserved. I thought ना like मैंने जब हॉटस्टार खोला that इसका description जो था thumbnail में United was wearing that green kit. I was like shit. Even I was of that knowledge. I think ना Ten Hag ने ना सिटी टीम को जला दिया उसको, मतलब उसको बोल दिया कैरिंगटन वालों को कि इसको कभी यहाँ पे दिखाना मत, इस ग्रीन किट को. Water is wet. ये क्या लिखा है इसने? भाई वाटर गोल, वाटर गोल भाई, वाटर गोल. कुछ आगे गोल हुआ ही नहीं. अरे तुम्हारा पीछे चल रहा है भाई, अभी देखना. मैकटॉमने ने मारा है भाई. Stop bluffing it भाई. ओ भाई एंकेटिया सही में मारने वाला था. मैं तो ऐसे ही कह रहा था, एंकेटिया सही में मारने वाला था. पर एक्चुअली मैं भी सेलिब्रेट ओजस भाई आप लास्ट मोमेंट में कुछ मत बोलना भाई. ओजस भाई, विजीत भाई ये सब छोड़ो, ये जे लिंक्स क्यों लिखा हुआ है आपने? हाँ टॉमनी का हैंडबॉल था क्या? मैंने नहीं लिखा. अभिजीत भाई जे लिंक्स क्यों लिखा हुआ है आपने? पता नहीं यार, मुझे तो नहीं लगा. चेंज होता है क्या? देखो मैंने नहीं लिखा ये जे लिंक्स, मुझे ही पता नहीं है. चेंज करना आता है क्या? अरे मैंने लिखा था यार, रहने दो. हाँ वही तो. पोगबा लिख देते तो अच्छा रहता भाई. पॉगबैक होगा भाई. अब भाई पॉगबा नहीं है, पॉगबैक होगा. पिछले 10 साल से. अच्छा से how many of you miss the old AFTV भाई? I तो miss them a lot भाई. I swear इस सीजन में वो कंटेंट. I miss the old full time devils भाई, जब भाई एडम मकोला एकदम लोगों से फैन कैम्प्स करता था. एडम मकोला भाई, इसको कितना हेल्प करते थे चेल्सी फैंस भाई. भाई गुज्जू है वो. हाँ उसके ग्रेट ग्रैंडफादर या कोई भाई गुजरात से हैं, तो ही हैज इंडियन डिसेंट. डिड यू सी गर्नाचो आर्टेटा के पीछे से? गर्नाचो नहीं आ रहा है. नहीं तो आएगा वो. जो आर्सेनल का भाव्स नहीं है, वो भी तो पंजाबी है. कौन? That भाव्स, BHAVVS भाव्स. भावेश या क्या नाम था उसका? He does Sky Sports also. कोई एक है सरदार, मैं जानता हूँ. हाँ वही. ओ भाई यार, लेकिन अभी डहया ने थोड़ी देर पहले क्या किया था भाई? उसको बॉल क्लेम करनी चाहिए थी. हाई क्लेम होता ही नहीं है डहया से. अरे वो हाई क्लेम था ही नहीं. दैट वाज एन इजी क्लेम. हाँ पता नहीं उसने क्या करा भाई, वॉलीबॉल खेल रहा है. Damn, but that save by Dhaya was actually हाँ world ये class. अच्छी सेफ थी, बट टू बी फेयर इट वाज स्ट्रेट एट हिम. बट नहीं, स्टिल तब भी मतलब पे रिफ्लेक्स एक्शन फास्ट तब भी रहता है. हाँ नियर रेंज में भी तब भी इट्स गुड. एंकेटिया बढ़िया प्लेयर है यार. आशीष भाई कह रहे थे एंकेटिया कुछ नहीं करेगा, बट मेरे को तो अच्छा प्लेयर लगता है. अगर आप लोगों ने ऑल और नथिंग देखा है, उसमें भी एंकेटिया का काफी दिखाया था. चल ओ भाई एरिक्सन.
नहीं, पिछले 2 गेम में एनकेटे वाज वेरी स्लॉपी, तो इसीलिए बोल रहे थे, नहीं तो क्यों बोले भाई, उसने तो 10 गोल मारे हैं ना शायद। Come on, come on. रैशफोर्ड एक और मार दे भाई। I just want to put Aaron Ramsdale back to his place, bhai. Too much shithousery he does. Oh fuck. शो यार, फाउल है तो फाउल है, फाउल है, फाउल है। Bissaka is saying all or nothing. मासूमियत सही है, ही ये अच्छी फाउल तो है। लेना था। येलो कैसे नहीं दिया ऐसे? येलो का फाउल था। नीचे मारा है जूते के। अरे बट अटैक ब्रेक किया है ना भाई, स्टार्ट आए थे भाई। I think He got हाँ lucky. यार बच He गया got बिसा। lucky. आई थिंक मिल गया होगा कार्ड, पता नहीं। एनीवे मेरे को नहीं नहीं लगता, मिला। वो इमीडिएट ही निकाला था। यार साका बढ़िया खेला, लेकिन आज मेरा मैन ऑफ द मैच साका ही रहेगा अगर Exactly. ओवरऑल बोलूं तो। भाई आज तो भाई ये क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, जेमी कैरेगर भाई, वो आज रात सोएगा नहीं आफ्टर वाचिंग दैट परफॉर्मेंस। मार्टिनेज का गोल भाई, अगर आज भाई कैसेमीरो होता है यार, हम जीत जाते। एग्जैक्टली कैसेमीरो होता तो भाई। हम डेफिनेटली जीत जाते भाई। मिडफील्ड बैटल्स में ही आज हम थोड़ा सा रह सबको गए हैं पीछे। मैं shit I cannot abuse ना, fuck। नहीं अवॉइड करो भाई कंट्रोल अब्यूज। कंट्रोल हो गए, कंट्रोल। ऐसे कर सकते हो बट अवॉइड ही कर। हाँ ऐसे मतलब वो decent से abuses, you know, like नहीं oh तो ये shit। ना ऑनलाइन मतलब लाइव मेरे को लग कौन कितने लोग देख रहे हैं कुछ आगरा। अभी नहीं भाई यार, चेंज होता रहता है। in future if we become famous or something, कोई हमारा पुराना वीडियो डिगिंग करेगा भाई ना ये वो क्या किया भाई, ये कैसा बैक पास था? पागल हो गया है क्या रैशफोर्ड? इतना भाई हैवी बैक पास दे रहा है डी के अंदर। अभिजीत भाई ने जिंक्स करा दिया यार, अच्छा खासा जीत रहे थे हम। हाँ हाँ, होता है बे, shit भाई पता ये है। मैकटॉमिन प्लेयर है यार, इसको फुटबॉल से बैन करो भाई। fuck हैं shit यार नहीं। अबे यार ऑन This is साइड hard। भाई वीएआर चेक होगा क्या? ऑन इस साइड चीज में करा दो। ऑन This is आई थिंक साइड honestly ऑफसाइड। hard break, man। नहीं लग रहा है। यार अबे यार एनकेटीए क्या वो भी बेटी। भाई, आउट ऑफ एवरीवन आई डिडंट वांट दिस एनकेटीए भाई। देख मैकटोमिनी कैसे फिसला है भाई, ही डिडंट इवन रिसीव द। आई थिंक इट्स ऑफ। ऑफ है यार। ऑफ है जो इधर मतलब डिफेंस के लाइन के ऊपर है ना, वो ऑन है ऑन है ऑन है ऑन है। ऑन अरे है यार भाई। इसने प्ले कर दिया यार, गधे वैन बिसाका ने। नहीं बेवकूफ अबे वैन बिसाका ने ऑन प्ले कर दिया है यार, ऑन है ऑन है। गधा वैन बिसाका। हाँ यार दोनों गोल वैन बिसाका की वजह से हुए हैं। भाई इसको बाहर करो यार wan-bissaka को, ऑनेस्टली भाई मतलब। अच्छा खेला है ऐसे, बट नहीं इसकी भाई रुको रुको पोजीशनिंग रुको कितनी रुको बेकार है रुको यार। रुको 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 भाई एक मिनट, एक मिनट, पोजीशनिंग एक बहुत मिनट। बेकार है इसकी। ऑफ साइड है शायद, ऑफ है शायद। ऑन लग रहा है यार मेरे को। नहीं नहीं ऑन उसका है, ऑन है प्लेयर आ गया ना, यार, प्लेयर आ गोल दे दिया है, गोल दे ऑन दिया। है भाई, ऑन है, गोल है। वैन बिसाका गधे ने ऑन खिला दिया। सही कह रहा है कुछ आगरा। फक ऑफ है भाई, शायद। this is like man, I'm so used to United doing this time and time again, like you know. It just sucks, to be honest with you, especially the last two games where we've like been so close and we've lost. I'm an अबे Arsenal fan, यार
आज नहीं हारना था भाई, ड्रॉ भी ले लेता मैं भाई। अब तो आर्सेनल जीत रही है यार लीग, दे हैव अ गेम इन हैंड एंड दे आर एट 50 पॉइंट्स। 19 गेम खेले हैं उन्होंने अभी बस। Look at the है तो look देख at लो ये रामजेल क्या कर रहा है। motherfucker. I mean, how was the extra time given? अभी garnacho इतना लेट आया ना, 5 मिनट तो हो गए यार, एक्स्ट्रा टाइम में ही गोल पड़ा है, 2 मिनट का तो होना 3 चाहिए मिनट सर दिए वो। हैं बस। नहीं नहीं, वो 2 मिनट और ऐड होंगे ना, एक्स्ट्रा टाइम में ही तो गोल पड़ा है। Go, मारेगा go, कौन go, आना। go. 3-3 की से हुई थी हमारी प्रेडिक्शन, एक और मारना है यूनाइटेड को। अरे नहीं ओजस आई। ने 4-3 बोला था मैं भाई। मान वरान निकाल दिया गर्नाचो के लिए। अबे भाई और He's क्या going कर, all out, भाई. कोई फर्क नहीं पड़ता है. भाई क्या करे, अब कुछ है ही नहीं। इट वाज जस्ट पुअर This मतलब हार्ड। Arteta, यार ये तो मतलब अनलकी है भाई, ये एक प्लेयर की वजह से, wan-bissaka की वजह से। भाई I'm जस्ट just thinking, अगर अभी रॉय कीन होता ना ड्रेसिंग रूम में, wan-bissaka का क्या हाल करता ये. नहीं, मेरे को नहीं लगता wan-bissaka ने, मतलब वो प्लेयर कोई फॉलो कर रहा था ना जो राइट साइड जा रहा था उसके। अरे बट यार तेरे को बैकलाइन की लाइन में रहना है ना। ये भाई 2 गोल उसने खिलवा दिए भाई, मतलब you can't do that in professional football भाई. ये It's such a high फैबियो भी है level. भाई, 3 ही मिनट दे। I mean, you need to be better than that. I mean, honestly speaking, this is this is just a joke, to be very honest with you. Like, see, credit to wan-bissaka, he's been good in previous games, but like, come on, man, this is a game which mattered so much, you know. Thank God इस गेम में मैंने bet नहीं लगा तो. Guys, I'm predicting last minute whistle के बाद एक must fight होने वाली है. I'm just getting that vibes, कि फुल टाइम, last minute whistle. फुल टाइम। Fuck. आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लासिक, व्हाट अ गेम। बैड डे फॉर अस बट व्हाट अ गेम। Fucking hell. I think Ashish bhai won't be returning to the stream. भाई अब एंडी करते हैं स्ट्रीम यार, 3 घंटे की बेइज्जती करा दी हमने। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, shit happens। कोई This नहीं भी is why we needed signings, bhai. We needed some quality players, man. पैसे, Like, नो मनी, नो मनी। bhai, money, bhai, look at, bhai, we're over exceeding our season, bhai. Arsenal is backing Arteta, bhai. Everton तक खरीद रहा है Lampard के लिए. I mean, Nottingham Forest is buying, bhai. मतलब we should. I just don't understand, man. Like, नहीं वैभव भाई, यू कांट प्रोसेस है ये, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ऐसा होता ही रहता है, मतलब वी कांट मतलब ये फीफा तो नहीं है भाई कि भाई जल्द से वी हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर रहे थे वी विल बी टॉप। हम सिर्फ बोल रहे थे कि भाई ये फिफ्थ नहीं, आफ्टर इसमें विंटर विंडो वी वुड बी फोर्थ फिफ्थ पे रहेंगे, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली भाई थर्ड। भाई फुटमॉब की रेटिंग्स आई हैं, उसमें डहेया को लोएस्ट मिला है, मतलब भाई यूनाइटेड प्लेयर्स में 5.4। मुझे तो ब्रूनो को देना है भाई, ब्रूनो को तो 7.5 मिला है Had हाईएस्ट। it not been for that one save, na, De Gea has been poor throughout the game. हाँ, एक और सेव वो बस। सेव भी डायरेक्ट उसके हाथ पे आई थी, उसके हाँ। उसके हाथ पे आई थी डायरेक्ट, इनकेटिया वाली। बैड गेम यार। वेरी टफ डिफीट टू डाइजेस्ट। टफ टफ नहीं बोलेंगे, नहीं, लेकिन ये कि मतलब प्रॉपर टैक्टिक्स बोला है आर्टेटा का, प्रॉपर टैक्टिकली उसने हमको आउटप्ले तो नहीं, ओवरकम किया है। आउटप्ले तो नहीं हुए, बट आई थिंक वी वर जस्ट
but they've put Half relentless pressure यार. they ऐसा हाँ नहीं बोल सकते हम लोग कि we were better side and we lost. We cannot say that. Though we were not outplayed, we cannot में say लक का भी फैक्टर आ जाता है विशाल भाई. आई एम सीइंग द लक. मतलब ये लक है, चैंपियंस को ले जाने वाला ये लक है. बोल सकते हो, यू कैन से दैट. ये डेफिनेटली ये ओपन प्ले ही था, मतलब इट वाज एन ओपन प्ले, बट किसी का भी चांस था. मतलब इफ यूनाइटेड वुड हैव टेकन सम चांसेस, यू नो, क्रिएटेड, Peter Drury देन has वी said वुड that, हैव that सेव्ड. finest of touch by Ketia, the finest of margin, but look at the margin in the table now. That margin was about 11 points. हाँ Guys, हाँ, गेम and इन हैंड. also Arsenal have a game in hand, हाँ. Yeah, that is with City, so that should not impact our position in the table in on bigger picture. नहीं, बट आर्सेनल तो अब लग ही रहा है, जीत ही जाएगी यार. हम तो नहीं रोक पा रहे, मैन सिटी रोक सकती है. मैन सिटी Ooh. विल नॉट एबल टू स्टॉप देम अब. No, that will win. What J-Links bhai has been saying, that it will be decided in April, somewhere around April, when would be going ना, वो उस time पे decide नहीं हो. अभी सर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आर्सेनल और स्पर्स का ये एक मतलब ये नेचर ही रहा है कि दे आर बॉटलर्स, दे बॉटल नहीं, समटाइम्स. आर्सेनल टीम ना, लाइक इसके साथ ना वो मुझे ना वो रिकी पॉन्टिंग वाली टीम की वाइब्स आती है. बट भाई मतलब कि किसी भी सिचुएशन में कहीं से भी लाइक कॉन्फिडेंस इतना है ना इनमें कि कहीं से भी मैच निकाल देंगे. यू नो, लाइक दे जस्ट हैव दैट वाइब. I think we were the one to stop them today, and we have just, not made the best out of it. बहुत average No, we've performance. been dominated the games which we were like, we've dominated the midfields in the games which we got results, and today we did not do anything. आज आपको आज तो पता आपको चल गया है मिडफील्ड कि पता ही नहीं चल रहा था, ब्रूनो के आज अलावा हम्म कोई और खेल भी रहा आज है. आपको कैसेमेरो और मैकटोमिने के बीच में डिफरेंस पता चल गया है. आज आपको पता चल गया है कि 27 साल की उम्र में भी मैकटोमिने की वैल्यू 30 मिलियन क्यों है, और 31 साल की उम्र में भी कैसेमेरो की वैल्यू 90 या 80 क्यों है. This is on the face of it. And you just cannot have such an average performance in such a big match. बहुत average performance थी. Bar Rashford, no one was trying, and Weghorst is so slow at the counter. So slow at the counter. Kushagra bhai is very reactionary, but I guess that is the emotion for every United fan right now. अरे मैंने नहीं भाई ट्विटर से उठाया यार, वहां पे अभी यही नहीं ट्रेंड नहीं हो रहा नहीं है. नहीं डेफिनेट नहीं. ये तो सही है कि मिडफील्ड तो नहीं था, देयर वाज नो मिडफील्ड, मुझे लगा ही नहीं भाई. ब्रूनो और एरिक्सन का मतलब मुझे कोई दिखा ही नहीं भाई, कोई क्रिएटिव पास या फिर कोई भी कुछ भी. एंटोनी तो Eriksen भाई स्लो, धीरे ही है. धीरे, मतलब ये जैसे एरिक्सन को यार मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, वो चलो आज ऑफ था, लेकिन यार वो यूजुअली अच्छा ही खेलता है. बट ये मैकटोमिने वगैरह तो हर गेम में बैंग एवरेज ही करते हैं. अब आप बोलोगे कि मैकटोमिने सीडीएम नहीं है, भाई अब आप सीडीएम नहीं हो, बट आपको उस रोल में ही आपको हम नहीं, खेलने को आप बोल रहे हैं ना. करो ना, आप क्या है तो हो, आप वो वाला रोल करो फिर. जहाँ पे आप आपको खुद खिला से रहे हैं, आपको वो So the रोल को first match आपको United अडेप्ट करना lost, है. after scoring first for भाई this season. इतना आउटप्ले हुआ है This मैकटोमिने is the आज. first time we've lost from a winning position this season. Yeah. Guys, I'm going to take some rest. आई यार थिंक हम भी ये एंड हमारा करते हैं, वो एंड ही हमारा करते ये हैं वाला मुझे. रिकॉर्ड तो नहीं टूटा ना, लीडिंग एट हाफ टाइम. आई थिंक साका वाज बिफोर द हाफ टाइम ना. हाँ वो 1-1 हो गया था, हाँ वो नहीं हुआ था, हाँ, हाफ वो टाइम पे ड्रॉ हो गया था. वो बहुत बट चलो लंबा यार रिकॉर्ड. एंड करते हैं, बहुत हाँ, लंबी स्ट्रीम हो गई, सब लोग ओके. थक गए होंगे. एक सेकंड कोई आया है, मोजो सर आए हैं. Hi guys, Hello, Mujhe sir. How are you? हेलो सर, हेलो how are सर. you? Hi guys, Bad. sorry for the result. मोजो सर, Yeah. व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस लॉस? हाउ डू यू Look, लुक I don't इट? know. मैंने मैच देखा नहीं. I just got an update 2 minutes back. I was caught up in some business meetings, unfortunately. But That was मैंने some बीच के match 10 to मिनट miss. देखे. I didn't want No, to. no. हाँ. मैंने बीच के 10 मिनट देखे थे. I think from the 67th minute to about 77th, 78th minute. And I don't know. मेरा first instant reaction ये था that our legs are going. We're getting tired. And if it was 2-2, then I think Erik Ten Hag should have been wise enough in shutting shop and getting the defense on, and making it difficult for them to play around us. Um, that's all I can say. I think last 15 minutes में हमने कोई substitutes नहीं करे हैं as far as the notifications that I was getting was concerned.
The guy sitting across the table जो मिलने आया था वो irritate हो रहा था, सर आप अपना या तो phone देख लो या let's continue with the meeting. I said shut up. साले तुम मुझसे business करने आए हो, so listen to you may as well tolerate with what I'm doing. So no, that's my you guys watched the match, you would know better. I just watched those think 10 minutes from Garnacho about was six. very late. I think Vegas was out of place for Yeah, the whole game. I think After 70 minutes, it should have been Garnacho. Vegas was doing nothing. Was like doing that. absolutely We So were I, nothing. look, seeing it throughout the time. I just watched it for 7-8 minutes, and we were visibly getting tired. I think Arsenal were building up ahead of steam, and attack after attack and corner after corner was happening. So I was like, Eric Ten Hag, you need to be wise enough here, man. You need to just shut shop, take a point, and be happy, move on. But well, he did what he did. Yeah, Yeah, it was very tough to digest, but I think so. We can take a little bit positives out of this, and only I mean, look, positive is that if this was Arsenal of this year, and if this was Manchester United of last year, we would have probably got hammered 5-0 or 6-0. yeah. So there is improvement, but let's be honest, a loss is a loss. Doesn't matter. No, a loss is a loss, and also, मुझे sir, having said that, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि we were unlucky or something like that. Luck was there, but Arsenal were better side. They did well. I'd not say they thoroughly outplayed us, लेकिन जो margins थे, जो battles थी, midfield battles, जो forward का जो attack था, जो relentless pressure था, so it was good from their end. I mean, No, like, Abhishek I bhai, didn't see the match. मैंने सिर्फ 10 मिनट देखे थे, मैं उसी को comment कर रहा हूँ. Yes, sir. no, Mojo sir and Abhishek bhai, that is what ki Arsenal had a proper rest actually. They have 1 week to play the match. That But is we played on Wednesday, तो मतलब हमारे लिए तो एक फटीग ही था, मतलब ये ऑल वेयर टायर्ड, थोड़े प्लेयर्स तो ये खेल ही रहे थे, तो I mean, डेफिनेटली look, you could say that. मतलब 7 days में third game against a Premier League side of Premier League leaders, and probably ones who are going to give City a run for the title. But I still believe, I don't know. At the 75th, 76th minute, when everybody was getting tired, we're not able to get out of our half. The manager should have been smart enough and said, "Look, यहाँ से point लेके चलते हैं. Enough is enough." yes, proper that substitution. that 2 added point to Arsenal has been spoil sport. Yeah. Had they been on 48, now with 50, 11-point gap is humongous. I'm not saying that for our title charge, but for the thing that we getting into top 4, yeah, now it will be like a See, I huge think burn. I still believe somewhere. I still believe City will beat Arsenal in both the legs, which are still pending. I want them to beat. I think City will turn up. City will turn up for those 2 games proper. I don't think Arsenal are going to put 1 over them or 2 over them. City are going to turn up for those games proper. And once that happens, then the gap between City and Arsenal is basically 2 points. But Mojo sir, I don't see that charisma in that they can challenge for title race. Their players are even blaming that they have no chances for that. But okay, they are playing mind games. We know that, but I don't see City? Yes, City, yes. Yeah, City. I tell you, City just needs to get into one of those grooves, and they will fuck everybody. उनका वो ग्रुप जो है ना, वो एक खटारा गाड़ी की तरह चल रहा है अभी. उसको just proper oiling जिस दिन मिल गई ना. I mean, you recall 3 seasons back when Kevin De Bruyne got injured, and we were like, fine, that's the end of City. They'll not be able to sustain a run. And Gundogan came from nowhere and was scoring literally every second game, or not second, every game. And City just pulled away. So City is not going away. I mean, let's be honest, यार अभी पूरा आधा सीजन पड़ा है, 19 गेम खेलने पड़े हैं. later half of season ना आपका स्क्वाड पता चलता है, आपकी स्टार्टिंग 11 नहीं पता. अभी तो ये देखो कि how will Arsenal, I mean, अपने लिए ज्यादा टेंशन है, आर्सेनल के लिए वो टेंशन भी नहीं है, but once Europa starts, then the fixture congestion, how do Arsenal cope with it? And fixture congestion for Europa is far more difficult than it is for a Champions League side like Man City. We have 11 games that are really the mid-table teams. So we have definitely some winnings.
I mean, just a query. I mean, how did the game pan out? The whole thing. I didn't see the game, so I really don't know. Were we good There were enough? Were we, expectations, ups and downs, but I think a better team won. okay. Yes. Yes. Do you Yes. think United would have beat Arsenal had we had a 7 days rest? Yes. Had we had Casemiro, we would have taken point off from here. I'm No, less No, than The even point. 50% even if say that. even if ETH was, I never blame ETH. He's a brilliant manager. I think he was bit, you know, didn't do substitutions right today. hmm, yes. Should have, when Vegas is not working, he's just a tall Harry Maguire at the front. You have to remove the player like him and bring the spark. You have to bring Garnacho. What is Garnacho doing at injury time? You need Garnacho before that. Yeah, yeah. I take your point. Yeah. No, Moses or anyone that in the game Vegas didn't link up with the wingers and even to the midfield. Midfield was totally absent. And that I should be, didn't see. so that should be either way. या तो आप attack करने जाओ. Okay, that we want to attack, we want to win the game. Or you just, what you are saying, कि you put your defenders around and you make that freeze. You stop leaking that wall. कि हाँ वो wall का जो Right. leakage, जो barrage of shots है, जो barrage of corners है, आप उसको stop कर रहे हो. See it You again. It again exposes that unfortunate thing, McFred, and the midfield doesn't work. So yeah, ठीक है यार. I mean, look, we've been on a good run. This is somewhere down the line. This fixture I still blame the Law of fixture congestion. I averages. believe Law of that is. averages. Yeah, I mean, in a way, law of averages, fixture congestion, and I believe if Casemiro was available, the result would have been a little different. And if we also had a 7 days rest, I think we would have beaten Arsenal. Rest and everything. I think somewhere in the game we got so predictable that Arsenal were ready for everything. They were just ready for everything. Like Rashford is going to make the run. Ramsdale was already he was over 75% of his D. He was just standing there. He was here for Rashford to make the run. You cannot be so So monotonous against a team like. I totally agree, but then that comes out of the fact that you don't have anybody in the midfield creating anything for you. exactly. McFred is not going to create shit, and let's be honest, Eriksen is not going to be able to play that CDM or that holding midfielder thing which Casemiro can, and Bruno is given that free license to wander everywhere. So you are basically what skating on thin ice literally, and that's what we got caught out in the end. And I still believe third game in 7 days, Casemiro out at 2-2 at about 75th or 76th minute. When I stopped watching it, I was like praying to God, Erik ten Hag, just bring on your defenders and just see through. Two mistakes this week: not taking out Casemiro at the right time on the midweek game, and I think not taking out Vegas at the right time today. I am not saying that we would. both just before you move, both of it has been sending Fred at wrong time, sending Fred at wrong time. It's been either way. First game, the timing of sending Fred was not correct, and this time sending Fred was not correct. Even That also comes from the fact कि squad depth ही नहीं है, quality नहीं है depth में. Arsenal totally outplayed in tactics for us. I don't think they outplayed. I don't think they would have outplayed if it was 2-2 till about 87th, 88th minute or whatever. But मेरा वही कहना है यार से look, you guys have been on it for about almost 3.5 hours. Shit. But my only submission is this, जो मैं कहता आ रहा हूँ. Third game in 7 days without Casemiro. I think with Casemiro we could have got a point at best. But if with Casemiro we had 7 days rest, I think we would have beaten Arsenal. And Arsenal, for whatever reason, they'll be hyped. Unke fans will be like, the title is ours. This that and the other. Table toppers की कोई vibe तो नहीं दे रहा था Arsenal. They just won on their merit. They played well. I totally understand. But what Arsenal should realize is that look, you're playing a team that is tired. That's playing the third game and a very high-profile game in 7 days. You come to Old Trafford having played 2 games in 5 days, and we'll tell you what it feels like. It's not good on players. It's never right physically and emotionally. So
my take is for Arsenal to jump around thinking that they have captured a big game. Yes, they have, but then um, I don't see. I'll be honest enough. I don't see much of a difference between us and Arsenal as far as the first 11 or 12 players are concerned. And even I consider us to be a better team than Arsenal on paper. Arsenal are just doing the right things at the right moment, Right. and that will be the difference between whether they win the title or they lose it to City. uh Still half the season to go, but really think that Arsenal just at the right moment, they just clutch, if I should term it like that, they just clutch at the right moment. And Hmm. they are pretty strong mentally right now. They're just too strong. They're believing for 90 minutes. Even when Rashford scored that wonder goal, they believed that we are going to somehow reverse this result, we are going to somehow get back at the top. That is the mentality that they are having right now, and it's very tough for an opposition to just bob it down. Yeah, I mean, let's see. Let's see. Um, I guess the Just next one few question. fixtures are a little One question straightforward. So for Interesting season is going to come. Interesting one. Yeah, it's good, still it's good to be in relevance, जैसे पिछले सीजन में था अपने को कुछ वो ही नहीं था पिछले like for quite some time. Now at least we are in relevance, we are in talk, like I people want to have totally agree. Totally agree. That's what I said. I did- Arsenal of this year versus United of last year, we would have got walloped, absolutely hammered. I have one question for everyone. That are we depending on individual brilliance of Rashford or Casemiro or For the Varane time or being, you yes. say For the time being, yes. No, I'd still not say that for now we are onto this thing, individual brilliance. Collectively also we are playing good, but yeah, we need some leaking patches. थोड़े से हैं अपने पास gaps जो अपने को fill करने पड़ेंगे. मुझे sir, we can have whole night debate onto this on De Gea, but yeah, I still not go with De Gea being my goalkeeper for next season me- title chat. मेरे को लगता है the attack will start clicking once Anthony just sorts his mess out. Yes. एंटनी का एक No, ऐसा even Sancho challenging his place. Sancho भी अगर डॉर्टमंड वाला Uh, Sancho अपने रहेगा राइट विंग पे, then also we are doing good. We need just couple of positions to be filled. And obviously Casemiro's position, नहीं, backup of Casemiro, who can at least do the job what he's been doing. स्ट्राइकर तो इमीडिएट चाहिए. वो नहीं आएगा, वो स्ट्राइकर समर में ही आएगा. जो भी न्यू ओनर आएगा वही लेके आएगा. अब तो जो आ गया वेगॉस्ट, और कोई नहीं आ रहा. समर में स्ट्राइकर और मिडफील्ड तो पक्का चाहिए. बाकी आई थिंक सो No, काफी I'll लंबा tell ही you सीजन. right now. I mean, I'm 100% sure that Eric Ten Hag is going to get a decent enough backup goalkeeper who can actually challenge De Gea. Secondly, he's going to sign 2 centre backs. He's going to sign about 2 or 3 midfielders, and he's going to sign at least 1 striker, probably 2 strikers. We will get about 6 players in the summer, depending if If we we get get new the owners. new, if we Six get the six new player as owners, in whole summer में आप बोल रहे हैं या this window as well as in summer No, and no. next? This window, I don't think they're going to do anything now. हो गया जो होना था. Okay. This Mujhe sir, window is who do done. you think will take over? Who अरे do वो you तो see? अभी भाई, different topic. I'll be honest enough in saying जो हमारे there are some snippets of messages that keep floating around in some of the other WhatsApp groups. नहीं यार, we don't want anybody from Middle East. They have this human rights record. I'm like, you know what? Stuff that human rights record up your backside, man. I'm here to play a game of football. I love my football club. The likes of Newcastle, the likes of City, even the likes of Chelsea when Roman Abramovich was owning them, didn't give a damn about human rights and which country they came from, how they made their billions. You tell me which billionaire has been 100% ethical in this planet here. मुझे सीधी सी ये बात बता दो. No, और no मैं one, मैं sir. मैं ठोक बजा के कह रहा हूँ, मैं साला छोटा सा लखपति होऊंगा. आई एम नॉट 100% bloody ethical यार. मुझे पैसे कमाने हैं भाई. So Survival is a I'm hoping that we get a billionaire, because that unfortunately is the reality to be amongst the top echelon of world football right now. Otherwise, we are where we are, 4th, 5th, 6th, 7th. यही चलता रहेगा. Arsenal, they've spent like around 450 million in last 2-3 windows to get over here. It's not like Yeah. Arsenal they just woke up like this. They have been this No, I mean, squad
अगर inbuilt. अगर हमारे यहाँ फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर होता तो एंटनी के लिए कोई साला 90 मिलियन नहीं देता, कैसेमेरो के लिए कोई 60 मिलियन नहीं देता, और मार्टिनेज भी कम से कम 10 मिलियन सस्ता आता। अगर आप वो टोटलिटी में 60-65 मिलियन बचा लेते, आप दो मिडफील्डर ढंग के एरिक टेन हैग की क्वालिटी के 30-35-40 मिलियन के साइन कर लेते। लेकिन हमने करा क्या? ओ साला बीच में पता नहीं वो कौन कौन से प्लेयर इटली से जुड़ने लगे हमारे साथ, अर्नाटोविच एंड पता नहीं गॉड नोस हू ऑल, Rabiot. Rabiot. Yeah, thanks to his greedy mother, man. Definitely there. Definitely. Chalo, guys. You guys have Let's had a very see. long day. Let's see. Unfortunately, we have lost, but I'm sure the next few fixtures are good enough for the team to be rested and get firing all over again. So yeah, take care. We're gonna see how abhi April maybe we'll get again into conversation. So for Yes, now, Abhishek bhai, definitely. I know on that stance कि April तक कोई भी it's nobody's everyone's games. It's Arsenal, it's City or even True. United or so even Musa, when Newcastle are you also. getting time? आपको कभी time मिल रहा है? अभी you are getting some time, maybe in couple of weeks or something like that. You've been Who? quite busy lately. आपके लिए ही मैं पूछ रहा था. Me? Look, the business that I'm here for is a very seasonal business. Okay. So I'm going to be occupied up till about June or July, but then I do have time. Yes, I'll definitely take time out for these activities that we do for a club. We'd love to have hear from you. Yeah, that's what. No, I'll make it a point. I'll try and be more regular. Yes. Thank you. Now you can leave. I just wanted to make you. Yeah, heard we this. will be ending. Yeah, we will be ending the stream now. absolutely. I think just a bad day at the office. Better team won. Everyone has accepted that, and I would request our backroom Kushagra bhai to just end it. And it was lovely to have Mojo sir for a few minutes. Thank you, Cheers, sir. guys. Thank you, Take care. bhai. Thank you, Take care. Abhishek bhai. And thank you, Ashish bhai. And I don't remember. Thank you, Vaibhav. Prabhu Thank you, bhai, Saksham. Thank you, everyone, whoever Sandeep bhai. and thank you all the audience for the We live. are Glory, yes. glory. We'll rise again. Don't worry. Yes.